Okay. Now, Hello, everyone. We are live with BPCL Season 2, another game. Soon we'll be headed towards quarterfinals, but yeah, let's see how this day goes. We have two good teams lined up today, Phantom Division and Warpath. yes, And yep, we absolutely. are on So the draft we team are stage. Do you back. see a Snapfire band? Yes, and we are back with day two. BPCL League Season 2, Day 2 group stage. Today we will be wrapping up the group stage and we will be moving on to the last chance qualifiers at the end of the day. So we will be having four teams getting eliminated in the first week this time. So a little change in the format of the tournament, four groups, but matches and the thrill is still the same. And we are straight into the draft time. We have Phantom Division versus Warpath, game one of day two, and Phantom Division with Sapphire and Lion Ban. Snapfire I is a mean, hero yeah, which is getting banned a lot this time. People are not letting this hero go through. I mean, he has been a real menace, I believe. You true, true, casted a true. couple of games yesterday, right? You casted a couple of games yesterday. What was your take on that? I mean, Snapfire just has too much damage. Like I feel like you have that shard, you have that Kaya, and you can just run down enemies like crazy. Like you just need someone to tank, and you just use your spells from behind. I mean, like the damage is insane, and especially if you're into late game, you think that he's just a spell damage hero, but no, he's not. Like he will dish out a lot of damage, like Mm-hmm. late game as well with the refresher, ulti, level 25 talent. I mean, it's a completely dominant hero. On the other hand, they banned Lion as well. I mean, I think like those are like two good in meta hero bans because Lion also can convert into a core or like even though he's playing support, like those stack damage just gives him a lot of advantage into Absolutely. And I think there's a Phoenix ban certain along with the places. Kotl ban. Phoenix is also banned from the Warpath side. Phoenix has been a really great support, to be honest, because he brings a lot of team fight and a lot of, spells and really changes the team fights with his ult. So a ban for Phoenix and then Spirit Breaker. Who can let Spirit Breaker go through the first phase? No one wants to play against this hero really disrupts the team fights, jumps in, runs in, and just does whatever he wants. So quite a Yep. menace. A Rubik pick. I mean, I think they should just hold on to like Rubik picks. I feel like it's too early now. It gives the other side the opportunity to, like not pick heroes where spellcasters or core ults. But okay, they didn't follow through that. They just picked Jakiro on a Rubik pick. They gave them, That's let's crazy. go for the spellcaster. We don't care. They go with I it. swear. I See, mean, that's the comfort sometimes people, players look for. They don't see that okay, there's a Rubik. I can't play this hero because he'll steal such spells and whatnot. But sometimes you have to go with your comfort pick. And I think Warpath right now, who is not in a very good state in terms of the group stage, if I tell you, I'll just share that with you. okay. That I think Warpath right now is I mean, I don't know. Sorry to say, but they're leading their group. They're leading by two. I mean, they've won their both the matches. This is the third match, and if they win this one, they will lead, they will top the group in the group stage. So, and Phantom Division on the other side is drawn 1-1. They are currently placed third in their group. So, I think yes, Warpath can take these risks because they are already. I mean, they almost have their ticket done for to top this group. But in case they lose to Phantom Division this match, they might have to slip down because when it comes to the head-to-head matchup, Phantom Division will move up. So that's also there. But again, comfort pick. I I think see. what is the that they are going for now, a draw ban from Warpath, and along with that, Phantom Division went with the Lifestealer and Sladar ban. Ooh, techies! I think this is the first techies of the tournament that we are seeing today. And to tell you, this is a pick for Mr. 4 5. He loves playing this hero. So I think this is his support techies, and he is very good on this hero. So
I don't know if they researched it or not, but giving away the techies to this guy was not the right choice, I feel. I agree, but on the other hand, if you see I still see a Rubik standing there. Yeah, I mean, it's because absolutely. he's just enjoying over there, like, okay, another hero for spellcasting. Let's see what else Daya would give them. But yeah, Absolutely. No, I totally agreed that Rubik has a very good. I mean, he might be happy that he have two support heroes against which he can pick a lot, pick a lot of spells. So Rubik might be really happy right now. And here comes the saving support Oracle. Now, with Oracle coming into this picture, what do you think? Which support duo is more dominating in the laning phase in the early game? Is it Phantom Division or Warpath? I mean, if you ask me, I would say like lane which Oracle goes in, like for example, he's going against Jakiro, which is a good laning this thing. I think it's good for Phantom. And on the other hand, Rubik I feel Rubik still Mm-hmm. doesn't do much into the lane until he's level at least 5 with that second spell damage or level Mm-hmm. 6 with steal spells. But I Yeah. think I'll give it to the left side, Phantom. Yeah, see, and again, they picked up the Night Stalker. Night Stalker really kills these two supports badly because techies cannot hide when Night Stalker is there with his ult, and Jakiro and techies both are very squishy. So for Night Stalker, there will be food if Night Stalker has a very good lane, and the answer comes with the Dawnbreaker, and Dawnbreaker has been the pick of this tournament. She has been getting picked right, left, and center. Every team, is favoring Dawnbreaker as their offlaner because Dawnbreaker, what I feel, brings a lot of heal, and Warpath is going for only heal. They have Necro and Dawnbreaker, so much heal for them now, coming into this Uh, draft. So, I mean, no matter how much you say like the fourth part picks, I'm just looking at what Rubik has to steal. yeah. Like it's crazy. Like look at that four heroes over there, like Hammer, Necrowild, Techies, Mines, Jakiro's second spell. Mhm. Yeah, It's I get just that. like a Yes, lot of Rubik has a stuff lot of there. spells to steal, but again, what I feel is that Rubik has to play out of his mind. He has to be Yep, 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 very yep. on point. Safe. And he has to wait for the right spell to be casted so he can steal it. Correct. But again, they have a good mid laner now. They have Lena. I think it's a pretty hard game for Necro, Oh, and if you we ask have me. with us Shanks joining with us in the casting crew for this match. Welcome to the stream and to the match, Mr. Shanks. I guess he was here, then he left, but we will continue, Demon. That's totally fine. Yep. I Lena think pick. they need to do Now, something for the Lena. yeah, Lena has also been a very strong pick in uh, this patch, to be honest, because I'm when I was following the EWC World Cup, I've been seeing that Lena is a hero who's getting banned in the first phase, and I think for once Falcons let it through during their quarterfinal match against Vici Gaming, and Vici Gaming thrashed them 2-0. So leaving this Lena and letting Phantom Division pick it up, it becomes really difficult for Necro to lane if Necro is going mid, right? It won't be an easy lane for Yep. Necro against Lena, but let's see how Warpath, flexes Necro. Either it's going safe lane or the mid lane, and the Viper ban from the Phantom division. So they don't want to deal with this. They don't want to play against a Viper. They still think that Necro might be carry, and Viper can go mid. So they don't want Lena to have any kind of problems in the mid lane. So I feel that's a good ban. Puck and Viper ban as the last bans. I don't feel that's bad. And then Mirta coming in for Warpath because they know Mirta really kills through the Necro if she gets good farm. I mean, I was just thinking that they should just pick Murtha and they just banned it now. Yeah. Warpath just banned Murtha. But it would have been the best pick for Phantom, I feel. It was just like it'll give them that cherry on top
with their draft. Hmm. But still, they do have a good draft. I mean, their heroes negate the opposite lane heroes. Let's see what Warpath has in their bucket to pick for their carry. Absolutely. And let's see what Phantom Division goes for the carry, which carry they want to decide to. They have picked Juggernaut, which has been good. But see, let's see how they have played Luna as well. And that game was an epic comeback. I asked that game yesterday, and it was just too good, to be honest. So Void Spirit coming in. Okay. So, are we going to see a Lina carry or a Void Spirit carry from the Phantom Division side? That's going to be something which we need to see now. But No, but I see they did a good thing over here. Like they can mhm, flex their heroes in both lanes, and like depending, I think they want to negate that Necro. yeah, yeah, absolutely. So if they send Necro off lane and Don make Lina can just switch to off lane and kill that Necro. Keep on killing that Necro. Okay. So, so this Necro is carry. I feel, and Dawnbreaker will be going mid because this Yep, Axe yep. is going off lane. So a lot of things happening here, I mean, different things Warpath there. Yeah. is trying to cook something over here. I feel like let's see. Let them cook. Absolutely. Let them cook. Let them see. Let's see what and how this goes through. This is Phantom Division versus Warpath. So this is going to be an exciting one because both the teams, I think, went with their comfort picks, whatever they want to play. Yes, they did countered a bit here and there, but it all comes down to how the team fights are getting executed throughout the game. Because Warpath does have a good team fight, but if they cannot line up the Dawnbreaker ult and do, follow up damage after it, I don't think so. They would be doing anything to Phantom Division because Lina and Shiro will come with a lot of damage if that's not done. So it will be good to see. And let's see how it goes. So we will be having Phantom playing Lina, Gorax on Oracle, Shiro will be going on Void Spirit, and Kimmich Mentality would be going on Night Stalker, and then we have Shivam who will be playing Rubik. On the other side, Fauji will be on Necro, RJX will be playing the Dawnbreaker, and for POS 5, as I mentioned, will be on Techies. Mia MC would be playing Axe, and Time Portal will be playing Jakiro. So this is going to be a great matchup. So I feel that Indian Fauji, Mr. Fauji, would be going mid lane with the Necro, right? Yep. Or is it RJX who's going to go mid? That's that we would see once the game starts. Because I'm pretty sure that's something we cannot determine right now because both the teams are flexing because Phantom has played carry for Phantom Division as well. So not sure if he goes carry Lina or the mid lane Lina. So we would need to see that. The only thing I'm worried about for Phantom is that like that Axe, right? Like Axe is Hmm. a good pick when you are playing against Lina, like for instances where Axe just waits for Lina to show up with the spells. Hmm. She casts a few spells and you just go blink in with your blade mill and you kill her. Like I mean that's the only part which I think these guys need to worry about in team fights. Hmm. Otherwise, I think their team fights are really strong. Phantom's team fights compared to And look at that. Warpath's. Yes, and if you look at Smoke. the production teams, production value, look at the hollow card from Mr. 4 POS 5 looks outstanding. I feel that this GIF that he has choosed to use it on his hollow card, it's just looking awesome. But let's move on. I think yes, this RJX will be going mid. Dawnbreaker would be mid this time around, and yeah, Necrophos is the safe laner. And are we going to see any team fight this time around? Let's see that. Are we going because both the teams are on the opposite side, holding the high grounds. They want to keep that advantage to themselves, and let's see. So now, as you said, see, Rubik has a lot of spells to steal, and Phantom would be playing carry Lina this time, and it will be mid Shiro who would be playing on the Void Spirit. So that's the matchup that we have. It will be Void Spirit against Dawnbreaker, and I feel it will be a bit Dawnbreaker favored because of the fact that he carries a little bit extra with Yep, that yep. last hit damage. Although both of them have almost exactly same damage, but again, I feel Dawnbreaker might.
be favored in this matchup. And we have Yep, yep. I think melee heroes Dawnbreaker really dominates, to be mhm, honest. Like, you're right. Like, mhm. Yeah, and it's a one two is to two switch on the. So yep. bottom lane we have Void Spirit. So it is not the Void Spirit who's going mid. It is the Lina who goes mid. So Void Spirit Oracle going up against Axe and Techies, and we have Dawnbreaker going up against the Lina. And at the top lane, we have Night Stalker with Rubek going up against Necro. And where's the second support? Jakiro. Oh, they're going for tri lane. They're going to do something crazy. If you ask me, it's a bad pause for these guys, Radiant. Like, let's see. Chakite, I hope they didn't notice the Chakiro yet. Is there a ward on port? No, right? No, not yet. I don't think so. Just There's process. any forwards right now. But yeah, we are going back again, Mr. Fauji, as most of you might not know. But Okay, like, I mean, like, Dawn's just using her spells. I mean, I think it's good because you're securing your last hits in the lane. yes, About because if yeah, yeah. you just wait to last hit, like on the creep's low health, it'll be difficult for Dawn to do that because Lina will just do free hits. So I mean, it's a good thing. I think if he just continues to do that, it's a possibility he won't lose the lane over here to a range high magic damage hero. Once Lena gets some levels, it would be really difficult for Dawn to actually lane against her. But I think Dawn knows that, and that's why she's pressuring her continuously. And at level 3 already, look at the Lena's health. She's struggling with it. She's down to 200 already. So yeah. But I mean, like Lina just has a portal coming in. I think she will be. I think she's okay for now. Oh, and we already But have a let's see. first Oh, we blood. have a first Yes. blood. And the techies coming up with the plays and going up on the Oracle. And I was thinking of it that there might be a first blood in bot lane. I just switched to top lane at that time, so my bad. Yeah, Lina really needs that level ups now, I feel like, for that magic damage. yeah, But Dawn is really like just pressuring her with that second spell, yeah. hammer. But still, it's totally even in the mid lane. I guess the last hits in the CS shows it's 15, Yep, yep. 14. So nothing too much to be scared or too much to worry about. Yes, Dawn is level 4 already, and look at that. Look at that. She wants to pressure Lina. She does not want her to breathe have any breathing room, to be honest. True, true. Give me one moment. Ooh, I'll be right Rubik back. almost survives in that lane. That was a close one. Oh, nobody wants a 4.5k sub. Well, you are too much in demand, I feel. Moving on. So bot lane looks so game has started a bit slow. Only one kill as of yet. We are moving into the fourth minute of the game, and mid lane still, it's totally almost both the mid laners are putting in their maximum efforts, and both of them are looking really competitive right now. And Dawnbreaker tries to go on this.
Uh, Lina in the mid lane. Ooh, almost there. So Dawnbreaker is doing the right thing. She is really putting the pressure on Lina, not letting her have any breathing space. And I think Dawnbreaker has done really good in this lane by not just surviving, but matching the CS as well. I mean, leading the CS right now against this Dawnbreaker. So it has been a good start for her. And look at that. So lining up all the spells and making sure the maximum damage is inflicted on this Lina. So Lina is having a bit struggle. She's have to have a lot of regen for mana and everything because she cannot just rely on the bottle because it's already empty and she's out of mana. So if this keeps on going, Dawnbreaker might jump on her again. If I talk about the top lane, it's quite even with Necro, you know, not giving that hard of a time for the Night Stalker. But it's night time now, so Night Stalker might feel a bit strong. And look at that. Axe doing the axe things, going back, doing the back door. Wants to put pressure on this White Spirit. He knows that White Spirit cannot do much of him in the laning stage. So yes, look at that. And Oracle is also not having that good of time. So bottom lane is not doing that. I mean, in terms of how the pressure is coming onto them, but if I look at the CS again, CS is almost at the same level for all the lanes. So I think we might see a kill coming in. Here comes the Dawnbreaker. As soon as she got the level 6, he jumps into the bottom lane, goes on to the Oracle, and now jumps onto the Void Spirit. And we see a TP coming in from the Rubik, try to save his carry, and he has done good with the lift, but the chase is still on. The Void Spirit cannot survive. Rubik tried his best to do it, but yes, it was a little too much. And look at that, the axe coming up with the call again. I think it will be another call, another kill for the Dawnbreaker. A great rotation in the bottom lane as soon as she hits level 6. Gets the 2 kills and an assist on 1. And at the same time, they see that opportunity that, we should be going on to the top lane as well. So Necro pressuring the Night Stalker at the same time. So this game, as soon as the dire side hits their levels, they are going to start pressuring. And I think once this timer, the cooldown goes off of this 52 seconds, they will go back again. And Lina coming in, trying to kill the Necrophores. And Lina shows up with her rotation that if you want to do something, I can do that too. With the level 6, Lina goes onto the Necrophores and kills him. And I think they would go on for another kill on the Jakiro. Lina getting a double kill as well. So both the mid laners doing really great by doing the rotation on the time for their teams. So that's really great. I mean, both of them understand that how important their role is, how important their rotations are in this game because both of them does have good ultis. Wherein Dawnbreaker comes have a global presence with the Solar Guardian and comes with the heal and the stun. And but when you look at Lina, she comes with the Laguna Blade with huge damage on the Necrophores. And again, Necro is getting pressured by the Night Stalker in the night time. So yes, now the Radiant side has starting to put in the pressure from their side. Phantom division, but bottom lane Axe is really pressuring this Void Spirit and goes on him again. Void Spirit dies. Void Spirit is having a really tough time. It's not a good time right now for him. He is really struggling. And look I'm at back. that. Yes. So this has been a quite an I'm just eventful looking at the last couple of chaos. minutes. Yes, last couple of minutes have been chaotic. Both the mid laners rotating on their ults and then Axe pressuring the Void Spirit back again and again. And look at that. Again, Rubik goes down along with the along with the Night Stalker. So see, as soon as this ult comes back, Solar Guardian comes back for Dawnbreaker, she is ready to make a move. She does not want to hold it back, even if it's a support kill, she will jump in and help her team out. So that's what I feel is happening right now, and that is how the tempo of the game has been taken care of. But Phantom really did a great job. He took down the mid tower. He capitalized on the rotation from the Dawnbreaker and saw the opportunity that if that pressure is coming on the top lane, I need to pressure mid lane and get the mid tower, so that the space and the map really opens up for his team. So getting the mid tower at 9 minutes in, how huge is it, Demon? I mean,
It's like the perfect trade. I feel you're rotating. I mean, Don's just keep on rotating, so he just took advantage of the situation because now Lina can roam freely. Lina can jungle, hit creeps, rotate where she wants. Once she has that BOT, it just gives Lina a lot of space now to help the side lanes. And I feel like bottom lane really needs that help, so Killing spree. Lina is just gonna do that, and she did that. Like, I mean, just got that kill now. She got the mid tower. She went bottom, looked for a kill, got the techie skill, went back to the mid. So not giving anything away to this Dawnbreaker. She has not done. I mean, she has done hardly any damage to the mid tower. So Lina is defending her mid and making rotations at the same time. So that is something which is keeping the net worth lead not getting out of control on the Dire side. Radiant team are still very much into it, and if we go, and here comes the nice talk with result straight away going on to that Leah on the Rubik, and a huge gank is coming on in, and Necrophos goes down. A rotation from the Void Spirit. I think this is what he needs to do Dominating, I to guess. make sure that he recovers into his game, because he had a really tough time playing against the Axe. But now Axe, what I feel Axe needs to pressure this tower and take down this tower so that his carry Necrophos can move down and farm freely in a safe lane, in a bottom lane. Dire's top tower is under True, attack. true, I agree. But this Radiant's year, if you bottom see, tower they is got under the top attack. tower now. It's just more and more and more of map opening for the Dire's Radiant top just to tower pressure has fallen. people who are farming jungle Radiant's bottom tower and get that is bot under tower attack. now. It's just crazy. Like, I Radiant feel structures are fortified. even though Dire has like more kills, Radiant has like a lot of advantage tower wise. Radiant's middle tower, Radiant's bottom tower has fallen. Axe has his blade mill now. I mean, it's good. Like, he's not going Blink first. I mean, it's fair enough. But I feel, do you think Blink was the Radiant's play middle over here? tower is Blink under along attack. with Dawn ult on Lina, just killing Lina in the map. I feel yes, because the way Dawnbreaker is playing right now, a quick blink on Axe could have been, a much better and higher tempo, because I don't feel they are hitting that hard to Axe right now. That blade mail is required because Lina anyhow will be very much away, so it would be really tough for Axe to call Lina without the blink dagger, right? So yes, blink would have been a better Dire's choice. middle tower is under attack. Coin for me. Be nice keeping for it. More kills now here. So this is what I was talking about. Like, I feel like Blink would have been better. You're right. Like, because I feel Dire suddenly just stopped doing something. Like, they were just very aggressive early. But I feel like they've just come onto this whole, like, where they are just farming and getting their items. Can you hover onto Necro and show what Necro has for now? Okay, Necro is gathering. Is this something like a new meta? Like you're going 3 fluffy hats? To be honest, I am also seeing this for the first time, but this patch you have been seeing a lot of Ah, different true, builds true. on heroes, so you cannot say or ask anything. But I think Necro did this to have more HP in the laning phase, because he decided to rush for the Radiance. As you can see, he has a 3300 gold stacked up, so he just wanted to sustain in the lane. So that's why I think he bought 3 fluffy hats, so that he can get to the Radiance quickly, and then post that he can think of moving on to the next item. But yeah, Lina getting the BOTs, moving here and there on the map, and now pressuring the bottom tower. So a lot is happening. True, true. I mean, if you see, this is what we expected, right? Yeah, You take 2 towers, then you just pressure map on Lina. Like there's nothing they can do. They can't like. Lina is already like all over the map now because she has BOT, she has a Kaya coming in. It's just like a lot of damage and a lot of rotations now.
And in comes the ult, and in comes the Dawnbreaker to save his Necro's Necro, dead. and Necro might Oh, survive. he's No, here still comes the no. He yes, doesn't. here comes the Oracle with the Fortune's End at the end, and yeah, I think the Techies is also going down. So that's, I mean, Dawnbreaker did try to save Necro with that ult and with the heal, but I think that was too much damage for Necro to handle. And to be honest, Necro does not have any items right now, so it is really difficult, or I mean, it's really easy to kill him as of now. But if they get some time and Necro gets to that, 2 or 3 items, it won't be this easy going forward. Right now, I understand that this Night Stalker is using his ult and just jumping onto him, but once Necro starts to hit his timings, it would be really Dire's difficult. bottom But tower for is now, under Necro attack. is at the bottom of the course. He's at the sixth ranked Dire's bottom structures are core right now fortified. for on both the teams with only 5.5k net worth. So he needs to really catch up. Dire's bottom tower has fallen. And I think that would start once this guy gets his blink. Which is soon, anytime now. Dire's bottom tower is under attack. Killing spree. This Necro is got down again. I mean, Necro I needs to stop feel going. Axe will back off Yeah, I think right now. Necro really needs to start farming in the bottom lane. Dire's top tower Axe is should under be taking attack. this aggressive farm, to be honest. Because like this, Necro will only delay his radiance, and it's already delayed. It's already 16 minutes in, and Necro has only the relic with him, so not an easy task. I would just give it to you for a couple of minutes. I'll be back. I'll be hovering the map Dire's though. middle Don't worry tower about it. is under attack. Dun, 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 dun. I mean, so we do have like everyone's just farming now. Is under attack. I mean, I feel Necro should play like on bottom lane, but I don't know why he's going top again and again. He's trying to take that risky farm over there, but I don't think it's worth it. Meanwhile, Lena TP's bit, Lena goes in to just hit creeps. Dire can't make plays right now. I feel like they're underfarmed and they need those core items right now to take initiations and all. Lena is walking bottom on the axe, while Dire's top tower is Void under Spirit attack. TPs takes portal as well. Can they get a kill over here? Lena walking towards the neutral camp. Lena gets a stun. Not a stun. It's the first spell. Gets a stun now. And Axe is dead. Another kill for the Radiant. Another one bites the dust. I mean, it's crazy. It's just how Radiant. It felt like the game was in Dire's favor early game, but Radiant just turned the tables and got the game in their favor for now. Money to burn. So, are they gonna make some plays? Is Dire gonna make any plays? I mean, they are standing together, but I don't know what they're doing. So I'm back. Sorry, I Meanwhile, had to take care of some admin things. Yes, absolutely. But now, as we can see, although, okay, we see a move going on to the Lena, but Lena has that shield rune and also have that Oracle on behind of her. I don't think so it's an easy kill, but here comes the axe call. This is Okay. what I was talking about. that's what I was Yes, talking about. Yep. that's a great call, and the follow-up from the Dawnbreaker, taking down both the mid laner and the support, but now losing both the supports. They decided to run away, and I think there's another call coming in from the Axe. He's trying his hard to make sure he gets more and more damage, and here comes the Necro with his the first Reaper scythe after the introduction of his Radiance. That's what Necro needs to do, and this is the best thing that can happen to him, because as soon as he got the Radiance, he got a kill added on to it. So good fight on the Dire side. I will say it was around 1k net worth switch, so not bad considering that how the game was starting to lose control for them. But this blink, so this is what we were talking about, right, Demon, that this blink pickup from Axe really can change the team fights, because jumping on Lena and I mean calling her really, because Lena is very squishy.
in the early game. She does not have that much HP, and once she gets more and more damage, it would be much easier for Axe to kill her in his call, right? So that's what was required from Axe, and he did that once he got his Blink Dagger. So Lina has to be careful now. She cannot get out of position and she cannot get called by the Axe, because if that happens, obviously it would be an easy fight for the Dire side, just like what happened right now. It was and Dawnbreaker ult follow ups the Axe call perfectly. I mean, if you see, right, like over there in that call was just not just Lina, that was the Oracle as well, because he didn't want Lina to just survive from Oracle's ult. He called both of them, got a kill, got his team a kill on both of them, and they won the fight. Like, I mean, good thought process over right there. Absolutely. And rightly, they're starting to hunt again. Axe knows this is a good timing, and they might find Lina again. And here comes the call, and here comes the Dawnbreaker ult On to ult. follow up onto it. Axe was a bit early on his culling blade, but he did what he wanted to do. He got the Lina kill, and that's what they were looking for. And but at the same time, the carry is getting pressured. Oh, an Axe call Oh to no! save the Necro. That is too good. Who would have thought Crazy. this is going to happen? But the Oracle comes back in with that fortune and takes down the Necro. But at what cost? It is a 1v4 trade. They got the Necro, but they lost their 4 heroes, all the cores dying, and along with one support. This was just too good from Axe. I mean, the way he moved back, saw the Necro in trouble, and just moved into and called him. That was too damn good. And that call also was like that, like that end moment call. Necro was just one Radiant's hit top away. tower is Yes, under attack. absolutely. And steals the wisdom rune as well. So Axe, as soon as he got, okay, I think there was a free kill for the White Spirit. Yeah, so Techies was a bit out of position there. I think he was just creating space for his Axe. And here comes the Night Stalker. Looks at the opportunity to go on this Chakiro, which we were thinking of. That is the right thing to do, right? So Yep. yeah, I mean both the supports, they were a bit out of position, but I think they whatever they did. And here comes the almost there. Rubik tried his best, but in the bottom lane we see Lina going down again to that Axe call. This Axe is just playing out of his mind. As soon as he got his blink, he's making plays top, bottom, and everywhere in the map. Yep. I mean, I feel like he's just doing the right thing. That's just Dota. Like, I mean, like do the right thing the right way. Wait for your blink, wait for your blade mill, kill the hero that has damage, is dishing out damage the most via right clicks. So I feel like Lina can't really show now on map anymore, even to push lanes. I mean, Axe just made a statement over there. Absolutely. And look at the techies, putting in his mines in the right areas. If any of the support or anyone walks in, might go down very easily. But yeah, this Axe, he has got a lot of confidence now after getting that blink, and after just after the blink, he got a couple of kills, which really boosted his confidence. At the same time, now Necro has the BOTs as well, along with the Radiance. So Necro has started to scale up and starting to rise up into the net worths. He's not the bottom net worth core now. He is above the Night Stalker, so he might feel very good. But he goes AFK. Something is not right with the Necro. Tell me something. I'm still confused. Like, don't you think instead of three
Fluffy hats, two braces would have made a better difference. Laning phase. Dominating performance. And they get that Rubik kill. Radiant's middle tower is under attack. So I think Dyer is there now. Dyer can take fights. Dyer can actually push through. I don't know like what Radiant has Yeah, and Dire are is hitting planning their now. item timings, and they are just making sure that they take most out of this item timing. They really need it, and they're doing it right now. So see the aggression coming in. They're pressing the tier 2 now at 24-minute mark. At the same time, so Lina has a shadow blade, so she might look for any catch up or any kills here and there. Oh, she jumps into the way. Could have been a bit difficult one, but yeah, that's going to be a kill. And here comes the Techies with the stun. A great stun from Techies. Lina is not looking good Lina here for is dead. Lina. Lina is Yes. dead here. And on the other side, Axe is taking care of both the cores there. Look at that, the fight, how is going. How Axe is controlling both the supports, and at the same time, his team is just taking care of the rest of the cores. It's not looking good at all for the side of Phantom Division. Warpath making a statement with their item timings, moving on to their side of the map and making plays here and there, making life Can you? difficult for these guys. Yep, yep. Can you show what this guy has? Like the void. Yeah, the Void Spirit. Void Spirit currently is, has a Mage Slayer along with that Spirit Vessel. He's building into that Aghanim Scepter. He has two components of it. I think this Aghanim Scepter. So as Axe was, we were waiting for Axe's Blink to make, for his presence to be known in this game. I think the Void Spirit really needs this Aghanim Scepter so that he can silence those supports, because Techies with those stuns and then Jakiro coming back with the stun is creating a lot of difficulties for them. And then Axe, the way he handled both the support in the backline, mind you, Oracle had to buy back in that team fight, and to much extent that buyback was not that useful for him. But again, both the supports were manhandled by Axe, and he got both of them out of the team fight. And just like that, all three top cores are from the Dire side, and they have a 7k net worth advantage. Yep. So yeah, But I things. mean, I feel like Void need. I think Void should have just gone a different build, like something like maybe Echo Saber, Manta. I mean, this is what I feel like. If you're playing Ko, you should like, because right now, see, these guys' items are just countered by one item for Dire, which is BKB. Mhm. Like these guys get a BKB and they don't have much physical damage to run down enemies. They just have to rely on that magic damage. Do you think Maid Slayer was a good item on Void Spirit? I mean, I feel like it was See, I think he uncalled wanted. for. See, he wanted to make that item, I think, for Necro and Jakiro, because he knows that a lot of magical damage is coming in from these guys. So yeah, I mean, Maid Slayer, it was a situational one for him, and I think the way his lane went, uh, yeah, I mean,
it is getting tough for the team Phantom Division. They need a lot of time. They need a lot of fights to go their way now. Going starting from now, they have to avoid some fights till their cores get some items back. So, I mean, there's just some conversation happening from Night Stalker's side. but while this game is paused, look at the. I mean, how, I mean, the way the game is panning out and the way Dire team, hit their item timings and utilized it has been really commendable. They really understood what is required from their heroes, and especially Axe. He started moving around as soon as he got the blink, and I think that has made a life a lot easier for this Necro, who is the second highest net worth core now in this match, who was struggling to farm, and as soon as he got a little space and a couple of kills with the help of Axe and his team, he's recovering quite fast. And on the same time, if you see, I mean, Lina has a Shadow Blade, but she's going into Silver Edge. I don't think so. I mean, getting a Silver Edge would be making any huge difference. But the problem here is that Night Stalker is very far away, still 1k away from his BKB, and he really needs it. If he really needs to kill those backline supports, he needs that BKB so that he can jump on them and just delete them from the team fights, and then his scores can take care of the rest of the team. And Rubik, although Rubik is stealing good spells, I've seen him steal the Dawnbreaker ult a couple of times and use it in the fight as well. But the execution from the team has not been on point, because he has got the Dawnbreaker ult, but then the hold up and the lockdown is not there for him to use that spell perfectly. But I think he might be aiming to get some Jakiro spells now, because those would be much better to use in the team fights, and he can use it to a much better way because of the fact of his passive abilities. True, true, true. And like, I mean, if you see, like, I was just telling you, right? Like, I feel Radiant is lacking that damage, right hit damage. Yeah. And now Lina, I can see Lina's items queued up, and I feel Lina is just gonna do that now because Lina has like BKB, Deadless, and everything lined up for her. So she's going Silver Edge right now first. I mean, I don't think Yeah. Silver Edge should be the play over here straight on, but I mean, if you're going Shadow Blade, it's okay. Like you just want to reposition, get out of, people focusing on you and just reposition and then start hitting back again. It makes sense. But going Silver Edge, I don't know. Like, I mean, I still feel like she could have gone something like a BKB Deadless first before heading into Silver Edge. But yeah, it's good that Radiant has a right hitter now coming up in the making. But until then, I think let's see how it turns out for both teams. Yeah, I totally Is agree. what is Axe going? Axe has a pipe already. Now he's going into a BKB. He has a shard and a Oh, pipe. okay. So Axe is quite farmed as well. So I not. saw he was queuing up Lotus, but I think he decided to pull out that BKB, which Mhm. makes sense. Playing against a Night Stalker. Absolutely. So yeah, but It's crazy that mhm. the techies has his Axe as well now. I mean, see, the events that has been happening for the Dire side, the supports are surviving the team fights. They're getting the XP, and that's the reason why. I mean, they're getting that much, uh, extracted from the map. So yeah. So
Techies with the Ags. Now, what do you expect from Techies to do? Uh, what should be his next item, because he's getting going into for Kaya right now. Should he rush for the scythe, or do you think Kaya is the right choice, or just go for smaller items? I mean, I feel like you went Agnem. It's okay. Like you went a little greedy because your team has the upper hand. It's okay. I understand. But going Kaya instead of a four staff or a Glimmer Cape or something which will save you from Night Stalker, Hmm. I feel that's a little way too greedy now. Because I feel like if the Night Stalker jumps this guy, he's dead. Like I mean, if this guy jumps into team fights, anything like he has nothing to run away from. All he has is, I he has his spells, so people can't Hmm. kill him easily. But if people, like if people are smart, they can just kill the bombs and then target him. But let's see, because I feel like that's too greedy. I feel he should. I feel a four staff will have been the better item over here. Something, at least something to save him or his team if they are stuck in in a team fight and they want to get back or something. Yeah, I totally agree with that, because if that Night Stalker gets his BKB and Techies has no save, it would be really easy for that Night Stalker to kill this Techies. I mean, I understand like your team is winning, you're going greedy, it's okay. Like you make one item which is greedy, but you don't make the second item which is even more greedier. But it's okay. I think they're winning, so it doesn't matter for now. But let's see how it turns out. Yeah, absolutely. It would be good to see how this pans out, but yeah. The pause timer is going on for quite some time. We are waiting uh, for the Radiant side to unpause. And we still have our stream B going on, wherein I think the match on stream B is is going towards the ending stages there. So that's what I feel. But we already have a game, and I think if the Radiant side from now on, if they are not careful with the team fights, I think that would just roll over them pretty easily. I don't think there would be any challenge or any problem. They will just snowball this game if Radiant side is not careful in the next at least 5 minutes. They have to be very careful with the team fights, with the choices, because if they take one for bad fighter after another, the Dire side would just snowball this game, and it might end in next 10 minutes. So very crucial 5 minutes, 5 to 6 minute duration coming in now for Team Phantom Division. Really crucial. What do you think, Demon? I'm sorry, yeah. I got lost. I was just reading through a message. Yeah, so I was just saying What's that up? it's really now the next 5 to 6 minutes are going to be very crucial for the side of Phantom Division, because of the fact that how good item timings been hit by the Dire side Warpath team. So if they Yep, are yep. not taking their fights carefully, Phantom Division has to be very careful in next 5 to 6 minutes. If they lose one fight after another, Warpath will just snowball this game and end it in like next 10 minutes. So next 6 minutes are going to be really really crucial for them. I mean, I agree. That is true. I mean, it's just like I feel for Radiant right now, it's just that they need to know which fight to pick, like when to fight or what to Mhm. do, what play to make. So let's see how it turns out. Just give me 1 second. I have a call. Yeah, take Be your right time. back.
I'm back, and it's still paused. How much time do they have? So it's an emergency, Mm, so it will take some time. I'm not going to force it. अरे यार. emergency on whose end? Tiger's end. On the Radiant side. Okay. Yeah, so we will resume, I guess, in a couple of minutes. It's not that funny. Yeah, there seems to be an emergency on the side of the Radiant team. That's why we are experiencing this long pause. But we will be resuming the game at 12:40. Considering the emergency, uh, we Get did, enough. yeah, we did give them extra 5 minutes. But then again, if it is going for a longer period of time, we would decide to move on uh, and start the match with the. Uh, with no pause, because the dire side also has uh, a condition on their side, because the one of their player serves the Indian Army, and he can go out for any emergency as well. So they want to save their boss time as well. Although they have agreed to give 5 minutes extra, which is from the admin team side. So yeah, I think Godex is here. I think there's something happening. So not sure. Let me see what's happening there. मेरा कैप्टन भी है ब्रो, मैं कैप्टन नहीं हूँ। रॉगर जीता क्या रहा? जीत गए. जीत गए. राजू बोल, मैं उसको
Yeah, we are going to start now. Both the teams are here, so we should be Stream. going. We should be going live, and we are live. And I am streaming for you. Just give me a second. There you have it. So we are back again, guys. The timeout is done, and yeah. Here comes the smoke, and I think they will be going on banner. Not something which banner would have been expecting there. Just straight after the one pause, banner has been hunted down. The guy is definitely not having a good time in this game now. I wanted to deward that, a vision and want to take down that vision, but they read the movement. They wanted to defend the ward, and they rightly did and got the kill on the banner. So now a lot comes down to this, as I mentioned earlier. This phase of the game is going to be crucial for the Radiant side. How they take the team fights and what all things they manage to do here now. So but mind you, if this Radiant side gets a little bit more time and gets to their items a bit more, the game would be difficult for Warpath. It won't be that easy. That's looking right now, because if that Lina gets to some good significant another item along with this Void Spirit getting to that Axe, who's just one more component away, 1k away, I'm pretty sure the Phantom Division side will make another comeback, and then going high ground won't be that easy. And the right thing they're doing is right now they are taking the rush. I agree. I mean, they're just hitting timings. Like, everyone's just hitting the right time. Absolutely. Necro has BKB now, and Necro is going Shivas. I feel Necro should go Agnem or Heart, something like that over here. Okay, there's another ward and another defense on that ward. They have been right on point with their wards. This has been really, yeah, absolutely. This has been really difficult and not that good for them. And look at that, Necro is jumping into that tier 3. He just wants to, he wants to snowball the game now. He's not want to give any breathing space to the side of the Phantom Division. And look at that. Now here goes a Night Stalker, goes onto the techies, gets the kill. This is what we were talking about. No saving item on that techies is always difficult, but here comes the Axe with the call on Lina. Yes, this Lina has to be very careful. She cannot be this out of position, because the Axe will always be hunting for her. I mean, see, like, this is what we spoke about early game, right? Like, there's just one person who just kills Lina, like, solo. Like, I mean, the team can kill Lina if they go as 4 or 3. Yeah. But there's just one hero which kills Lina, and Lina has to be careful from that hero, and that's just Axe. Yeah, absolutely correct. So yes, I mean, this Lina has to be very careful. But see, now this BKB coming. Oh, that blind call from Axe. He thought that, yeah, the farm is still going on. But Night Stalker read it completely and just moved out of it. So if Night Stalker now has a BKB, and if he is eliminating the Techies and Jakiro from the team fight, I feel the team fights after that would be much more easier for the side of Phantom Division. So Warpath has to be very careful. They're supposed to have to be very careful, because both the supports do not have any saving item on them. Although this Jakiro is making into a glimmer, but I'm pretty sure Night Stalker would carry a dust, and with this Techies have no saving item and getting into a Kaya, Techies would be food for this Night Stalker. So Night Stalker holds a lot of the cards right now for the side of Phantom Division. So yeah, I mean, this is not going to be an easy one. Again, game has to be delayed. Yes, the Aegis is on the side of Warpath. They took down 2 of the outer towers again. Tier 2 towers are gone, but not touching the high ground, giving still space. The game is not still that out of control. It's only an 11k network advantage, one good team fight, and the game might swing just like that. Because yesterday also, you said the same thing, right? 11k at 40-30 minutes is not that much. It can swing just after one team fight. Correct? Yeah, I mean, like 40-45 minutes, I feel like I don't really care about net worth anymore. Like, it's okay. Like, it's just how you like do team fights, and that's what we spoke about yesterday. I remember it was that LS and Juggernaut game, right? LS Juggernaut matchup, where LS team were winning and Jug's team were down in net worth, but they just knew when to take fights, when to back off, and that's how they won the fight. They won the game.
Let's see what Radiant has in their pocket right now. But as of now, I feel like Radiant is in a bad position. But Dire's supports are in a way worse position right now if they get jumped by TNS. Absolutely. Does the Void have Magnum? Thank God, he's still making it. Okay, now they're starting to touch the high ground, and rightly so they should be doing. Oh, what a call from Axe, getting onto the Void Spirit, but here comes the Dawnbreaker with an ult, with no one getting caught into it. A really good disengage from the side of Phantom Division, and now they would try to re-engage because they see that most of the spells have been used, and this Necrophos, now he is not in a very Rubik. good... Yeah, he's not in a very good that's- position. Night Stalker good goes reposition from down while taking down the Necrophos, and look at that, the damage coming in from the Lina, and the save from the Oracle is there. Lina, she is now going to hit them like that because she knows that she's not going to die. Okay, another try coming in. Here comes the Necros scythe. Oh, what a save from the Oracle! God, that's what I No I knew damage. that was cover. Absolutely, both the offlaners are down. The Aegis is gone. Axe is down. This is looking good for the side of Phantom Division. Night Stalker went down in the last fight. He tried to go on those backline supports, but yeah, he was not able to finish them. But again, a good defense from the side of Phantom Division, taking down the Axe and the Aegis, only losing their Night Stalker. Rubik with the spell steals, and along with that, the Oracle with that save on the Void Spirit and on the Lina. That was just too good. Things are lining up. This is what I was talking about, the execution, and the execution needs to be on point, especially from their supports, and they are putting in their maximum effort. And now the cores have to just start showing up in the fights. Yes, Silver Edge is done on the Lina and a shard as well. So now Lina is building into that BKB. Ooh, Rubik, they took down all the mines, and look at the HP, he's only 20 HP left. He took down so many. Oh, here goes this Void Spirit, he goes into it, and he wants to get these supports, and I think they will get supports, and another Dawnbreaker ult. No damage inflicted again. Things are not, Phantom Division, they are making the comeback happen, taking down both the supports, disengaging, going away from the support, from their cores. They know, okay, we got what we wanted, let's not force a fight. But look at that, Lina using that Silver Edge, but she's in the vision. They can see her. Axe sees her, and here comes a call. This is what the problem is with this Lina. If she is trying to roam here and there, and if there is vision, she is always going to go down, and she goes down. This guy comes in to save her, but it was a little too much for the Night Stalker. So yeah, the Night Stalker needs to run away. This death on Lina is not that good. Oh, what a call from Axe! Read the movement from the Void Spirit, and Lina with the buyback. She knows this buyback is really important, and she gets the Axe kill. Moves on. Okay, not that bad of a buyback from Lina, but yes, she needs more. She's hunting. She needs more. Oh, and a moment from the Necrophos. This might be a dieback. No, here comes the save from the Oracle. But this fight, this is not looking that good. On the side of Phantom Division, they are struggling. Okay, this is going to be a huge kill. Yes, in comes a huge kill from Lina there. Necrophos goes down, Axe goes down, another stun on point. Lina, she's now starting to hit, and she might get another one. Now this buyback becomes really valuable. Night Stalker trying to go on the Sateki support, but not able to get him. Now both the supports are left. They don't want them to go away without anything. So, but Teki is playing around his mines. He knows he can kill one guy if someone comes there and tries to catch him up. And here goes. Okay, Lina might see the... okay, Jakiro sees the Lina and moves away. So I think now both the supports would be away. But look at this Techies. He's still holding this high ground. He knows someone would come to the triangle and finally decides to move away. But another good fight. I mean, a buyback used by the Night Stalker and a dieback on him and the Lina. But again, holding that high ground. Still, the network advantage is at 11k. So
So the guys on the side of Phantom Division, they're trying hard to hold on to this game. Okay, White Sweat got caught in the mid lane by the axe. So another good kill. And Oracle just goes away. It was quite touch and go there. But Lina, she needs a BKB and she needs more damage. She's getting the chance to do the right clicks in the team fight, but she's not getting that much damage out of it. I mean, she just needs a level 25 though. If she needs damage, she hits that level 25. She has the left side spell. I think it's the crit one. I think that does damage, and she'll get a deadless. I think after BKB Yeah. now. So I think Lina is in a good position for now. But she used the buyback in the last team fight, so she's out of buyback. But she will be in good position if she gets the BKB before the last another fight happens. But now they're coming. Axe sees Lina, wants to go on her. The goal has been given a smoke play from the side of Dire. Yeah, I mean Rubik, yes, he has been stealing good spells. He has to step up a bit more. He's trying his best, I feel, and yeah, a bit more spell usage from the Rubik side would shift the game here and there for the side of Phantom Division. Yep. I feel like I really feel like Lina should go Satanic after her, what we say, PKB. I still feel like And a Satanic blink is a in. better. Blink from the side of this guy, and here comes the axe call and goes down. Like Night Stalker is dead, and I think Oracle will be dead with him as well. Both of them are out of buyback, no buybacks on both of them. So yeah, I think this is going to be the top side of the racks. Okay, Oracle has disconnected from the game. Seems to be some lag. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top barracks has fallen. Radiant's top barracks are under attack. Dire's bottom tower is under attack. Here we have BKB on the Void Spirit with Rubik dice here. Dire's bottom tower is under attack. I think the Radiant side decided not to pause the game, although the pause has been given. Uh, so yeah. That's live. But again, I think Radiant side is also a lot of pauses have been used from their side, and I think a Dire team finally used a pause. They want to give time because obviously a game with one guy DC'd is not good. Even though both the teams are not having good time, they are fighting each other. But again, yeah. So on the side of Dire, obviously they're leading the game. They have a 19k net worth advantage, but I still feel there is hope left on the side of Phantom Division. Do you feel the same? I mean, if you ask me, all eyes on Lina right now. Honestly, Yeah. only Lina can do something crazy right now, like get kills, or mow down people. But Lina really needs that Satanic, if you ask me. She doesn't need a Deadless because she is level 25 and she has a lot of damage on her right click when she casts spells.
And Oracle is back, and we are back in the game. Okay, a lot is happening, and You deserve nothing. You fought badly, died worse. yeah, so the pauses and the banter between the team has been a little too much, which is happening these time currently. But yes, now we are back in the game, and both the teams are out of pauses. Let me just tell them while we just keep on casting. Sure. Let's see. I think Dyer wants to smoke. Oh my God! Look at those mines. Yeah, too many. Yeah. And the Roshan is up. The time of Warpath is now taking that rush. They want to win this match, and they want to top the group and go straight into the quarterfinals. So just if anyone, you guys don't know how the format is this time, if you top the group, you go straight into the quarterfinals instead of semifinals. The last time we had only 2 groups, so the top teams went to the semifinals directly. But this time we have 4 groups, and you would be going into the quarterfinals instead of the semifinals. But yeah, a good team fight again. Dawnbreaker ult hitting no one, only the insects on the game. He has not been hitting his ult for quite some time now. Okay, That- look at that Lina. Yeah, Lina is hitting that Necro, but Necro is not dying. He has so much heal and so much armor there. He is not dying at all. And look at that ult coming in from the Oracle to save himself. And on the other side of the map, the Void Spirit is, just getting away. Okay. The call is there. He tried to TP out. He tried his best, but yeah, that was not what could save him. But again, the game. I feel the only person who's dying right now Radiant's is bottom tower Techies. is Right? under I attack. mean, he just died up. I mean, if he just makes. What does Techies have for now? Yeah, he's going for a Yeah, he's doctrine going now. off. He is Okay. just going too greedy right now. And there goes the Aegis is down. Lina hitting like a truck there. Not letting the Dawnbreaker get away. But again, now where is the damage? No ult, no damage. We would need to wait for another 15 seconds before she gets that. Oh, that Silver Edge hit. And yes, Axe goes down. Okay, this is looking promising because all the heroes are up, and what a stun there from the Rubik! Stealing the ice path! Doing a ravage there, getting 3 heroes! What a team fight this is! What a turnaround from the side of Phantom Division and from Rubik! That stun! Got 3 guys in it! Radiant's middle tower is under attack. And all of a sudden, Phantom Division had a 4-5k net worth switch Radiant's bottom tower in is this under team attack. fight. And Lina switching into going for a Satanic instead of a Daedalus. She wants to survive more. She thinks she can hit all the damage. They are lacking damage, but she wants to hit more and more, and she goes for a Satanic, which is again not a bad choice at all. And at the same time, Void Spirit, he's going for the next item, which is the Shivas, only 1k away. Getting the Shivas is going to be very, 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 very good for the team fights. But that Rubik stun, what would you say about that? Bonkers. I mean, it is bonkers if you see, like, that's what you were talking about. I mean, we need to see when Rubik steals what spells. Though it took him 42 minutes, but it's okay. I mean, Radiant, I feel, is in a good position right now. Even though Tyre has a 13k net worth lead, I think it doesn't matter anymore. Yeah. And for the items on Lina, I feel Satanic is the right item. Like, I'll tell you honestly, Lina is only afraid that Axe will call and she dies. And with Satanic, Lina can be aggressive, even more aggressive. And apart from that, I feel like Lina can be aggressive over here and she just needs an MKB now, I feel. Because her level 25 gives her enough critical damage to mow down enemies. With MKB, I think it's just like way better right now because these guys have a lot of armor.
If you see, Necro has a lot of armor as of now. Can you hover onto Necro once? Yeah, absolutely. So, yeah, He has a you heart got as like well, 20. right? Yeah. Yep. I feel just satanic MKB, bro. Like, I mean, Absolutely, yeah. The crit is that's already GG. there. So, no, she's going for a Skadi now. And Scardy. I mean, Yeah, not bad, not not bad. bad. If you ask me, not bad. Now But Axe is starting to miss his call as well, so not good. And look at that Lina, she's hitting that Axe, she wants to kill him, and she gets it. Now this is looking another good fight, absolutely. And all eyes are on this Rubik, which spell he steals and what he does in the team fight, because Axe missed his call and paid with his life. Axe has started to miss the calls and the execution, and I've been seeing from the last 3 or 4 team fights, Dawnbreaker ult is not landing on anyone. So yep. Warpath, are they losing their cool in this game? Is there another window for the team side of the Phantom Division? And here, they saw both the supports running away. They are going on them. Yes. Techies Yeah, has Techies nothing will be for gone he and shall is die. gone. Oh, there comes. And here comes the Satanic. She might not die. Yes, absolutely. The Satanic is there to save her. She starts on hitting on that Dawnbreaker. Not going to be easy. Not going to be easy. This is a team fight, which is looking really great. Where is the Rubik? Yeah, Rubik has to steal some spell. He's not stealing any spell as of now. And look at that. Look at both these scores. Look at the Lina. She wants to kill someone. She's that Jakiro, and Jakiro will go down. Necro needs to be careful. He has no save left, and he might die. And the ult coming in from the Dawnbreaker doing nothing, and it is going to be a team fight, and the ult coming in from And the Rubik Rubik. comes with it. Yes, steals the ult, and what a It's turnaround. GG. No, the buybacks are there, but it is only a 6k net worth advantage left on the side of Warpath. What a comeback this has been from the side of Phantom Division. And this is not the first time they have done this in this tournament. This is the second time they're doing it on this stream. Yesterday also, one of the games, we saw an epic comeback from them. And another one coming up again. Lina is going to get her. And yeah, we have the save there. He has the save in the back. I don't think so you are going to kill this Lina that easy. But okay, Lina, not good. You need to get out. Okay, you tried something. Let's not force it. Okay, here goes Lina. A dieback on Dawnbreaker and on the Jakiro as well. What is happening with Team Warpath? They're throwing this game. Everyone is going one by one. Buyback on the Necro is coming in. Yeah, but yeah, I think Techies is going to go down as well. There's no save on Techies. Techies goes down, and look at that. The Axe jumps in, calls the Rubik. To what extent? Nothing. Okay, she goes back. Lina goes back a bit. She wants to be very careful there. Everyone is buying back in this game. They know this game is going to go down. The buyback comes from the Axe side as well. No buybacks on the Warpath side left. Look at that, everyone has bought back and died back. And look at this Necro, he might die back as well, yes. And Lina with the Satanic, she's going to heal up again. And this Necro, he does not have his second spell to save him. And Necro goes down, that's a dieback. And Necro, what a comeback this has been from the side of Phantom Division. And this is going to be the end of the game. And just like that, in 5 minutes, the game has turned its head around. Who would have expected such a comeback from the side of Phantom Division? Oh, this is going to be a sore loss for Warpath. A lot of fights around pauses, everything happening, and Phantom Division coming out on top. No buybacks. Axe with the last chance trying to do something, but he cannot. He just cannot. They will kill the Axe and they will move on, and that's the GG call. What a game from Phantom Division. This is it. A great win for the side of Phantom Division. What a comeback we've seen this time around. Demon, what a game. What a first game that we had on our... Crazy. And rightly so. Phantom is
the MVP of this game, and rightly deserves to be one, right? What a game this has been. So we will move on to the next game quickly because I think the lobbies are up. Let me just check quickly and we'll be right back. And without any break, we are back for the game number 2 of the stream. We are back with Arise Corp versus Crimson Whale, guys. And with me, I have for this match Elferno and Mr. Casti 10 seconds remaining. joining me in the casting Radiant team. team ban. Hey everyone. What a nice turn of events for Phantom in the last game. 10 Lina seconds was good. remaining. A great comeback. Absolutely. I mean, 5 seconds that was remaining. just too good to be true. Dire The team game, the ban. kind of game that we witnessed just a quite while back, I still not able to, collect my thoughts, and I have to straight away jump into the next game. 10 So seconds quite cruel for remaining. me, Dire to be team honest, ban. that I had to jump into a game straight away after, even after, uh, having Bot team ban. casting such an awesome game, such a comeback. And it was just too good of a comeback for Dire Phantom team Division ban. there. But yeah, we'll get back to this game now. Arise Corp versus Crimson Whale. I'll give you both the mic, Kashida and Elferno. Take us through the draft, and I'll join 10 back in like seconds 5 minutes. I remaining. just need a quick break, but it's over to you both. Take us through the draft. 5 seconds remaining. Dire Definitely, team definitely. ban. Go. So the usual bands coming out, Kastida, what do you think? Uh, Earth Spirit, Snapfire, 10 Spirit seconds Breaker getting remaining. banned from Crimson Whale side, and Arise Corp banning the 5 Tusk, seconds Night Stalker, remaining. and the Phoenix. I believe the God's Helper, GH. He plays a lot of Radiant Phoenix. He team plays a win. really good Phoenix.
So maybe the team is targeting him, so he doesn't have a comfort Dire time. team pick. Yeah, I agree with you. And also, there's the Night Stalker lane. You see that? It's a very Hmm. tough lane against Night Stalker. With the third Radiant skill he team has, ban. it's very easy laning for him. He heals instantly. He harasses a lot, and within after 5 minutes, it's gonna be chaotic. So yeah, it's a good ban, I say. Right. The supports don't have very good time against Night Stalker in general. So Hmm. Rubik is getting 10 picked by a seconds Scope. remaining. That's why I think they prioritized banning Night Stalker itself because 5 Rubik doesn't like seconds to play remaining. against Night Stalker. Yeah, I agree. And Radiant yeah, team ban. Crimson Veil going for the Lich, the classic one. It's gonna be good to see if they are gonna go for like a combo of Grimstroke and all, or they are just happy with the Lich and try to make something happen around him. Dire team ban. Yeah, Grimstroke Next, getting banned by from Ariscope. Now, one very this. interesting fact for you, Kasida. Gobs here doesn't really like Grimstroke. He has some sort of nightmares from the hero. So I feel Oh, that Grimstroke ban may have been coming from his 10 own, seconds inner remaining. demons. He's like, yes, I don't I want to agree play with you. against him. 5 seconds remaining. That would be the case. And Dire I also team had a pick. thought. I think there's gonna be some picks like Sniper or as such, because Aghanim Scepter is really effective against heroes as such, like Sniper or Mm, Medusa, and those picks get definitely. eliminated immediately, if at Yeah, all even hard Grimstroke hitters, would something attack. like Remaining. Yeah. Juggernaut as well as you have said Yes. to add on to that. Yeah, any Exceptional. hard hitters 5 would seconds be removed, remaining. but yeah, now they have the leeway of going in that direction. I think Tambam plays Yes. most of like I've seen him play majorly melee heroes who are like Yes. hard hitting. Yesterday as well, we saw him carry one of the games with on void, faceless void, right? He Yeah. was really fabulous on it. He was So exceptional. would love to see, yes, definitely, would love to see him replicate the same success here as well. Hoping so. So one thing I'm interested in now, I don't know who plays this Rubik on the side I of believe. Arise. Okay. So if Radiant at all we team have to pick. take a guess, say Well, we have the ability to see what roles they have preferred in when registering for our tournament. So I see Gopes and Dark only as yeah, supports. And from what I've 10 seen in the seconds previous matches, remaining. Gops is going mid, Raiden is going offlane, Tambem is playing carry, and 5 Dark is seconds hard support, remaining. while Marlboro is on the soft support role. So okay. it will either be Marlboro or Dark, Or but dark I don't think Dark has the hero pool, and that of includes Rubik. Rubik. Yes, I agree with that point. So it would be interesting to see. This would be my first time seeing Rise Corp actually pulling out Radiant Rubik. I've not team seen pick. their previous matches, so I may be wrong. And here comes the underload. It's Raiden's comfort pick, one of those. He just stays in the lane, bullies Dire out the team pick. carry, farms a lot, and then tries to join the fights later on. And there comes the pick for Dark as well. So I would rely on your expertise and ask you, is there a chance that Mhm. Rubik might switch to a mid role for this particular team? Would they do such kind of From my expertise, yes, against 10 these seconds supports, it yeah. can remaining. be pulled off. But from my expertise of knowing Gops, he will 5 never do that seconds remaining. because because he has tried it and he has never won the game. Okay. And right now, I think they are trying to win the game, so they will not be making Yes, the switch. Dire team pick. could be. Yeah, I agree with you. And this is actually interesting to see. Lycan for Yeah. Crimson Veil. I actually don't know who is their offlaner. I believe Noctis plays a little bit of offlane. I've seen 10 him pull out seconds maybe a remaining. Beastmaster previously. 5 seconds remaining. Yes, So Radiant he team Beastmaster, seems if you ban. talk about yesterday's game, the Beastmaster one, right? yesterday somewhere. Yes, yes. I think Yeah, I saw he played. him some on Yeah. something. Some I don't can't recall the exact series, but he did pull out a Beastmaster. So he is like comfortable and confident in his 10 macro seconds ability. So he remaining. is going for it again. Good to see a Lycan coming out. 5 seconds remaining.
it's good. Like it's good against Lion, it's good against Rubik, but the issue comes when it's underload available in a fight. You know, just put the pet. The wolf can't chase the supports anymore. They can easily disengage. And one thing I still don't like is that Lich and Dark Willow plays bit from, like a behind. They don't really go in. Maybe Dark Willow Radiant's can go in top by banned. making blink and all, but it's like a heavy investment for them, right? Yes, So it's gonna be like Dire hard for team banned. Lycan to set up. Like it's gonna be hard for Lycan to just ult in, run in. They won't allow him to do so. it won't. I don't think there is anyone in their picks as such except for Dark Willow. If at all, Dark Willow makes a blink and uses her ulti, I don't think anyone else can match 10 the seconds pace of remaining. Lycan in terms of speed and movement around 5 and seconds positioning, remaining. etc. So there might be Radiant a chance that team banned. there might be parts to Dire a team gank, banned. like something is happening upwards and something is happening Mm-hmm. downwards. Yeah. Definitely, definitely. Mid game, I believe Lycan will be playing his own fights. He'll be Yes. trying to go in the back lines, clear out some supports. But it would actually hinge on their last pick. They have the overall last pick. They have their carry 10 remaining, I seconds believe. They remaining. may actually send Viper carry. I'm not sure. But I don't think if they want to 5 send seconds Viper carry remaining. and, drag out the game and then lose it eventually. So I believe they will Radiant go for team a good pick. like answer to Raw Ranger, try to something that can jump her, something that can man fight her, and then someone who can actually like carry the game for them. Agreed. Okay. Just a throwback. Dire team During pick. Dota 1, there was a meta during the 2012-13 era when there was no Hurricane Pike as such. Hmm. And they used to make Radiance for Viper, may just keep him at a melee shot level, short distance level, Hmm. and they used to go for 10 Radiance seconds because remaining. this is one hero who couldn't farm actually. There 5 is no way he seconds can remaining. actually farm like a carry. Definitely not. Even previously with the previous patch where Yeah, I you think had a life steal yes. and all, he went back to the basics. But if you look on the Rise Scope side, there is a very interesting pick. It's Tinker. I don't think we have seen this hero in the tournament yet. Entire tournament yet. Yeah, So agreed. yes, yes, yes. And I believe Gops plays a really good thinker. I have seen him once or twice maybe, but he is somewhat of a like a expert on this hero. So it would be like interesting to see how he goes on about his actual shenanigans. How does he take care of? And look, if you notice, Tinker is actually a really good counter to Lycan as well. You can turn into a dog all you want. You can run at him, and he's just gonna like laser you, and He's you gonna, can't hit yeah, anything anymore. that's it. Exactly. He'll just remove himself from the fight immediately. Yes, but Lycan does have some edges to him. Having the wolves and all, he can pressure Tinker a bit, but Actually, it harass a depends. bit. Yeah, agreed. Like it all hinges on that's what I'm like. It all hinges on what comes out now. If this is something that can take care of a Choose your vengeful hero. spirit, Oh, I don't know if whoa. this answers their queries actually. It's I a good really pick. doubt. It's a good carry right now. Yeah, it's a wild card, I suppose. And I think they are sending Vengeful Spirit mid rather than safe. So it is Viper safe. Who would go? Okay, I think okay, you're saying that Venge might pick up the offlane piece. No, no, Venge will go mid. Uh, Venge will Lycan go will mid, go Lycan will go off. offlane. Okay, Lycan will be going off okay. lane. So we have, okay. Yes. Mhm. And as expected, Marlboro is playing Rubik. We can see Bhai Goat No Chill didn't pick any heroes yet for us, so Viper will be for him. Noctis taking like an offlane, Deathwing and Goat Selfer as support, Emperor taking Vengeful Spirit mid, while on the other side Marlboro and Dark are on the support roles, Raiden on Underlord off, Gops as expected, mid Tinker, and Tambam God on Drow Ranger carry. I don't see this guy play a lot of range carries, but it is a treat to see him carry games. He is an amazing carry. Yeah, I think from last games, I think he has outdid himself in few games. Mhm. Yeah.
Prepare for battle. Thank you so much, guys, for taking us through this draft. And we are into the game, and we have. I am seeing some problem with this guy's DP. Uh, is I it? do notice it now. Yeah. Let me check into it as to what could be the issue. Give me like a What we minute. can do to fix it. We need to do that because the guy holds a hollow card, and we straight away we have a level 1 fight here. Try to go on the Tinker, and here comes the Underlord with the first spell, and Raiden takes down the first blood along with Corpse and Tembam. A Rice Corp 30 seconds. straight away, 2-0 lead. The Bounty Rune fight started way too quickly and ended too damn fast. So I need to see what happened to Bhai Got No Chill, because the guy. The battle begins. Kishi kishi meow meow, kishi kishi meow meow meow. Money and bones, You are too noisy to live. Okay. I guess Kashita, you're still here, right? Yeah, I think So the picks have interchanged their positions, which we did not anticipate though. okay. Viper going mid, Venge taking up the safe lane position, and Lycan going for the off lane as Alferno predicted. Hmm. So we have something of a combo switch here. I mean, let's see what happens. Yeah, I mean top lane we have this Vengeful with the Lich, and bot lane we have the carry Drow Ranger with Rubik's support. And I still feel that Drow Ranger has a really good game, although Lycan does runs into her. But again, if and she has a good saves around him, the Drow Ranger. So this is going to be an exciting one. Rice Corp has been pick of the team in this tournament. They've won both of their games, and if they win this one, they will top the group. And yeah, that is going to be. I agree to you. I agree with you to a point, but I have Mhm. a bit of a contradicting opinion here. Okay. The lanes look challenging for both the safe lanes, is what I feel. Because Dark Willow and Lycan together against a Drow in the Mhm. early lane phase might prove fatal to Drow, is what I am anticipating. I'm not really sure. If it turns out a different way, that would be nice. But yeah, Yeah, let's see. absolutely. I can totally agree with you. In the mid lane, Okay, restricting him from the farm. Early harassment. So it's our first pick as a Tinker in the entire series. Mhm. We haven't seen a Tinker yet. So yeah, hoping this would be a great evasive play. Yeah, let's hope for it. Let's hope for the best. Absolutely. Yeah.
The mid lane going for good for Yeah. Tinker as well. He's not getting pressured as much. Viper is just trying to get some farms here and there. Drow having an okayish lane, not doing too good. Lycan actually getting a good amount of CS in the laning phase itself. The safe lane has gone down. Yes, there is a They trade. have So emergency. Venge Yes. was able to get a kill on Underlord, and Yeah. the Underlord in turn killed the Vengeful Spirit, which is good for Vengeful Spirit. She gets to have the Yes. XP of the kill while the Underlord gets nothing. Nothing. But yeah, Tambam got getting pressured a bit in the safe lane. The Willow being with Lycan, the Lycan Wolves, they have a really good kill threat. One of them, if one of those, like these players separate from the other. Yes. So they have to play very cautiously, very, Very cautious. making sure, checking each other's position. And Rubik actually trying to kill the Dark Willow. Dark Willow is really low. She is just fall back. Drow trying to make I'm something going on for her. the Oh, kill. she is able to get a kill on Oh him. yeah, But that's a they great warned kill. you not to speak with Tam rangers. Girl just secures Dark Willow, who was playing very aggressive. Didn't notice that Drow has come up to him and can actually kill him. So he should have played a little bit more cautiously in that regard. Yeah. I think this issue is still not fixed, right? Yeah, you guys keep on carry on. I know the fix. I'll do it. Don't worry about it. Ah, perfect. Okay, Viper making a rotation over here, and we have a He is kill gonna on kill the Draw Ranger Drow. and the Rubik. Both of them Both are of them gonna are go going to go down. down. So it's a great rotation coming in from Viper side, while Tinker is still trying to get some farm up. Did he pick up any rune by any chance? I just didn't see any status on it. I have no clue actually. He may have had. Oh, actually, no. There goes the Invis rune picked up by or activated by Tinker now. Yeah, so no runes for Viper. Radiant's middle tower is under attack. And they're trying to scrape any sort of farm he can get from this lane. He is kind of getting pressured a bit as soon as he shows upwards. Same is happening to Drow. The only good lane they are currently having is the Tinker in the mid lane, who I believe is gonna go to jungle and get some more farm up, and who can be one of the devastating things to deal with in the mid game. Rubik, Lion, and then Tinker. They Yeah, can definitely. burst down any Dire's heroes, bottom be it tower the is under Lycan or attack. be it the Viper. It doesn't matter who it is in front of them. They can shred through him really easily. And you see, interesting thing, as Lycan as an offlane, I do like him very much. I actually love to play the hero itself. But Lycan as an offlane doesn't really go in the direction of making auras, right? And if you see, Rubik has magic damage, Lion has magic damage, Underlord has magic, Tinker has magic. The only physical they have is Drow Ranger, who is gonna do a lot of damage in the late game. But here I see Underlord getting jumped on. He just puts the pit and just walks away. Really easy for him to do. As I was saying, they majorly have magic. Oh, actually, now in the bottom lane, Drow Ranger getting on by the Lycan, and Lycan is The just rotation lasered. from He's Tinker is trying to blinded. He save Drow. can't hit Yeah, this. Radiant's middle So there a was a quick blind dog rotation. is not useful, it seems. Yeah. Yeah, this is gonna be the issue. Consistently, he has to make into magic immunity or maybe make a manta, trying to get rid of the laser, the debuff that he's getting from laser, the blinded one. So now they have to decide what to do because the magic damage is gonna consistently come in.
So they don't have a particular aura builder. So I'm not sure who, but it can be, and in theory it should be the Viper who goes a little bit of aura maybe. Probably he'll go for like something around the mage player who will allow him to sustain a little bit more, and who will allow him to reduce the magic damage to the opponents as well. And Lycan is getting Oh, eyed, Draw but going Lycan is doing a aggressive lot on of flank. damage with the wolves. Yeah. Oh, actually, no, Draw gets swapped. Too far. Radiant's middle The tower wolves are is still under chasing attack. him. He is most likely gonna go down. He is gonna go down. And on the other end, I don't think Lycan is chasing anyone anymore. He stopped Radiant's middle tower running is after under them. attack. Radiant's middle tower has fallen. I Dire's think our top tower is observer under attack. is a little bit busy, Radiant's so bottom tower is under attack. we are just gonna wait for him to fix some of the things. He's a gank online, and he There is is a gank dead. online, and he just goes down. And if you can hear me, go. You need to finish the match setup first. Yeah. I'm doing all those things. Don't worry about it. Yeah, because we have an overlay which is asking for us to have a match setup, so it's kind of covering the screen a little bit. Yeah, But I know. no worries, we are Yeah. still able to see some things. Radiant's bottom tower Just getting that done quickly. This is a Rice Cop versus Crimson Whale. We are almost there. There is a versus screen, so if we can get rid of it. Yeah. I think this should fix the issues Yes, for now. it has. I think Yeah. it has. The main issue has to be fixed. Is it fixed now? No, it has not. Okay, No, so no. there is a I think problem we with don't this. I still believe see the hollow cards, I guess. his yes, we can't see him. Maybe his team is not getting resolved or something. There is a certain issue with that. We'll have to look into it as to what is happening with his team URL. Yeah. Is it getting corrupted, or is it our system just throwing Because it we out? need to fix this because the guy holds a hollow card and obviously no one wants to see Would it be this possible for card. you to share the remote link to me so I can look into exactly what's happening? Yeah, as let me well? do that for you. Yeah, you can. Just give me a second. I will share it with you. And I will give the reins to you after that. Where is it? There you go. Now you can do the fixes. So production is going on, guys. So a bit of a misplay. So we are trying to fix it, and hopefully we will fix it pretty soon. In the meantime, we have a match going on, and we are almost at 11-minute mark. And yeah, take me through, guys. I'd like to bring you up to speed. So what has happened is they have ganked Drow and Lion continuously, and they have taken down the bot tower, the safe lane tower, and they have pushed Drow into the jungle now. So pretty much, I think there are 3 deaths to Drow, the safe lane. Not many kills, 2 of them. But yeah, let's see how she copes up with the farm. Absolutely. And but yeah, I mean both the cores from the side of Crimson Whale are at the top, which is Vengeful and the Lycan. So Drow not having that good of a laning stage, I feel, and yeah, she's going down again. Viper hunts her down and takes her down. So not a good time going on for this Drow Ranger. Raiden comes in to support and help the Drow, but I think yeah, they will take down, they won't be able to take down this driver. And what an ult comes in from that Dark Willow. That was too good. There, The I Lich mean, and Dark Willow, my absolutely. god, great ult. It was just out of the box. Great ult from the Dark Willow to take away the team, and then Viper was able to clean up the Underlord as well. And along with that, Lion also died. You know, they're trying to make a move on this Vengeful. Vengeful sees the TP come in from the Underlord and decides to move away. So, and here comes the first pause of the game.
And who do we have with us? We have Mr. Verlin joining us here in on the main stream. Verlin, welcome to the stream. Hello, hello. Hello. State my knowledge. Welcome, welcome. It has been a long time in the season 2. I think this is the first time you are jumping onto a match. Yeah. Yep. Busy, busy playing this time. We did have like a wonderful noon yesterday. Oh, that's Played good. played 2, won 1, lost 1. But yeah, Well, Tambam God's team looking like really strong yeah, I in mean, the group that we are playing. absolutely. And but after the drafting and everything was done, they were the weakest team of the lot, and they're coming out on the top. They're currently top of the group, and if they win this one, they will move straight into the quarterfinals. So this team, I think, the coordination within the team members have been on point, and the way Dambam has played in this tournament till now, the 2 games he has played, he's been outstanding. This game, he has to step up. He has been struggling. He has had a very tough time in the lane. He died 4 times to Lycan and to Viper. So yeah, he's onto his recovery mode. But again, a Yeah. timer I feel is on to the side of Crimson Vale, because if they give time to this draw to get back into the game, and they already have a Tinker to high ground defense, so it will be difficult for the side of Crimson Vale if they don't, make this game a high tempo one from their side. Yesterday the Dia team did not have the Noctis. Today they have him, and he plays the Lycan. Whew, that would have been a real mess if we got to play against him, I guess. It's a really annoying hero to deal when you have like suppose that cannot like wave clear or clear these wolves. Yep. It'll be like biting him in the ass. Absolutely, very annoying hero, runs up to your face. Even if you're ranged, Dro never likes playing against Lycan. To be honest, she hates playing against Yeah. Lycan. I think Tinker hates the worst. Like he cannot deal with his wolves at all. Like he needs his Aghanim. And if you know about that, oh my, Dro is getting caught up by the wolves Yes, the and usage of boots of travel coming in from the Viper and straight away going on to the Dro Ranger, getting it down. Yeah, so something which Dro yeah, Ranger should be never. easy to scout the Tinker as well. And Yeah. then since the Tinker doesn't have that AoE laser anymore, like it's on the level 25 talent, it will take too much time to get that. So even if he gets his Aghanim, he won't be able to kill the wolf all by himself. So that will be very annoying during the team fight, I believe. Yes, it will be. I mean, yes, the draft-wise, I would say Crimson Vale is on point, considering the fact that Radiant's you top know tower has fallen. the picks that came out from the side of Rise Corp has been very good. I mean, Tinker and Dro Ranger, they are one of the best when it comes to the high ground defense. But if the execution is on point from the side of Crimson Vale, I don't think so there will be any problems, and they can really snowball this game, and the game can go out of control very fast because they already have a 6k net worth advantage at 16 minutes in. So that shows that how dominant they were in their laning phase. Yeah, it is exactly. But I guess like Door Ranger needs see. Oh my God, this is the play Another that I was TP talking about. coming Like in from as soon as the the wolves comes in, the Lion aspect is not enough. The magical resistance too high for the wolf. But wait, they might actually will be able to kill the Viper here. What the heck is going on? But no, Drow still dies. Concentrated Raps giving all the time in the world for the Viper to kill that, make the kill on the Drow. Rubik goes down as well. GH goes behind, kills the Marlboro. Rubik as well. Oh, here comes the Tinker. Drops down the turret right on top of the Dark Willow, and that splash damage was just enough to squash that bug off. Oh, he blinks in? What the heck? Deathwing? I'm not really sure about this one. Emperor was just there with the follow-up damage. Yeah, Cops trying to be a little cheeky. He wanted to get that support kill. He saw the opportunity, but blinked in, and then Vengeful was there to support them out. So she's also building. I mean, I think she has
her Aghanim Scepter ready. So Vengeful is quite fat in this game. She's really super farmed at 17 minutes in with the Specialist Array and the Aghanim Scepter. So again, not easy going on the side of a Ice Corp at all. They need a lot of time. And these Wolves and this Viper duo, these are just killing this Drow Ranger. They're not letting her farm anywhere on the map. They're just hunting her left, right, and center. Now that you don't have the defense matrix on the Tinker anymore, like you have to use the turret's knockback to like reposition yourself sometime. So this Lich, if he gets shot plus blink, and if he tries to like hunt down the Tinker, he can kill it by himself. Oh wait, nice combo, wombo, and even Tinker, he just no respawn. Goes down again. G Hatch plus the Deadwing. They're making sure that they all will die, I guess, but Rubik got behind, I guess. Do they have detection? Sentry's one dropped on, has a blink dagger, GH. You saw my game yesterday, so GH is going the same build as I went for. Well, I think he's following the best. But yeah, I mean, a combo there from the Lich ult coming in, and Tinker has so less room to move here and there and dies. He tried to go on the Viper. Viper is a very tough kill right now, and they don't have that much damage to kill this Viper. They need this Drow to hit her timings, and then only they can, think of going on that Viper. And look at this Observer ward. What do you say of this? How aggressive is this ward? Catching all the moment, how the carry is moving from the triangle to the side camp. So, yeah, I mean, this ward is for the really past good. 19 minutes, they have subjugated Drow and they have not let her farm anywhere in the entire map. So yeah, aggressive ward coming in and they're just jumping onto Drow, whatever it takes, and the rest follow. That's it. They have not let anyone farm for that matter, let alone Drow. I mean, all three of the heroes wants to farm anyway, Tinker, Underlord, Drow Ranger. So if you always like keep like something like this deep ward, oh my god, GS trying to make a solo play in here, Thumbum God gets caught up by the curse card, but where is the follow-up? Okay. I think Viper tried to TP, but then he cancelled the TP, or maybe the creep died. Anyway, Thumbum God will live another day. Oh wait, goes in again, GH doesn't want to leave this opportunity, but it seems Emperor is also there. Glimmer Cap on top of Drow for a while, terrorize, but GH will lose his life, but is this enough? Yes, Drow Ranger plus the Rubik goes down. Analot came to help his teammate, but he goes down as well. He had the Aghanim, but didn't look like he will live up to see another day. All the Dire team was on the triangle, and with the 4-man wipe, Tinker won't be able to defend, I guess, because Lycan's damage is too much. The tier 2 tower, just like that in the blink of an eye, will get melted down by all this damage. And the game is going out of control for the side of Ice Corp. 12k network advantage already for Crimson Veil. So they are now starting to snowball this game, moving into 21-minute mark. They know their timings. They want to really pressure them in and out. They know they don't want to give any breathing space to this Drow Ranger and to this Tinker. So they really want that, they just keep on running into them, taking towers, because they're not dependent on their ultis, to be honest. They're dependent on the pushes that they are going to do with the help of this Lycan and the and here goes the Vengeful yet again on the Tinker. 3 hits is all it took to kill a core. Vengeful Spirit is so strong. Lion Rubik wasn't able to do much in there. Oh, there comes the wolf. There comes the Lycan's pets, but they just have to run off, man. They cannot do anything about this. Yeah, I mean, supports are having a really tough time right now. This Lion and the Rubik, they really can't go roam here and there very easily, because if the Lycan will see them, they will charge on them, and they don't have that clear to kill those wolves quickly. So yes, I mean, a tough game on the side of Ice Corp, but we have seen massive comebacks in this tournament in just these 2 days. So, I mean, even if my previous game, which I was casting, Phantom Division, made a 20k net worth swing and made the comeback happen. So, anything can happen. It just comes down to the execution and how well you understand your item timings. And right now, Ice Corp really needs to avoid taking fights, because their Drow is still 1.2k away from her Aghanims, and even after that she would need one more item
item, at least a Hurricane, just to sustain or move here and there in the team fights. And if you look at the Tinker, he's also building into that Aghanim Scepter, which is again 2k away for him. So Ice Corp really need to slow down the game. They need some breathing room. They need some time for their cores to get some items. On the other side, I think Underlord would have to do the heavy lifting of defending the high ground with himself, which is obviously not going to be that easy for him. Dire are scanning. But see, they are hunting the Tinker. Okay, the Tinker reads the movement and goes back into the base, safe and sound. But look at this draw. Look where she has to farm just to stay away from those Lycan wolves. This has been a really tough time, tough game for this Drow Ranger. Tumbum God is really, extracting farm from anywhere on the map. He is trying desperately to get towards that Aghanim Scepter, because I think post that he would be able to contribute towards the high ground defense. I mean, it's a similar thing that we have done in our last game, which we lost. Like, we took like 3 farmers into the game, and then we weren't able to go on top of enemy at all. So they easily controlled our map, and even without any fights, they were able to like get a lot of net worth out of us, simply like shrinking the map, and we weren't able to do much. Similar thing happening for this Radiant team here. Door Ranger doesn't know where to farm. He was farming in his enemy's jungle. And he was unable to go to the triangle because Tinker has been occupying it as well. And Underlord, yeah, he usually takes one more lane because he's got that ult right for the global presence. But for now, they're not able to look for any kills at all. Ruvik and Lion they don't know what to do. I think Thumbum's call be like, let me finish this Aghanim Scepter, guys, and then I'll farm more. Yes. I think that should be the call, I guess. Because Absolutely. Aghanim Scepter is basically like a farming item as well for the draw. It doesn't necessarily like kill people down. Doesn't give much agility. Yeah. So it's a farming item and helps him with the high ground defense a bit with the arrows bouncing here and there. But again, both the supports, they are just locked up into the base. They know whenever they go out, it would be tough for them to survive with the Lycan wolves coming from everywhere on the map. And I think the they, Dire team have figured out where Draw is going in, and yeah, sorry to they, cut you off. I think there's gonna be a chaotic matchup right now. yeah, I mean, they did Yeah, figure it out. They did went top to hunt down the Drow. They thought of it that, yeah, Drow is farming top. But Drow read the movement and got back again. But look at those the wolves. They're coming back up again. And, yeah, Drow, she can't do much of these wolves, really. She can't kill them. It's only lucky that Viper did not decided to TP this time on those wolves and kill the Drow straight away. So, what would you suggest right now for this draw to do? Should we consider her going for a Hurricane, or is the Manta style the right choice for now? actually she needs a lot of item. But whenever you play against a Vengeful Spirit as a core, and since this Venge itself is a core, like you cannot like if you try to right click him, he will just try to swap you immediately in the team fight. So it's better to buy a Lincoln instead. And Lincoln these days does have that ultimate orb, so it will give a little bit of more stats as well. So as a range, any range core, they cannot play against Vengeful Spirit is what I'm trying to say. You really need that Lincoln if you want to like man fight that Venge. And he's already too fat. Absolutely agreed. But yeah, this Vengeful is also getting bigger and bigger. Look at that. She has the Manta, and she has the Manta as well at 26 minutes. She's the top of the net worth, super farmed with 17.7k net worth, followed by the Lycan with 14k, and then we have Viper at 13k. So all three cores on the side of Crimson Veil are at the top, and then comes the Tinker and the Drow. So Tinker has the gold for his Aghanim Scepter, so and I feel he should get it quickly, because you never know when the high ground will be. From the side of Crimson Veil, they might start pushing the high ground soon. So yeah, Tinker needs to get the Aghanim Scepter quickly. And as I said, here goes the Viper, starts hitting the tower. And yeah, but I don't think Viper is like the best hero to do this push, but he has the Aegis, so he wants to. I think he's gonna spare, right? So he has the regen rune as well.
Legion Rune, and he was just, being a shield for his Vengeful. As soon as all the spells got onto the Viper, Vengeful start hitting the tower, and look at the HP. It's down to 600 already. So yeah, a tactical move from the Viper, understanding that he has to be that shield for her Vengeful Spirit. And Vengeful has the Hydra's breath as well, so Vengeful is super fat right now. It would be really difficult to man fight this hero, because if she gets to hit freely, she will rip through these guys, especially these supports. Both of these supports might die in only 2 or 3 hits. That's exactly what I don't understand about this hero at all. Like literally, Vengeance Aura. Once you max it out, you'll have like what, like 50 plus base damage. Okay. Anyway, like when he saw the Tinker, wanted to swap that guy out, but wasn't able. He went back into the tree line. Scopes. Uh, somehow managed to survive for now. But do they want to push more? They don't have ages though. They're just shrinking the map. Look at all those heroes are in the base, and on the side of Crimson Veil, they're just farming the map out. Farming everything on the map right now. And the whole side of Rice Corp is in the base. They are just shrinking the map for them. They're not letting them go outside. They're not letting them farm anywhere on the map. Another set of spells used. No worries, says Vengeful. Keeps on hitting, and at the same time, you see. Oh, like, and he God. took that tower by himself at the bottom. What is this rat shenanigans? I cannot. Oh my god. This is a three-way push, and even for us as casters, it's difficult to really keep a tab on all these 3 lanes. They're pushing all 3 lanes at the same time. This is so difficult for a Rice Corp. They can't take a fight. They can't do much. Okay, they decided to go on the Yeah, but cycle. Noctis got finger has been dropped on us. But it comes a spear! GH! Oh my god, Noctis. Wait, he's still dead? Oh my god. Gops. He just blinked in for this though. Yeah, the GH had the Yule, it seems. Making sure to kill this guy. The Lycan did not have ult. Even if you kill him, it's fine for him. I guess it's gonna spawn in the next 40 seconds. But Tinker bought back, coming back into the fight. And died back. And Tinker dies back to this. Tinker died back. Where the heck that happened? Anyway, I guess the bench ate him for snacks. He is dead for 70 seconds. And they already got the top racks. Now the middle axe is gonna go down as well. Emperor doesn't care about dying. Just gonna walk down bottom. Just release some creeps in the process and then get the side of racks, I guess. But they don't have. Okay, yeah. They just snowballed the heck out of this game. 25k. They don't know what to do. At 30 minutes. They don't have anything to do. They don't have the damage to kill anyone. They don't have. They don't have the levels, to be honest, and the items to really sustain this push. And there you go, just like that. We have Mega Creeps. Not even without any big team fight. They have Mega Creeps. They have a 26k net worth lead at 13 minutes in. This is death by 1,000 cuts on the side of Rice Corp now. They can't do much. They have to just stay here in the base, keep hitting the Mega Creeps. They won't get much farm now. I don't think so. They should continue this game. This is a torturous game only now. There's nothing left in this game for them, honestly. You have this global presence, 2 heroes, Tinker and a lot. But then who is gonna go in to make use of that global presence? Someone has to go in, right? Is that gonna be Lion? Is that gonna be Rubik or a Silver Edge Draw Ranger? He doesn't even have the idea to go for Silver through the game, right? He was farming the entire game. So the Tinker and Underlord wasn't able to be used efficiently throughout this game because of that. So could have been if the after show right there. And look at that, a butterfly is on the way for this Vengeful Spirit soon. So yeah, I've been seeing a lot of Dawnbreaker and a lot and finally this Noctis picked a Lycan. Yeah, Dawnbreaker has been the pick of this tournament. We have seen Dawnbreaker at the 80% of our games, so people have been picking Dawnbreaker left, right, and center. So that's going on. Dawnbreaker, because I think Dawnbreaker brings a lot of heal and a lot of lockdown with her ult. So if you have one good stun and Dawnbreaker can follow it up with BKB PS6 stun, it really gives a really great team fight
for that particular team. But right now, I like this from the side of Crimsonville. They are very doing it step by step. They are not throwing the game away. They are going one objective after another. Very disciplined. Takes the ages. You have to kill this Venge 3 times now. Ah, how are you going to do it? You were not able to kill her once. Now you have to kill her 3 times. Yeah, I think once he finishes the swift blink, he will just blink in and instantly kill one guy out. Yeah, and I thought it was a BKB, but no, it is a Swift Blink. Okay, I think she went to Yeah, the side shop, but a courier bought I the mean, Eagle Song she could have first. still sold that, send the courier away, and then buy that from here. But yeah, it's fine. There's no He doesn't rush. have to be. You don't. Yeah, no. Yeah. They have the time in the world. They're leading the game quite comfortably. And look at that. Now they're shrinking their base. They were shrinking the map before. Now they've shrink the base. They're behind the tier 4s. Oh, he sees the tinker. He sees the tinker. He blinks it. Oh my god, that is very worst. I don't like why you 4 would hits. like Yeah. blink in when it's like mega creeps. There's no wards in there. Nice Four smoke like hits coming to from the the tire. tinker. 4 hits. Only Immediately 4 hits. 4v5. I don't think so. We're going to see another team fight. We're just going to see Throne getting down. There's not going to be. Yeah, okay, that's a good kill. It got the kill on this Yeah. Dark Willow. They stole the ult, And but Rubik that's. instant swap into 2 hits goes down. Yeah, as I And yeah, said, there was not going to be any team fight, and we have that this game is done. Crimson Whale takes away this one. It was a very easy one for them, and a quick fair of affairs. We will be moving on to a quick break, a much needed break for me, to be honest. I was not able to take any breaks out of it, so yeah. So we will be taking a break quickly, and we will be back for the next game, which is going to be on the stream, which will be Frost Rain versus Arcane Order. So we'll see you guys after a quick break. Thank you so much, Warlin, for joining us, and I hope, I think next one is your game. Yeah, you will be playing against Vanguard. So all the very best, and we'll see. I yeah. hope we see you in the quarterfinals straight away. You don't have to go through the LCQs today. Let's hope for the best and you come out winning. So yeah. Hopefully. Okay. Thank you so much, guys. We'll be back after a quick short break. Thank you so much. अभी एक बार देखो बीच में कहीं Yeah, पे yeah. It's working fine. Yeah. Standard player. आ रहे हैं
10 seconds remaining. Yes, we are back, guys, 5 with the game number seconds 3 of the remaining. day, which is between Arcane Order and Frost Rain, a new team in the BPCL Season 2. Frost Rain, and with them Radiant we have team Arcane ban. Order. So this is the game 3, and this time I have with me Mr. Kayan 10 Addicts, seconds remaining. and who do we have with you? Who do we have 5 seconds other than you, remaining. Mr. Kayan? We have Mr. Mia MC, the special caster, is here with us. Dire Welcome to the team stream, ban. guys. दोस्तों आपका स्वागत है इस स्ट्रीम पे। इंग्लिश में ये भाई बात Dire करेंगे, team लेकिन हम हिंदी में ban. कर लेंगे, कोई बात नहीं जी है। आप बिल्कुल, आपका साथ हम हिंदी में ही देंगे। जी जब नेगी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जब 10 नेगी जी आ seconds जाते हैं remaining. तो थोड़ी अंग्रेजी निकालनी पड़ती है, क्योंकि उनको थोड़ा शौक ज्यादा है, 5 लेकिन seconds remaining. अब जुगलबंदी बिठाएंगे हम थोड़ी जी हिंदी शायद वो कास्टिंग प्रैक्टिस के करना साथ। चाह रहे हैं, आइल्स वाइल्स देने वाले हैं मुझे लग रहा है, और Radiant team कहीं ban. बाहर देश में अपनी गुट्ठी जमाएंगे और जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करेंगे फिर, ऐसा मुझे इनका मानना लगता है। 10 seconds remaining. बिल्कुल, आपका मानना गलत 5 नहीं होगा। seconds remaining. जी 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 जी। और यहाँ पे टीम के बारे में एक बार बात करी जाए, आप बताएं कि आपको क्या उम्मीदें हैं इन टीमों Dire से। team ban. देखिए, उम्मीद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टैंडिंग्स की अगर मैं बात करूं इन दोनों टीम्स की, तो इस समय फ्रॉस्ट ट्रेन 1-1 अपना आखिरी मैच 10 खेल रही हैं इस seconds ग्रुप का, और remaining. आर्कन ऑर्डर इस टाइम Dire 0-2 पे team हैं, ban. एक भी गेम नहीं जीत पाई हैं। तो अगर यहाँ पे आर्कन ऑर्डर एक अपसेट और या फिर विन पुल ऑफ करती हैं, तो हमारे पास काफी क्लियर 10 स्टैंडिंग आ जाएंगी seconds ग्रुप ए remaining. की, जिसमें फैंटम डिवीजन टॉप करेंगे और वॉरपाथ सेकंड पे रहेंगी, 5 यानी कि seconds आपकी टीम। remaining. लेकिन अगर फ्रॉस्ट ट्रेन यहाँ पे गेम जीत जाती है, तो ये एक 3 वे टाई हो जाता है, जहां पे फ्रॉस्ट ट्रेन और वॉरपाथ और फैंटम डिवीजन तीनों ही 2-1 पे होंगे। तो फिर आपका हेड टू हेड मैचअप कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी तकलीफें बढ़ाएगा देखिए एडमिन्स के लिए। और मुझे यही लग रहा है कि आप कोशिश यही करेंगे कि आर्केन ऑर्डर ये मैच हारे और आप लोगों को मौका दें एक 3 वे टाई ब्रेकर में। सिचुएशन ये है इस समय। और ये हम देखिए, तो चाहेंगे कि हाँ हमारे घनिष्ठ मित्र जीत जाएं, पर हारेंगे तो भी अच्छा ही है, कि एडमिन के लिए आसानी होगी। जी बिल्कुल, 10 देखिए seconds हारेंगे तो remaining. बहुत ही आसानी हो जाएगी हमारे लिए, Radiant लेकिन team बात आपकी ban. सही है। बट यहाँ पे देखिए, फ्रॉस्ट ट्रेन ने सबसे पहले इन्वोकर पिक करा, Dire फर्स्ट पिक team ban. इन्वोकर। इन्वोकर या जी हाँ, हमारे सामने भी यही किया था इन्होंने, होप के लिए उठाया था इन्वोकर, जहां हमारे एम्बर की बहुत कुटाई की थी मिस्टर होप ने। जी। तो दर्द मतलब काफी भूला नहीं हूँ, अभी बहुत लेकिन ताज़ा उसके ताज़ा ही है। उसके बाद भी आप कमबैक कर पाए उस गेम में, और उस गेम को टर्न अराउंड करा, तो काफी बड़ी 10 बात है। seconds remaining. जी वो लीडरशिप थोड़ी Dire मजबूत team है हमारे ban. पास, इसलिए हो जाता है। तो आपकी टीम में ऐसे लीडरशिप कौन संभाल रहा है, कौन है आपकी टीम में जो सब चीजें हैंडल करता है? देखिए हमारे RJX हैं कप्तान साहब, जो कि हाईएस्ट है हमारे इस टूर्नामेंट के, आई थिंक वही संभालते हैं थोड़ी थोड़ी, पर बीच बीच में वो भी 10 चुप हो जाते seconds हैं जब remaining. थोड़ा गेम ऊंच नीच हो जाता है तो। 5 और seconds वैसे तो remaining. टीम आज का गेम भी बढ़िया ही था, पर हार गए सेट। देखिए, उस गेम में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए, मैं बिल्कुल जानना, बिकॉज मैं वो उस गेम को ही कास्ट कर रहा था, तो मैं जानना चाहता था कि टाई बैक बहुत हो गए गलत। जी हाँ, और वो पॉज में भी थोड़ा माइंड फक हो गया था, और वो लाइक बहुत टॉक्सिक चैटें भी चल रही थी, आपस में जानते ही थे ये जी लोग हाँ, मैं तो। उसी चीज के ऊपर आना चाहूंगा। देखिए, उस पर हम आएंगे कि वो चैट्स और जो जो भी बैंटर था वो फ्रेंडली था या नहीं था, जो भी था उस पर आएंगे हम। लेकिन जानना चाहूंगा पहले कि इतना 20 के नेटवर्क एडवांटेज था देखिए आपके पास, और एक्स जिस तरह से आप खेल रहे थे उस गेम में, आपने जो गेम को टर्न अराउंड किया, वो बहुत ही सहारे नहीं था। मतलब हम कास्टर्स यहाँ पे एकदम तारीफ करे बिना रह नहीं पा रहे थे कि जिस तरह से आपकी टीम एग्जीक्यूट करी थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या स्विच आया 40 मिनट के बाद कि आपकी टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, डॉन ब्रेकर अपनी अल्टी लैंड नहीं कर पा रही, आपकी कॉल्स लैंड नहीं हो पा रही थी? हुआ क्या ऐसा कि बायबैक्स के बाद एकदम से डायबैक्स हुए और गेम 5 मिनट के अंदर ही पूरा टर्न अराउंड हुआ और खत्म हो गया? क्योंकि इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। कॉल तो मिस कॉल हो गई थी, क्योंकि
छोटे पड़ गए थे कॉल अंदर जाके, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। जब आप एक बार जीतने लग जाते हैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है टीम में, फिर जी सब अपने मन की करने लग जाते हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। दो साइड मेगा करने के बाद लॉन्डो में थोड़ा सा, आई थिंक एक साइड ही किया था, दो दो साइड साइड नहीं मेगा कर चुके थे आप कर 20K चुके थे। नेटवर्थ एडवांटेज पे थे, आपके पास जो लीड थी वो बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद आपने गिव अप करी और आप गेम आपका खत्म हुआ, तो वो काफी आश्चर्यचकित, मतलब बहुत तगड़ा कमबैक था देखिए फैंटम डिवीजन। और आई थिंक जिस तरह का आपका बैंटर चल रहा था, अब उस पे आते हैं हम, कि जो बैंटर आपका चल रहा था उस गेम में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो फ्रेंडली था, या वो थोड़ा सा ओवर द लाइन हो गया, या नहीं, कैसा? फ्रेंडली तो नहीं था। मेन तो देखिए जब बॉस के बारे में बात चल रही थी जी एंडिंग में, हाँ। तो शायद जो वो थे ओरेकल, जी 10 seconds remaining. उनकी वजह से शायद पॉज चल रहा था। बट फौजी के लिए जो एक लाइन लिख दी थी, वो जो कि कॉमेडी में लिखी गई थी, कि जब बोला था कि टाइम डायर अपना देना चाहे तो, हाँ जी। बट डायर ने लिखा था कि फौजी के लिए लगेगा, जो कि एक जोक वाला था कि फौजी लेट आया था उसके लिए लगेगा अगली बार भी, ऐसा वैसा जो भी है। ओके। तो उसके चक्कर में उसका रिप्लाई बहना की तरफ से आया, शायद टिल्ट हो गया या पता नहीं क्या, कि जी तुम्हारी हाँ। भैंस की टांग हमने इतना इंतजार किया, ये ऐसा कैसा कर रहे हो, ये है वो, 10 ये वो। seconds remaining. जी 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 फिर जी। जानता तो सिर्फ फौजी था उन सबको, तो वो बोल रहा था 5 ऐसा ये seconds वो। remaining. बट हमारे कप्तान का थोड़ा ठेस पहुंचा, उन्होंने बोला ये कैसे बात कर सकते हैं, इनकी भैंस की जी टांग हाँ, अनपॉज नहीं करो। मैं चाहूँगा कि वार्निंग बिल्कुल दी गई है, और वार्निंग अभी दी जाएगी। अभी थोड़ा एडमिन्स बिजी हैं, बट एडमिन्स ने नोट डाउन किया जो भी बातचीत उस मैच के दौरान हुई, क्या सही था क्या गलत था। वो अब आपकी टीम अगर कंप्लेन वापस लेना चाहेगी तो वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन हमारे पास रजिस्टर हो चुकी है, तो जी हम जी, वो तो एक्शन अब जरूर लेंगे कप्तान पे उसके छोड़ ऊपर। दिया, अपन को हाँ इतना कोई जी। मतलब पड़ता नहीं है। टेस्ट टॉक्स आप तो जानती ही है। जी हाँ, नहीं ये ट्रैश टॉक तो एक पार्ट होता है डोटा का, लेकिन एक डेकोरम भी मेंटेन करना जरूरी है। आप एक हाँ, टूर्नामेंट खेल रहे टूर्नामेंट हैं, खेल आप रहे हैं, बहुत हाँ सारे यस। अननोन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो सब जानना 10 बहुत जरूरी है seconds कि आप remaining. कौन क्या कर रहा है, कौन किसको जानता नहीं जानता। तो आपको थोड़ा कामनेस 5 और seconds थोड़ा सा remaining. चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। Radiant's बट team ban. नेवरदलेस सही, देखिए जो चलिए हुआ, वैसे अब इस गेम पे हम वापस आते जो हैं जा चुका है ड्राफ्ट। इस गेम पे आते हैं, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब जो हो गया सो हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पे एसएफ, टाइड हंटर, टस्क, जी हाँ, देखिए आर्किनॉट की तरफ से टस्क 10 विच डॉक्टर seconds का remaining. सपोर्ट डुओ आया है, और ऑफलेन में टाइडेंटर को खिलाएंगे, और पक मिड लेनर आई है। पक 5 काफी स्ट्रांग seconds मिड लेनर remaining. साबित होती हैं, और जवाब फ्रॉस्ट रेन का आया है। देखिए इन्वोकर फर्स्ट पिक लिया था। डिस्ट्रप्टर जी जो हाँ, है, डिस्ट्रप्टर आई है, थिंक वो डिस्ट्रप्टर है यहाँ पे। पक्को रोकता है। बिल्कुल रोकता है, जी हाँ। लेकिन पक देखिए फेस शिफ्ट के Radiant शिफ्ट team अगर कर ban. ले तो ब्लिंक बिल्कुल। आउट कर तो सकती है, यस। वही वही वाली चीज है। देखिए कैच अगर मैं बोलूँ तो फ्रॉस्टेन के पास ऐसा नहीं है पक के लिए कि वो पक को बहुत आराम से कैच कर लें इस गेम में, क्योंकि देखो शैडो फेंट आपका बिल्कुल टाइट के अगेंस्ट बहुत आराम से लेन करेंगे, बहुत अच्छी लेन करेंगे। अगर उनके साथ डिस्ट्रप्टर आते हैं या फिर क्लॉक कोई भी आता है, टाइट के लिए लेन बहुत 10 मुश्किल होने वाली है। seconds remaining. क्योंकि देखिए विच डॉक्टर तो अपने सपोर्ट के अपने कैरी के साथ ही जाएंगे, वो बॉटम 5 ऑफ seconds लेन को remaining. सिक्योर करने नहीं आएंगे। टस्क हालांकि साथ देंगे टाइड हंटर का, लेकिन हाँ लेन काफी मुश्किल होने वाली है टाइड हंटर के लिए। अब यहाँ हो पे भी सकता देखिए। है कि अगर रेडिएंट अगर रेंज कैरी उठाता है तो टस्क के साथ रेंज कैरी इज गुड जी कंपेयर्ड हाँ, टू ऑफलाइन टाइड हंटर। अगर ऐसा कुछ उन्होंने डिसीजन लिया तो बिल्कुल सही रहेगा वो चीज, क्योंकि देखिए विच डॉक्टर अगर आते हैं टाइड के साथ तो टाइड थोड़ा लेन कर पाएंगे, वरना टाइड के लिए लेन Bharat बहुत team ही ज्यादा ban. मुश्किल करना हो बहुत जाएगी। मुश्किल हो जाएगा, यस। जी हाँ, देखिए ऑफ लेन बैन आया है नाइट स्टॉकर और अंडरलॉर्ड, और नाइट स्टॉकर बैन बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए पक को बहुत कंट्रोल Radiant's करता है नाइट team स्टॉकर। ban. स्पेक्टर बहुत ही और परफेक्ट जगरनॉट काउंटर है बैन। उसका। जी हाँ, स्पेक्टर और जगरनॉट बैन और आया है यहाँ पे। मिलन के हीरोज को टारगेट किया गया है, और यहाँ आई थिंक देखिए मिलन का ही पिक मिलन बच तो रहा है इस साइड, ये दो दोनों हीरो। हीरो ही नहीं खेलते हैं, बताना Red चाहूंगा team आपको। pick. मिलन ना जगरनॉट खेलते हैं ना ही स्पेक्टर खेलते हैं, तो ये लूना पिक लिया है आर्केन ऑर्डर ने। काफी अच्छा है काफी टस्क के अच्छा पिक साथ। है, जी हाँ, टस के साथ अच्छा है। और लूना बताना चाहूंगा कि लूना काफी मैच करने की कोशिश करती है शैडो फिन का फार्म, तो लूना भी उतना ही जल्दी 10 खड़ी seconds होती है जितना remaining. जल्दी आप शैडो फिन ऐसा को होता है, देखेंगे। यस जी यस। हाँ, लेकिन 5 काफी फास्ट है। seconds ये जो remaining. हीरो पिक बैन हुए हैं यहाँ पे देखिए अंडरलॉर्ड और अरसा और ब्रिसलबैक, बताना चाहूंगा जी हाँ बिल्कुल इंडियन जीसस के लिए रिस्पेक्ट बैन इसके किया गया यस है। रिस्पेक्ट बैन बाकी हुए हैं उनके लिए सारे, और और उन्होंने अपना डॉन ब्रेकर उठाया देखिए है, यही उनके पास बचा बिल्कुल था ऑफ लेन में। ऑफ लेन में लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो चेंज है, फरहान जाएंगे ऑफ लेन हम्म, डॉन ब्रेकर लेकर, और मिड और शैडो फिन सेफ लेन लेके जाएंगे अपने इंडियन जीसस। सो थोड़ा सा मैचअप चेंज किया गया है। और डॉन ब्रेकर जैसा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, डॉन ब्रेकर काफी
ज़्यादा पिक हुआ है इस टूर्नामेंट में और सब लोग के लिए कंफर्ट पिक रहा है कि ऑफलाइन में जिस तरह से इवन जितनी भी टीम्स रही हैं हर तीसरे मैच में दूसरे मैच में डॉन ब्रेकर देखने को मिला है, तो डॉन ब्रेकर काफ़ी कंटेस्टेड ऑफलाइनर रहा है इस टूर्नामेंट में अभी तक। बाकी देखेंगे क्योंकि ये सब के बाद एक हफ्ते का पूरा ब्रेक है टीम्स के पास, टीम्स देखेंगी, ड्राफ्ट देखेंगे, हो सकता है कि प्लेऑफ वीक में हमें डॉन ब्रेकर देखने को ही ना मिले। तो इसी के साथ ड्राफ्ट रेडी है, सिंपल खेलेंगे पक पे और मीथ विल बी गोइंग ऑन टस्क, उसके बाद डेथ क्लच लूना खेलते हुए दिखाई देंगे, जियानी विच डॉक्टर जाए खेलेंगे, टाइड हंटर होप इनवोकर पे अपना जलवा दिखाएंगे, शट डाउन खेलेंगे, डॉन ब्रेकर वैनिश्ड डिस्ट्रप्टर पे खेलेंगे और आपका शैंक्स अपना लेजेंडरी क्लॉकवर्क दिखाएंगे और उसी के साथ इंडियन जीसस दिखाएंगे शैडो फील्ड। तो देखने वाली बात ये होगी कि बस हाँ आप कंटिन्यू करें, आप खत्म करें फिर हम शुरू करते हैं। देखने वाली बात यही होगी कि शैंक्स और मिलिन का जो डुओ है काफी टाइम बाद वापस मिलने वाला है, तो कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा खेलेगा, उसको देखने में मजा बहुत आएगा। इस स्ट्रीम पे पहला मैच हो रहा है यहाँ पे फ्रॉस्ट ट्रेन का, तो इस मैच को देखने में मजा आएगा। और मेरे साथ जुड़े मैंने इन हैं दोनों मिया टीमों के अगेंस्ट खेला है जी। और ये शायद बोला गया था कि सारे एक कैफे वाले लौंडे हैं आर्केन ऑर्डर के, जी पांचों साथ में खेलने वाले हैं, बिल्कुल बट वो गेम में ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जी। जाये ने जो ये टीम बनाई है वो काफी उनका लक मैं बोलूंगा ऐसा साबित हुआ ड्राफ्ट के फेज में कि उन्होंने उन्हीं को पिक किया जिनको वो पिक करना चाहते। सारे गुजराती भाई हैं ये, तो मैं चाहूंगा पांचों के पांचों प्लेयर गुजराती हैं यहाँ पे, तो वो एक फायदा हुआ है उनको। तो एक कोऑर्डिनेशन जैसा आप बता रहे हैं कि वो ऐसा आपको दिखा नहीं, हो सकता हाँ वो है वो दिखा नहीं गेम था। में थोड़ा इधर उधर हुआ हो, बट हो सकता है कि ये ज्यादा बेटर हो आगे बढ़ के। लेकिन अभी देखने में मजा यही आएगा कि इस गेम में क्या होता है, क्या हम एक 3 वे टाई देखेंगे ग्रुप ए में, या फिर हम देखेंगे कि वॉरपाथ जो लीड कर रही थी उस ग्रुप को सेकंड नंबर पे खत्म करेगी फैंटम डिवीजन के पीछे। देखने वाली बात होगी ये। बिल्कुल, और जैसे कि ये डिस्ट्रप्टर मैनेज ने उठाया है, इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था डिस्ट्रप्टर से लास्ट गेम जो हमारे अगेंस्ट मतलब जब भी था कल। इन्वोकर ने भी लाइक दो हीरो तो उनको उनके कंफर्ट मिले हैं। क्लॉक रैक भी जी हमारा शंकर कंफर्ट पिक ही है, एक तरीके से काफी खेलते हैं और काफी अच्छा खेलते हैं। ये मैं पूरी समझना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, पॉज अनपॉज का गेम जो चल रहा है इस समय। पक ने पॉज किया है, पहले टाइड नहीं किया था। आई थिंक रेडिएंट का ही पॉज चल रहा है, तो वी कैन कंटिन्यू ऑन दैट वन। यहाँ देखने वाली बात यही है कि आगे कैसे बढ़ते हैं इस गेम में और क्या होता है। और यहाँ पे आपको शायद एड्रेस किया जा रहा है गेम के अंदर। देखिए इस टूर्नामेंट की यही खासियत है कि एडमिन जो सबसे ज्यादा चाहते हैं खेलना वो खेल नहीं पा रहे हैं टूर्नामेंट। काफी काफी हो जाता है। कल मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, 2-3 गेम लगातार कास्ट करके कैसा हो जाता होगा। बहुत ही जी मुश्किल हाँ टास्क है। देखिए बिल्कुल। और अभी तो खेलना अलग है और एक ये बैठ के बस बिल्कुल, मुंह लेकिन देखिए चलाते एडमिन रहना टीम का ये हिस्सा और फाउंडर्स टीम का हिस्सा होने का बनने की वो वजह से यस यही नुकसान है कि ये टूर्नामेंट हम जितना भी ऑर्गेनाइज कराएं, जितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम इस मैच के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोडक्शन वैल्यू के बारे में। प्रोडक्शन टीम ने काफी इस टाइम इन्वेस्ट किया है, इस बार सीजन 2 में नई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं, कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसको इन गेम दिखाना। आपको कैसा लगा ये सब चीजें? काफी बेहतरीन, मतलब ऐसी चीज बहुत देखी नहीं है बहुत टाइम से कहीं। लाइक छोटे टूर्नामेंट जो होते रहते हैं वो नॉर्मली होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बट इसमें एक आपका रिटेनिंग फैक्टर्स है। लोग आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा खेलने में, जी अपने जी पर्सनल कार्ड्स वगैरह होगा, स्टेट्स दिखते हैं, जी बहुत ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अपन और आगे भी कुछ एडिशन हो ही सकते हैं, काफ़ी बिल्कुल। अपन इंफॉर्मेशन 13 डाल सकते seconds हैं to टीम्स battle. के आफ्टर मैच एनालिसिस, व्हाट दे डिड रॉन्ग एंड
पे देखिए वो भी स्टेप बाय एडवांटेज स्टेप चलेंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है कि मैच हमारे बैक फॉर्मेट टू तो बैक होते काफी हैं तो उसी वजह से इतना समय मिल नहीं पाता। लेकिन देखिए कोशिशें हैं, सीजन 2 में हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, आगे भी करेंगे। और देखिए मिड लेन पे वार्ड हटा दी गई है, यहाँ पे पक की वार्ड को जल्दी से जल्दी डिवॉर्ड किया गया, तो एक प्लस पॉइंट मिला। और आई थिंक यहाँ पे स्प्लिट होंगी बाउंड्री रून्स 2-2, कोई फाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी, दोनों टीम चूज कर रही हैं दोनों फाइट इंडिया ना लेके एक लेने तरफ का। जी जाएगी। हाँ, आप क्या जानते हैं किसी को इनमें से खेलते हुए रेडियन टीम से? देखिए रेडियन टीम में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबको पहली बार ही देखता हूँ इस टूर्नामेंट में, मोस्टली लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पे कास्ट करता हूँ तो वो एनोनिमस ही रहता है, अच्छा रहता है। और दर्शकों के लिए मैं अभी आप लोग को इनकी रैंक्स भी एक बार दिखा देता हूँ, ताकि दर्शक लोग देख पाएँ कौन किस रैंक पे है। और आपको भी दिख पाएगा इसमें, तो काफ़ी देखिए यही खासियत है ना, देखिए हर रैंक का एक प्लेयर आपको दिख रहा है टीम में। डिवाइन से लेके मॉर्टल तक प्लेयर्स हैं, मॉर्टल से लेके क्रूसेडर तक प्लेयर्स भी हैं, तो ये खासियत है ये। और देखिए सीधा चढ़ गए हैं जियानी के ऊपर शैंक्स, लेकिन जियानी भी थर्ड स्पेल के साथ तैयार थे। शैंक्स ने सही समय पे वापसी ली, नहीं तो मर जाते वो। ये फिर पंगे लेने जा रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट पानी लेके आ रहा हूँ। जी जी आप बिल्कुल आए, और जब तक हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं बॉटम लेन पे जो हमें देखने को मिल रहा है। ये जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि टस्क एक रेंज कैरी के साथ खेल रहे हैं, डेथ क्लच खेल रहे हैं लूना पे, और टस्क चढ़ गए हैं यहाँ पे। डॉन ब्रेकर काफ़ी डिफिकल्ट किल रहेगा, इतना जल्दी अर्ली गेम मारना उनको काफ़ी टैंकी रहते हैं, और जो स्पेल्स हैं वो डैमेज भी बहुत देते हैं उनका। और मिड लेन की अगर मैं बात करूँ तो इन्वोकर वर्सेस पक का मैचअप चल रहा है इस समय, और काफ़ी बराबर स्टार्ट। और जैसा कि सुनने में आया है कि होप ने काफ़ी अच्छा उम्दा इन्वोकर खेला था पिछले मैच में वॉरपाथ के अगेंस्ट। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब क्या पुल ऑफ करते हैं। ये खेलते हैं, ये माना बन। ओह फर्स्ट ब्लड ले लिया फर्स्ट गया ब्लड बॉटम लिया गया जी। आप बॉटम लेन पे लूना को बढ़िया, ये मार भी के डॉन बढ़िया ब्रेकर ने खेलते हैं डॉन। अथॉरिटी स्टैम्प करी है अपनी लेन के अंदर। जी बढ़िया एकदम, दोनों फुल यूटिलाइज। ओ यहाँ पे ओ इनके पास नहीं था, इन्होंने ब्लफ किया है। स्किल इनकी सीडी पे थी सेकंड, और बट देखिए स्टिल बताया भी है उसके बताया भी बाद कि है सीडी पे था। बट लूना सुपर के लिए प्ले यहाँ थोड़ा पे, सा ये थोड़ा सा फर्स्ट लेवल टीपी कैंसिल। ये अब अगली बार अगर वो मरते हैं इस लेन में तो उनका ना टीपी होगी उनके पास। जी हाँ, और टीपी ये भी 60 और सेकंड कूल डाउन पर काफी बहुत ही लेट आएंगे। जी हाँ, लेन बहुत थोड़ी सी बिगड़ गई है अब यहाँ पे, बस समय दे दिया है एकदम इन्होंने। बहुत प्यारा खेल खेला है, एकदम जी माइंड हाँ, गेम्स बढ़िया। डिस्ट्रप्टर एफ मोदी जी हैं इस टीम में, आपको बताना चाहूंगा मैं। मिड लेन नेक टू नेक। Oh, por Dios. Money and bones, money and bones. I'm seriously getting tired of this place. 1-0 यहाँ पे फर्स्ट ब्लड मिलता हुआ डॉन ब्रेकर को। काफी खुश होंगे उस फर्स्ट ब्लड के बाद, और लूना काफी समय लगा उनको वापस आने में लेन में, तो इतना अच्छा हुआ नहीं उनके साथ जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेन गेम ऐसा स्टार्ट हुआ नहीं है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट देखने वाली बात यही रहेगी कि अब आगे यहाँ से लेनिंग में कितना सेफ खेलते हैं वो, क्योंकि देखिए डॉन ब्रेकर जब तक हैं डिस्ट्रप्टर के साथ काफ़ी दिक्कत रहेगी। टॉप लेन की अगर बात करें तो क्वाइट इवन है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। हमें लग रहा था कि जो टाइड हंटर है स्ट्रगल करेंगे लेन में, लेकिन काफ़ी आराम से लेन कर पा रहे हैं वो इस समय शैडोविन के सामने, तो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बट देखिए बॉटम लेन पे फिर से लूना पे चढ़ते हुए, जी हाँ, लेकिन इस बार लूना पूरी बचने की कोशिश करेंगी। ग्लिम्स यूज कर चुके हैं वो, लूना इस बार बचेंगी। देखिए ये थ्रेट लूना के लिए बना रहेगा इस लेन में, और काफी स्ट्रगल कर रही है इस समय लूना काफी। और वहां पे फिर टाइड हंटर को फाइनली पकड़ा, और रिटर्न किल में देखिए आप यहाँ पे शैंक्स को मारते हुए। ओह
और यहाँ पे आई थिंक लीना इज डेड। यस, लूना अब मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। जी हाँ, इस और ये बार डिस्टर्प्टर भी बच जाएंगे। बिल्कुल सब माना कुछ की सीढ़ी पे है। कमी और बॉटम लेन डिजास्ट्रस होती जा रही है। लूना के लिए नहीं टीपी है रहेगा उनके टॉप पास अब। पे भी वैसे 2 किल निकाल ली मुझे लगता है सबने जी हाँ, कि नहीं टॉप एक। किल पे निकाले हैं, लेकिन टाइडेंटर अभी भी लेन इतना बुरा नहीं गया उनका। 21 लास्ट हिट है उनके अगेंस्ट एसएफ के 24, तो काफी अच्छा मानूंगा मैं, कंसिडरिंग कि ये जो लेन थी काफी टफ थी उनके लिए। मिड में तो थोड़ा ड्रॉ चल रहा है। जी हाँ, मिड लेन काफी इवन, दोनों ही मिड लेनर्स हम्म, आराम से खेलते हुए। क्योंकि इनका इन्वोकर मतलब सिर्फ माना वाना बंद कर देता तो पाक इतना खेल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे फिर इंडियन जीजस ने डब्ल्यूडी को ठिकाना लगाया। आई थिंक क्लॉक का काफी योगदान होगा इन स्किल में सेटअप करने में। उन्होंने देखिए ब्राउन बूट्स और विंडलेस ले रखा है और कॉक्स मैक्स पे खेल रहे हैं। अगेन आप एक बार ग्राइड। कंटिन्यू करें मिया जी, मैं जी जी 1 जी मिनट में बिल्कुल। आया। कंटिन्यू। और यहाँ टॉप पे बच गए टाइट एंटर को। मिड लेन पे गैंग करने की कोशिश की जा रही है पक को, जो कि 6 लेवल हो चुकी है अगर इन्होंने अल्टी यूज की इसको मारने के लिए। डिस्टर्प्टर लेवल 4, विजडम आई थिंक 6 मिनट उनके लिए आए हैं यहाँ पे कंट्रोल। और ये क्लेम्स बैक बट टून इज टॉप। जी माफी चाहूंगा मैं, जी जी गेट पे कोई आ गया था तो इस वजह से मुझे जाना डिस्टर्प्टर पड़ा। ने मिड में काफी मदद की है और टॉप पे फिर एक बार टाइट हंटर को जी हाँ, मारने क्योंकि का वो रीजन अब मिल चुकी है पक को। बिल्कुल जो समय जिस चीज़ की बात हो रही थी कि डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, अब वो डिफिकल्टीज अब बढ़ना शुरू हो चुकी है टाइट हंटर के लिए। अब लेन बहुत करना ज्यादा उनके लिए हो इजी चुकी नहीं है। रहेगा। 4 किल्स आ चुके हैं एसएफ पे ऑलरेडी। जी हाँ, नेटवर्थ इनकी देखे अपन तो बिल्कुल नेटवर्थ में वो इस समय टॉप कर रहे ये हैं बहुत तीनों ज़्यादा। टायर के कोर, तीनों कोर टायर के काफी आगे हैं। ये सबसे ज़्यादा कैरी टू स्ट्रगल इस कैरी तो समय काफी लूना कर आगे रही है, और लूना फिर लूना से ही कर रही मरेंगी। है और फिर से यहाँ पे लूना की मुश्किल लग रहा है डेथ लूना का यहाँ पे बचना। ऐसा लग रहा है कि जी इनके हाँ, एक रैंक और मैच में स्मर्फ आ गए हैं। जी ये फाइट में भिड़े थे हाँ कैफे से और सामने एकदम से स्मर्फ आ गए हैं हो मैच में, क्योंकि सकता इनकी टीम है में भी कोई ना कोई स्मर्फ कर रहा था। छोटा भाई खेल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सुनने में आता है कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। हाँ ऐसी बातें भी आती है कभी कभी। लेकिन शैंक्स और मिलन का डुओ जिस तरह से मैं कह रहा था कि काफी समय बाद देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा कर रहे हैं काफी अच्छा अपनी कर लेन रहे में। जी हैं। हाँ, 8-1 2K की नेटवर्थ एडवांटेज आ गई है, और मिड लेन ही एक ऐसी लेन रह गई है जहाँ पे थोड़ा सा पक। मैच इवन चल रहा है जी और यहाँ हाँ, पे टस्क का रोटेशन दोनों को माना बंद किया है परफेक्टली टाइम करके। और ये देखिए ये जो इन्वोकर का प्ले स्टाइल है जो आपको मारता नहीं है जी बट फंसा देता है, हाँ जी बिल्कुल। ये काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे ट्राई करेंगे किल करने का बिल्कुल टस्क को देखिए अभी मारना डैमेज चाहिए नहीं यहाँ है पे। तो मेरे हिसाब से, और यहाँ पे मिलन एसएफ भी आ गए हैं। परफेक्ट अगर रेस कनेक्ट होती तो बेहतर होता, पर पहली रेस डैमेज मिस हो बहुत गई खाया इसकी है, वजह से। डैमेज काफी खाएंगे तीनों ये। लेन लो है और वो करने गेम पॉज करके हाँ, इसी दौरान ये सब हो रहा है तो लूना को थोड़ा टाइम मिल जा रहा है। अपना ट्रेड्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक अब जंगल जाने का समय आ चुका है। लूना के पास जी 6 हाँ, लेवल देखिए ऑलमोस्ट हो चुके लेकिन हैं। उन्होंने मतलब जिस तरह से उनका गेम चल रहा था, मैं इस स्किल बिल्ड पे थोड़ा सा क्वेश्चन उठाऊंगा कि उन्होंने लेवल 1 को भी 3 पॉइंट दिए हैं। मेरे हिसाब से उनको लेवल 3 जो उनका 3 सॉरी को थर्ड मैक्स और एबिलिटी है, सेकंड करके सेकंड भी काफी बिल्कुल यूजफुल है लूना के लिए। बिल्कुल सेकंड और थर्ड पे ये भी फोकस करना चाहिए था। एटलीस्ट एक लेवल का सेकंड और 3 लेवल का इनका थर्ड होना चाहिए था, जी जी बिकॉज जो लेन जा रही है उसमें इनका किल थ्रेट अब इन बिल्कुल भी नहीं रहा है, और ये बिल्कुल जीरो रहा सर्वाइवल। है। इनको जी बिल्कुल हाँ, मार नहीं पा रहे। अगर मतलब अगर किल पोटेंशियल भी आई थिंक बढ़ता है सेकंड और थर्ड से, क्योंकि टस्क के साथ वो राइट क्लिक भी अगर देते हैं जी हाँ, क्रीप्स को लास्ट हिट के लिए तो वो बाउंस करेगी। नॉर्मली उनका डैमेज काफी लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चनेबल चॉइसेस
है इनके कैरी की बिल्कुल। तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह की लेन गई है उसके हिसाब से उन्होंने उनको तब भी लगा कि वो शायद किल पोटेंशियल रखते हैं लेन में, जो कि मिड नहीं है पे ऐसा। जी हाँ, तो जिस तरह से एसएफ क्या जिस तरह से लगता है फार्म्ड आपको? है इस समय 4000 एकदम डबल कर रहे हैं नेटवर्थ इस समय लूना से, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या यहाँ डैमेज पे देखिए कितना बस ज्यादा लगते लिया है नहीं एसएफ है। ने एक स्पेल और से बॉटम डब्ल्यूडी के। रून, टॉप रून, शील्ड रून ऐसे मिल गई है, चुपचाप जाएंगे Dire's अपने top लिए। tower is under attack. वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। काफी टफ टाइम इस समय बॉटम चलता फिर हुआ एक बार लूना के लिए। जी हाँ, बॉटम पे फिर से फील्डिंग सेट करते हुए लूना की। क्या लगता है इस बार फिर मरेंगी लूना या बच पाएंगी? इस बार 3 लोग हैं, अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की। पिंग तो हो रहा है बैक टू बैक फ्रॉम टस्क और डिस्ट्रक्ट। शंकर बेस पे बैठी पता नहीं क्या सोच में विचार में है, टीपी का इंतजार कर रहे थे और जी इन्होंने हाँ, भी और देखिए बॉटम एसएफ का टीपी किया रोटेशन है। आ रहा है यहाँ पे शील्ड रून के साथ। एसएफ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लूना को लेवल 6 से बिल्कुल टीपी जीने में नहीं देना देता है चाहते हैं। ये जी हाँ, ऐसे ये मिले ना। अरे यहाँ पे फेलियर होता हुआ लेकिन तब भी किल मेरे हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। लूना का मिल गया है। जी हाँ। बट काफा थोड़ा मिस प्लेस हो गए जी जायर हाँ, से। शैंक्स की तरफ से हुक शॉट एकदम ही अपने हीरो के अंदर घुसेड़ दिया। अपनी ही टीम के प्लेयर को पकड़ लिया, बोले कि ऐसे कैसे, हम फर्स्ट आना चाहते हैं, और हम उसी के फर्स्ट, चक्कर में। आप कैसे जा रहे हैं? और यहाँ पे बिल्कुल। ऑर्बिट मार मिल चुका है ऐसे को। अब हेल्थ सस्टेन का कोई इशू नहीं, मेलेडिक्ट लगने के बावजूद भी ये खड़े होके मारेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफा चल रहा है इस अगर समय। पक ने भी इनिशियली बर्स्ट नहीं कर पाई एसएफ को, तो एसएफ तो इजीली पक को डिलीट ही करता है कभी भी, देखिए इनकेस अगर गैंग करते हैं एसएफ पक इस के एसएफ को। अगेंस्ट इस पक को बहुत इलूसिव गेम खेलना होगा, जिसके अंदर ये स्पेल करेंगे, इन करेंगे, आउट करेंगे। ये राइट क्लिक की बैटल नहीं करेंगे बिल्कुल भी किसी से। बिल्कुल ऑक्ट्रीन हाँ, बिकॉज अगर देखिए सामने टीम में कैच भी कम है पक के अगेंस्ट, तो पक का कोशिश यही रहेगा कि जितना ज़्यादा इन आउट कर पाए, जितना ज़्यादा वो प्लेस बना पाए और आउट ऑफ कंट्रोल रहे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। एक बार उनको पकड़ा तो इतना डैमेज होगा कि ये और यहाँ पे बस। लूना और ये हुक शॉट कनेक्ट करके लूना फिर टॉप में एक बार बन गई। बॉटम से वो सोच के टॉप आई थी कि यहाँ पे थोड़ा शांति मिलेगी, पर नहीं। लेकिन देखिए मूवमेंट यहाँ शंकर से के एकदम जी ये एसएफ के बहुत बगल से थोड़ा सा उनको लगा जाना। ऐसे अकेला है क्या ही कर लेगा, बट शंकर बना अपनी पोजीशनिंग रखते हुए अंधेरे में। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि एसएफ प्रेशर करना चाहेंगे यहाँ पे टॉप टावर को। Radiant's top tower is under attack. ये भी मास्क का अवेयरनेस आ चुका है, शैडो ब्लेड लेके थोड़े ये इनके ट्रायंगल में या लूना को और परेशान करना चाहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सोलो प्लेयर तो ये हैं, आप जानते ही होंगे। अभी तो आई तो खेल रहे थिंक टीम के आपकी साथ। टीम के अगेंस्ट जब मैच था तब भी ऐसे ही कुछ प्ले के चक्कर में गेम इनका हाथ से हाँ निकला था। निकलता है, वही डबल ए स्वॉर्ड है, निकल भी सकता है और चल भी सकता है। जी हाँ। बट ये टीम फाइट भी काफी ज्वाइन इनके करते हैं कि केस में फिर गेट लेकिन लेके जा रहे हैं, फिर गेट लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके केस में मैं बताना चाहूँगा सिंगल एज ही रहती है, एक ही तरफ थ्रो रहता है इनका, डबल एज हो ही नहीं पाती है कभी। सक्सेसफुल बहुत वापस सक्सेस रेट लूना 0 पता है। नहीं वापस क्यों इस टावर की तरफ आ रही है, ये फाइट ज्वाइन करना चाहती है अपनी अल्टी और उसके साथ, और एसएफ ने शो किया है लूना का स्टैंड काफी लो। और लूना ने अल्टी चलाई डिस्टर्प्टर पे, डिस्टर्प्टर किल लेके इनको यहाँ से। अब एसएफ पे स्टिल अल्टी बाकी है, पक ने टीपी कैंसिल कर दी या कर दी गई, और मिड में शंकर और सन स्ट्राइक मार जी ने। काफी क्लोज था यहाँ पे, अगर थोड़ा सा एसएफ का मूवमेंट इधर से उधर होता तो मुझे लगता है डब्ल्यूडी वहां पे इनको एलिमिनेट कर देते। हमारा एकदम रैंक मैच के लिए कॉल आ गया था, वो हमको खींच के ले गए थे यहाँ से, अगवा कर लिया गया था, पर हमने बोला हम नहीं, कास्टिंग की जॉब में व्यस्त थे। क्या मिस किया हमने कुछ मिनट में लास्ट बताएं? कुछ मिस नहीं हुआ यहाँ पे, गैंग ट्राई किया गया था। जब आपने लास्ट देखा डिस्ट्रप्टर के मारने के बाद लूना सरवाइव करके निकल गई वहां से, एसएफ भी बच के निकल गए।
टीम रोटेशन में आई थी, लेकिन ठीक है, एक तरह से लूना के लिए ये चीज अच्छी ही है, कहना चाहूंगा। और यहाँ पे पूरा शंकर को फेल दिया है बिल्कुल। पक ने, काफी लो है पक यहाँ पे। इन्वोकर राइट क्लिक लगता नहीं डाउन है करना कि चाह रहे हैं, बट पक तो मानना मुश्किल है काफी, विदाउट एनी साइलेंस और स्टन। और मिड आ गए हैं टाइट हंटर अपना हथौड़ा लेके। Radiant's top tower is under attack. प्रेशर करेंगे मिड टावर को ही, बॉटम टावर प्रेशर बॉटम फिलहाल में प्रेशर खत्म कर दिया है, अब शायद मिड की तरफ डायर जाना चाहेगी, बट डॉन ब्रेकर के ऊपर टस्क और WD मूव करते हुए रैप अराउंड भी किया जा रहा है। इन्होंने पंच मारा है, लेकिन किसको? और बेहतरीन यहाँ रोकी एक और खेल जोड़ता हुआ डॉन ब्रेकर के और ये लूना को पीछे बुलाया और हुक शॉट अल्टी अच्छी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं जीत पाएगी यहाँ पे एक। और इसी बीच मिलन सेफली फार्म करके अपनी शैडो ब्लेड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यार देखिए फार्म देखिए, शैडो फिन पे 14 मिनट में 8000 नेटवर्थ पे है इस समय, ये अल्ट्रा फैट है इस समय, बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा मौका है फ्रॉस्ट ट्रेन के पास इस गेम को स्नोबॉल करने का, खत्म करने का। जी हाँ, 5 के नेटवर्क एडवांटेज है 14 मिनट पे। अब यहाँ से सही फाइट्स और रोशान का यूज करके ये गेम स्नोबॉल कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। एक BKB डेडुलस और अगर ये बना ले तो आई थिंक अनकिलेबल हो जाएंगे एट दिस पॉइंट। या लेकिन मुझे लगता है ये पहले सिल्वर एज बनाएंगे ताकि ये डील कर पाए स्टाइल हंटर्स। वो शैडो ब्लेड के बाद मतलब टोटल। और यहाँ पे डिस्ट्रप्टर है टाइट के पास, उन्होंने ग्लिम्स किया पर। और यहाँ पे हेज उनके साथ SF को पकड़ा, SF पास अल्टी है, साइलेंस कर दिया रेवेज मारने के बाद। और इस डॉक्टर का स्टंट, बट क्या ये नहीं मिस्ट्री खेलते हुए इन्वोकर के पास TP था बट किया नहीं। डबल किल। देखिए इल्यूसिव गेम प्ले, जिस तरह की जिस चीज की मैं बात कर रहा था आपसे, या दिखा पा रहे हैं ये, पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए वही चीज है, कैच की कमी होने की वजह से पकड़ नहीं पा रहे हैं पक को बिल्कुल भी। पक पूरा यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है अपनी एक स्पेल को अच्छे से। नहीं पर अब शायद अभी भी नहीं। और यहाँ शंकर का क्लच हुक शॉट और फिर बचेंगी पके पे। और यहाँ पे शंकर ने फुटबॉल गोल मार दिया अपनी एक बॉल को फेंक कर पक पे। बेहतरीन गेम प्ले है शंकर द्वारा की तरफ से, शानदार गोल। और ये SF भी आ गए हैं जिंदा होके इस एक्सटेंडेड फाइट में अपना किल लेने। अगर ये चाहे तो वॉल करके टाइटेंट को भी मार सकते ग्लिम्स करके, SF के पास इनफ डैमेज है तो अगर ये टाइट शो करे तो। देखो लेकिन SF सीधा स्ट्रेट अवे मेरे साथ सिल्वर एज बना सकते हैं। देखते हैं उनकी क्या चॉइस रहेगी। और यहाँ पे इन्वोकर के पास वेसल बना रहे हैं बॉट्स के बाद। अब बॉटम जा रहे हैं शैडोफिन अपनी शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करने, लूना को अल्टी से खत्म करने। स्कैन इन्होंने किया, अब थोड़ा सा लेट हो गए। क्या लूना ये लेन लेने के लिए सोचेगी या फिर यहाँ WD ने इन्वोकर को मैनेजिट लगाया और काफी लो है। और यहाँ लूना की अल्टी, इन्वोकर विल डाई। ब्यूटीफुल अल्ट फ्रॉम डिस्ट्रप्टर और पक की एंट्री 4 हीरो के बीच नहीं हुई। अच्छी फाइट रेडिएंट के अगेंस्ट में। और ये अल्ट और पक को भी यहाँ किलेंगे आए। और आई थिंक इट्स अ टीम, नो इन्वोकर मारा इन्होंने, उसका थोड़ा बोनस मिलेगा वची डॉक्टर को। लूना तो नेगेटिव में थी इस फाइट में।
जी हाँ, लूना देखिए इस गेम में ही नहीं आ पा रही है जिस तरह से उनकी लेनिंग गई है। 1-7-2 7 डेथ्स हो चुकी है लूना इस समय से। कैरी थोड़ा सा इनका देखिए ड्रैगन लैंस और एक एमओएम लेके अभी चल रही है लूना इस समय। काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उन्हें। पीछे, जैसा कि हमने सोचा था कि एसएफ क्या कीप अप करती है लूना, बट कर नहीं पा रही है इस डिस्ट्रप्टर और डॉन की वजह से। पक फिर से एक बार टॉप पे शो करके जी हाँ, अब देखिए पक फिर से मूव बनाने की फिर कोशिश से कर मर रही हैं। सकती है बिल्कुल मरेंगी और और यहाँ पे ये मार चुकी है जी बिल्कुल। डैमेज देखें वो एसएफ की तरफ से काफी कितना ज्यादा। डैमेज एसएफ ने दिया है और हुक शॉट ट्राई किया, शंकर ने फेल। फेल्ड हुक शंकर जी का हुक शॉट परसेंटेज अगर हम ट्रैक कर रहे हैं 5 में से सिर्फ एक लगा है। 20% सक्सेस रेट रही है। और अगर वो एक भी मैं काउंट करूं तो वो उनकी टीम का लगा था। तो हाँ सक्सेस जी, रेट बॉटम पे। जी हाँ उसके टीम बाद के एक पक ऊपर। को इन्होंने पकड़ा था अंकरा मेसी के टाइम भी। अंकरा मेसी के टाइम फुटबॉल खेला था थोड़ा नहीं, जी हाँ। बट हॉक भी तो किया था ना उससे पहले। हाँ जी हाँ जी, चलिए 20% तब भी देंगे हम इनको। जी जी। उसके अलावा काफी बुरा हाल लग रहा है बताना चाहूंगा। हाँ वो लग रहा है थोड़ा ऐसा। ये देखिए इसे छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते छोड़ते हुक शॉट छोड़ देते कभी कभी थोड़े। और यहाँ पे इन्वोकर और टाइट के साथ डॉन टाइड के ब्रेकर मिल ऊपर गए चुकी है और हैं। यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं मिलन। हर इसीलिए तरफ इस समय चुपचाप फाइट से हो रही है। लाचार सपोर्ट्स को ढूंढ के उनकी बलि चढ़ा रहे हैं मिलन। और यहाँ टाइट का भी काम तमाम कर दिया शंकर ने आके फाइनली। दो लोग बहुत जूझ रहे थे लेकिन तीसरे ने आके उस टाइट की मोटी चमड़ी को खेद दिया अपने औजारों से। और मिलन फिर एक बार अपनी शैडो ब्लेड लगा के लूना के खेमे में एंटर कर चुके हैं। देखिए इन्होंने बहुत जी हाँ एकदम फुल ट्राई मोड में रहे हैं ये। और मैसिव है इस समय एकदम। बहुत ज्यादा काफी। फार्म लेके चल रहे हैं। बहुत ज्यादा फैट हैं। और आप ये अगर हाइड होके देखें खड़े हैं इस कैंप में, वेट कर रहे हैं उसके आने का वार्ड के साथ। ये उसको कैंप छोड़ रहे हैं उसके लिए। जी हाँ आई थिंक हट करेंगे और शायद पा भी लेंगे लूना को। और लूना नहीं, शायद लूना फिर को से पता है वहां जाना खतरों से खाली ना है। लूना सीधा वार्ड तो बेस पे क्योंकि चली वहां गई उनकी हैं। कोई थी नहीं। खतरों की बात बाद में वो बेस में ही चली गई हैं सीधा। हाँ। क्या हम इसको एक रीड कहेंगे? बिल्कुल रीड कहेंगे। देखिए ये कैरीज का थोड़ा सा रहता है जब उनको दिखता है कोई दिख नहीं रहा है और उनको ऑलरेडी पता है कि शैडो ब्लेड खेल रहे हैं तो कभी कभी रीड करते हैं ऐसे कैरीज और वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि शायद क्लैंक आ रहा है। क्योंकि उन लोगों ने खुद को अभी इतनी देर से लेन में शो नहीं करा है तो सामने वाली टीम कोशिश यही करती है कि वो उनको ढूंढे जंगल में जाके। तो उन्होंने वो रीड करा और छोड़ के सीधा टॉप लेन आ गए। देखिए टॉप लेन में भी इतना एग्रेसिव चले गए हैं आगे तो उन्होंने सही रीड करा। उनका रीड सही था कि सब बॉटम ही मिलेंगे मुझे। बट लेकिन एसएफ ने शो कर दिया था बॉटम, इसलिए आई थिंक थोड़ा आगे खेल और सकते हैं। और एक यहाँ और हुक पे कनेक्ट करते हुए पक शंकर को मार जी। दिया गया है शैंक्स द्वारा। जी हाँ एक और हुक कनेक्ट भी करा है वहाँ पे इसको शैंक्स ने। कनेक्ट भी किया है, ये मिस हो गया है। अब देखा नहीं मैंने कैसे डबल। ये हर तरफ ये गेम तो काफी मुश्किल होता जा रहा है इस समय। काफी मुश्किल होता आर्कियन जा रहा ऑर्डर है। के लिए सिल्वर जी एज हाँ। बना रहे हैं जैसा कि हम बात कर रहे थे ड्रैगन लैंस के बाद। फ्रॉस्ट ट्रेड ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती हुई 21 ऐसा मिनट लग में रहा इस है समय आसार। 9 के नेटवर्क एडवांटेज पे बैठी हैं। 77% विन रेट, विन प्रोबेबिलिटी। टाइट को यहाँ पे फिर एक बार पकड़ा है, माना 0 करके वापस बुलाया है और बॉल नहीं लगाई गई है अब तक। एसएफ ऑब्जेक्टिव फोकस करते हुए मिड का टावर लिया है और निकल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 10 के नेटवर्क एडवांटेज आ चुका है फ्रॉस्ट्रेन के पास। अब यहाँ से क्या लगता है आपको? देखिए आप देखिए कैसे डिलीट किया जा रहा है बेचारे मासूम सपोर्टों को। लाचार, हेल्पलेस, एकदम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप क्या कहेंगे यहाँ से कोई गुंजाइश है आर्कियन ऑर्डर की कमबैक करने की? ये मुश्किल है गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा। मतलब डोटा की जो इन गेम प्रोबेबिलिटी है वो भी 90% हो चुकी है टायर के लिए। तो डोटा भी सिर्फ 10% मानता है कि रेडियंट कुछ कर दिखाएंगे। अगर इनकी लूना थोड़ा भी ऑनलाइन आ जाए। दोनों तरफ वॉर्ड कर दिए इन्होंने अपने।
ये लूना को ऑनलाइन आने में बहुत समय है। देखिए इस समय 8,000 नेटवर्थ पे हैं, 22 मिनट 23 मिनट होने को आ गए हैं इस गेम में, और एसएफ अभी 5,000 नेटवर्थ ऊपर है लूना से। और देखिए फिर लूना को मारेंगे यहाँ पे। ओ कैंसिल करा अपना अल्टी को यहाँ पे एसएफ ने, और खत्म हंट होने कर वाली रहे है। हैं। जी हाँ, और देखिए हुक शॉट एक और मिस होता हुआ। 7 में सिर्फ 2 हुक शॉट कनेक्ट हुए हैं इस समय शैंक्स के। ऑर्किड बनाया है शंकर बनाने, आपको बताना चाहूंगा पक्की नहीं, शायद इसीलिए उनको डबल क्लेम मिड में मिले थे, लेकिन जो ऑर्किड शो किया था। डैमेज जिस समय एसएफ लेकर आ रहे हैं टीम फाइट में, आप चाहे ऑर्किड बनाए चाहे आप कुछ भी बनाए, अगर आपने राइट क्लिक करने दिया एसएफ को, तो मुझे नहीं लगता आप 3 या 4 चांटों से ज़्यादा जिंदा रह पाएंगे। और बिल्कुल सही कॉल आई है यहाँ पे रोशान लेने की, और उसके बाद हाई ग्राउंड की तरफ बढ़ने की। यहाँ से गेम और मुश्किल होता हुआ आरके नोटर के लिए। 13 के नेटवर्क एडवांटेज समय फर्स्ट ट्रेन के पास। मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है आरके नोटर के सामने। क्या लगता है इस पहाड़ को लांग के आगे बढ़ पाएंगे, या हम देखेंगे कि यहाँ पे ये मैच अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए ये अगले 2 मिनट ही बता पाएंगे कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। जिस तरह से ये टॉप का T2 लेके इनके हाई ग्राउंड की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनको मौका मिलेगा वो जो ये चाह रहे हैं। एसएफ 18 लेवल हो चुके हैं अपनी मैक्स्ड आउट अल्ट के साथ। काफी सोल्स का डैमेज भी इनके पास काफी हो गया है इनका इनेट का लेवल की वजह से। जी हाँ, देखिए ये वो अब जस्ट अभी मारेंगे, आई और इन्होंने है। बनाया भी बीके भी है। देखिए जैसा कि ये जीतने के लिए ही खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सेंसिबल डिसीजन सुनने में यही आया था कि Sensible पिछले decision। गेम में बीकेबी ना बनाने की वजह से ना बनाने की वजह से काफी मुश्किलें आई थी और गेम आ इस रहे बार थे। इन्होंने टीम की सुनी है और खेला है। बॉटम में इन्वोकर को ऑलमोस्ट मारने की कोशिश, और मार दिया सक्सेसफुली रेवेज के साथ। और ये शंकर का हुक शॉट डॉक्टर पे, और शंकर भी लूना की अल्ट में। जी हाँ, ये लूना के लिए अच्छा खेल, काफी पैसा मिला लूना को, लेकिन अभी भी अच्छा, बट ऐसे देखिए अपना काम करते हुए जी T2 हाँ, लेकर 3 लेकिन TP फोर्स एसएफ कराया है। अपना काम करिए, लेकिन लूना के बाद अभी भी आइटम नहीं आए हैं। बताना चाहूंगा अभी भी स्ट्रगल शुरू है, चालू है यहाँ पे लूना के लिए। और देखिए डैमेज देखिए आप, काफी एकदम डर गए पक कि ये हुआ क्या। पे था उनका। जी हाँ, अगर मार वहाँ सकते थे पर ये WD का स्केयर था। अगर WD की वहाँ पे अल्टी खाते हैं एसएफ तो अल्टी नहीं मर थी, जाते ठीक है फिर। जी हाँ, नॉन पेल्ट होती अगर तो शायद ये कमिट एग्रेसिव करते जाते हैं उस बिल्कुल। टाइम पे। यस, और यहाँ पे फॉर्ड देखिए में फार्म रेज करते का हुए अगर मैं टाइट काउंटर हंटर। भी बताऊं तो एसएफ की रेज भी काफी अच्छी नहीं रही है, काफी मिस करी है इन्होंने। ऐसे रेज तो काफी मिस की उन्होंने, बिल्कुल। तो उनके पैसे राइट क्लिक पे ही खेल रहे हैं। अब जैसे टाइड इनको दिख रहा है, ये सिल्वर एज करके जाके मार सकते हैं, हाँ जी, लेकिन बट मुझे लगता मूव नहीं नहीं है कर इनके रहे हैं फॉर पास, सम नहीं इनके रीजंस। पास देखिए कोई, इनको बिल्कुल है जी हाँ, विजन बिल्कुल है, बिल्कुल ये मार सकते हैं, जाना विजन भी है इनके पास। चाहिए। इनको हाँ ब्रेक जी, करके फंसा के वॉल में डिस्ट्रप्टर की क्लेम्स करके मार सकते हैं, इजीली मार सकते हैं। और यहाँ पे कोई टीपी भी नहीं कर पाया क्योंकि सबने टॉप टीपी की थी। जी हाँ, तो अगर इनको इस हमारे बात पास का टीपी थोड़ा है सा नहीं, टस्क के पास टीपी अवेलेबल है, टस्क लेकिन मुझे लगता नहीं है स्लो ये बॉल जाने का करके नहीं हो सोचेंगे। जाएगा और नहीं, किलिंग। डिसीजन ले लिया है जाने का, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे क्या बोर्ड में। टाइड ने अगर स्पॉट भी किया तो नहीं, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए टाइड नहीं बचेंगे। यही हुआ जो सोचा था। बिल्कुल। वॉल प्रिडिक्शन एंड ऑन ब्रेक के पॉइंट साथ कहना ये टाइड चाहूंगा, एक जी प्रिडिक्शन ऑन पॉइंट कहना चाहूंगा प्रेडिक्शन ऑन आपका। पॉइंट, जी बिल्कुल। वो वार्ड दिख गई थी हमें और पोजीशनिंग सब डोंडो की। और यहाँ इन्वोकर को फिर से एक बार पकड़ लिया गया। डॉन की अल्टी, लूना काफी लो माना के साथ अपनी आधी एचपी में भागते हुए वैसल उन पे लगाए, और डॉन ब्रेकर ने यहाँ हाथ मुझे करके लगता नहीं है पास होने लूना की यहाँ कोशिश, और बच- लूना इज डेड। अब और ये यहाँ गेम पे- यहाँ से मुझे लगता है कि अब हाई ग्राउंड पे दस्तक देंगे, मेगा हो जाएंगे। बिल्कुल हाई ग्राउंड पे दस्तक देंगे। एजिस है 1 मिनट 30 सेकंड में भी बचते हैं एजिस के, और एक साइड इनका मेगा करके ये सीरीज बिल्कुल जाएंगे यहाँ से। अगली शुरू रोशन होता हुआ। पे ये फाइट गेम एंड होगा क्या लगता है, या फिर उससे पहले ही?
मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई ज्यादा फोर्स करते हैं ये फाइट ओवर तो एक्सटेंड करते हैं हाँ, तो भी यहीं खत्म हो सकता है। बात सही है आपकी। और ये ग्लिम्स करने की कोशिश पर रात का टाइम है, इनको एक ऑब्जर्वर लगानी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने लगा दी है इंस्टेंटली वहाँ पे, और ये डिवॉर्ड भी कर दी गई है। वेरी सेंट्री दो साइड में का चीज में भी 1 मिनट बचा है, जो कि काफी समय है एसएफ के लिए, जिसके बाद बीके भी है। अगर एक बार मरते भी है, जो कि ये चाह रहे हैं मरना, बिल्कुल देखिए। और ये बेहतरीन और डिस्ट्रप्टर की क्या बेट किया गया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन। लेकिन बच जाएंगे यहाँ पे पक। कोई भी नहीं मरा है, देखिए सब निकल गए हैं लो एचपी में। अच्छी तरीके से टस्क भी निकले, टस्क भी निकल गए, यूज्ड है, टस्क भी निकल गए। यहाँ एसएफ को बीकेबी भी यूज आ रही है। और ये डब्ल्यूडी ने काफी आगे कदम रखा है, पर फिर बचेंगे उनके पास, बच जाएंगे। और ये बेहतरीन हुक शॉट, और ये शानदार हुक शॉट, और रेवेज बैकलाइन से पड़ गई है। एसएफ के ऊपर रेवेज है, लूना ने अल्टी मारी है, डॉन यहाँ एसएफ मरेंगे शायद, अब बचेंगे नहीं, सरवाइव कर गए हैं। पक ने अल्टी की है और इन्होंने पक की तोड़ ली है। काफी डॉन ब्रेकर का क्लच सेव आया एसएफ के लिए यहाँ पे। लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं न्यूट्रल्स में जाकर एसएफ, जब तक यहाँ पे टीम फाइट चल रही है। शंकर वना बीच ने रॉकेट उड़ा के और क्लीन अप किया है। डॉन ब्रेकर भी काफी फैट लग रही है, और इन्वोकर एसएफ वापस आते हुए अपना रिफिल करके स्टाइट को मारेंगे, फिर डब्ल्यूडी को मारेंगे। काफी बेहतरीन डिसीजन एसएफ द्वारा। यहाँ डब्ल्यूडी भी सरवाइव नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ है। पक भी शायद कोशिश पूरी करी है डिफेंस करने की, लेकिन इन सब में 18 के नेटवर्क एडवांटेज आ चुका है फ्रॉस्ट्रेन की तरफ। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हाई ग्राउंड डिफेंस इतना अच्छा हो नहीं रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि ये अब आगे और डिफेंड कर पाएंगे। वो देखिए आप डैमेज देखिए आप एसएफ के पास जो डैमेज है, ओ माय गॉड, जिस तरह के डैमेज इस समय एसएफ कैरी कर रहे हैं, उसमें आप एसएफ के आसपास भी नहीं जा सकते। एसएफ को पता है अभी मुझे कोई खतरा नहीं है, इन पर अल्टीमेट्स डाउन है, दे कांट किल बोथ ऑफ देम। और ये बेहतरीन लिंक अल्ट बिल्कुल, और ये देखिए पास डेड होती हुई बायबैक नहीं होगा उनके पास, और मुझे लगता नहीं है कि कोई बैक हो। और देखिए चाहते ही नहीं है कि इनके इन्वोकर आए इनके आसपास, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन्वोकर आसपास भी आए, चाहते हैं कि इन्वोकर मेहनत करके खुद चल के आए अपनी बॉडी बनाते हुए, लेकिन बॉडी बनाते हुए अपना ओ बहुत सारी बाउंटियां उठाई है इन्होंने यार। देखिए फायदेमंद रहा है, बोले ठीक है भाई, अब सब सामान उठा के आ रहे हैं आराम से, चक्कर काटते हुए, चक्कर गन्नी होने से बचते हुए। लेकिन देखिए 22 लेवल के एसएफ हो चुके हैं, इनकी सोल्स का डैमेज भी काफी हो चुका है। 22 के लीड यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है जो 22 के लीड है वो पूरा इनका ही फार्म है। जितना इनकी नेटवर्थ उतनी नेटवर्थ में डिफरेंस है दोनों गेम में। और ये डिस्ट्रप्टर आते से माना भरे आर्केन रून के साथ किसी को पकड़ना चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से फ्रॉस्ट्रेन ने डिसीजन ले लिया कि अब आखिरी सेट ऑफ रैक्स बचे हैं, उनको लेके गेम को एंड करने की कोशिश करेंगे। और डेड्यूलस आई थिंक कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे एसएफ का बायबैक के साथ। नहीं, बायबैक भी इनका आ ही जाएगा आई थिंक इनकी मेगा करने के बाद। बीकेबी डेड्यूलस के जो चांटे पड़ेंगे, जो मैंने कहा था बीकेबी डेड्यूलस अगर ये बना लेंगे तो ये गेम इनसे कोई नहीं छीन सकता है, और इन्होंने वही किया है। बीकेबी डेड्यूलस आफ्टर सिल्वर एज एज वी प्रेडिक्टेड। काफी अल्ट आती हुई यहाँ पे मैच होते वो बीकेबी लगा के खड़े होके हिट कर रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ पे वन हिट डिलीट हो गए एसएफ। 1230 की क्रिट निकली है एसएफ, फ्री हिटिंग टाइड हंटर, और पक को भी कर रहे हैं किया, और ये पक को वापस बुलाया गया है। और इंस्टेंट बायबैक आता हुआ पक की तरफ से, इंस्टेंट बायबैक की नीड यहाँ पे उनको लगी। और ये मेगा क्रीप्स के लिए टाइट हो रही है। 5 मैक्स 500 डैमेज है लगभग एसएफ के पास, नहीं 600 समथिंग, 550 तो है एटलीस्ट। और ये सिल्वर एज लगा के लूना को ब्रेक किया है, और टस्क ने इन पे जंप लिया है। यूज नो बॉल ब्लिंक आउट, मेगा हो चुका है सक्सेसफुली, और टाइड हंट इनके डिस्ट्रप्टर को मार दिया गया है। बायबैक टाइड ने भी,
डॉन ब्रेकर भी काफी जूते मार रही है और उन्होंने आइटम भी असॉल्ट बना है काफी अच्छा। ये तो फाउंटेन के अंदर मारा जा रहा है, बहुत मैक्रीप हो ही गए हैं, काफी मुश्किल मुश्किल गेम खेला जी है हाँ। फ्रॉस्ट रेन ने ये वाला। और इसी जैसा के एक साथ परफेक्टली आप खेल सकते थे वैसा ही बिल्कुल हर मूव हर वो चीज आपने करी है परफेक्टली। जी हाँ, और इसी के साथ ये मेरे हिसाब गेम से तो ये लोग अब 3-वे टाई इम्पोज करेंगे ग्रुप ए में। तो वॉर जी, पाथ 3-वे आपके टाई पास अभी भी होगा। चांस बचा है ग्रुप टॉप करने का। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब आगे क्या होता है। देखिए 2 हिट में खत्म कर दिया है, माय गॉड। जिस तरह का डैमेज इस समय एसएफ दे रहे हैं, खतरे से खाली नहीं है। आई थिंक खड़े होकर मैन फाइट करेंगे। बीकेबी रेडलर दोनों रेडी है और बिल्कुल यहाँ आप पे एक ठूसा मैन फाइट आप बिल्कुल हमारे नहीं शंकर कर और सकते बीकेबी लगा के एक ये रैंपेज लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से। देखिए फिर से कहीं ले डेज मिस पाएंगे? होते हैं। आई थिंक ले लेंगे ये अगर एमपी अब लेना चाहे तो। फाइनल डिसीजन लिया पीछे होने का कि अब इनको डिफेंड करने देना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से कोई तो पॉइंट नहीं है। को शैडो प्लेट करके जाना चाहेंगे और सेंट्रियां लग चुकी है और डिस्ट्रक्टर पे एगेनम भी आने वाला है थोड़ी देर में और डैमेज काफी वो ज्यादा देखिए यहाँ पे आप सेंट्री डैमेज, की अब आप जरूरत, डस्ट की विच जरूरत डॉक्टर होती पे है। देखिएगा, डेड नो बच गए। अल्टी रेडी है साइलेंस और यहाँ पे ओवर क्या मरेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्सटेंड करके, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट। सब कुछ गवा चुके हैं। यहाँ अब पे फिर एक थोड़ा समय बढ़ा है इस बचा मैच है। में आगे बढ़ने के लिए। गुजराती बॉयज को एक मौका मिला है वापस अपना हाई ग्राउंड डिफेंस करने का, लेकिन एंशिएंट बट अगर टाइड ऐसे ही जाके मर जाएंगे कहीं खुलने में तो थोड़ा बताना चाहूँगा अभी भी इतना डैमेज है नहीं आर्किन ऑर्डर के पास कि वो मेगा क्रीप्स को होल्ड ऑफ कर पाए इतने समय के लिए। और ऐसे की बार वापस सिर्फ आएंगे तो एक लूना ही और है जो मारती है, बाकी और है पग को आप देख सकते हैं जूझते हुए मेगा और क्रीप बताना से। चाहूँगा एक और आइटम लेकर आएंगे लूना साथ में। इस समय काफी फार्म्ड है एसएफ, वो एक और आइटम लेकर आएंगे लूना एक के और ऊपर। आइटम बटरफ्लाई मेरे हिसाब से अगला मुझे लग रहा है जो आना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए हाइड्रस ब्रेथ या बटरफ्लाई? सैटेनिक बनाना सैटेनिक इज आल्सो, चाहिए। जी हाँ, सैटेनिक बनाना बट चाहिए। बात तो सही है। डिसिप्लिन के साथ जब खेले हैं तो वो डिसिप्लिन पूरा एंड तक लेके जाएं और गेम को लिंक finish बनाएंगे। करें। लेकिन ये देखिए यही एक इनके जो है, ये दो धारी तलवार नहीं होती, एक ही धारी होती है। यहाँ पे पोटेंशियल पूरा रखते हैं ये हर चीज़ का। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती है कि है इस समय, वो चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लिंक बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मैप कंट्रोल ले रखा है, एरिया कंट्रोल है, एंशिएंट हिट करना है सिर्फ, और आप वैसे ही बहुत आगे हैं। एक अच्छा आइटम और बना के और अपनी लीड और अथॉरिटी स्टैम्प कर सकते हैं आप, बट चूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाना। देखिए वो इनकी चॉइस हमेशा रहती है, तो इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब 19 के नेट एडवांटेज है। क्या लगता है आपको, कोई चांस बनता है यहाँ पे किसी भी कमबैक का आर्केन ऑर्डर की तरफ से? चांस तो बहुत एकदम नेग्लिजिबल है। 100% विन प्रोबेबिलिटी है डायर की डोटा की तरफ से। जैसे कि इन्वोकर आप देख सकते हैं मस्ती मजाक कर रहे हैं, रोशान से भट्टियां खा रहे हैं, अच्छा से उसको जलाना चाह रहे हैं अपने बॉल से और ओवर मारा है रोशान ने। आई थिंक कंटेस्ट सब यूज करके जल्दी, मतलब कंटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। बेस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इस समय। देखिए इवन लूना भी स्ट्रगल ही कर रही है। बैनर भी है इनके पास, मेगा क्रीप्स वाला बैनर तो काफी दर्दनाक साबित हो सकता है इनके लिए। अगर यहाँ बैनर गाड़ दिया गया जी हाँ, तो लेकिन खत्म है। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है शायद एसएफ ने शायद सुन ली हो हमारी और सैटेनिक बना रहे हो वो। क्या ऐसा हो सकता है? आई थिंक ऐसा ही कॉल उनको दिया गया है उनके कप्तान की तरफ से। सैटेनिक ही बनाएंगे अब तो, जिस तरह से खड़े हैं। जी नहीं, बटरफ्लाई बनाया है, सीधा साइक कर दिया गया है सबको कि ना सैटेनिक बनाऊंगा। हमने सजेस्ट, मैंने किया था सजेस्ट, आपका सजेशन ऑन पॉइंट। और अब आई थिंक बट अगला आइटम सैटेनिक है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया अपने को। हाँ जी, दोनों की सुनी है उन्होंने, दोनों कास्टर्स की बात सुनी है। एक बटर भी बनाया है और सैटेनिक भी बनाएंगे। धार को तेज करते हुए मिलन मानना पड़ेगा। काफी अब जल्दी और काफी मोटा पंच मारेंगे और लूना भी हिट नहीं कर पाएगी अब। और ये डॉक्टर ने अल्ट यूज कर ली, डिफेंसिव वर्ल्ड बोलना चाहूंगा। देखिए तब एंशिएंट के पीछे जाके क्रीप्स को डिफेंड करना पड़ रहा है।
मुश्किलें खत्म नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल भी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और ये और अच्छी अल्ट और पकड़ने यहाँ से, पे क्या बैनर प्लेस किया है, वो मर गए। जी हाँ, शंकर भी मर गए। इन्वोकर यहाँ मरेंगे और शंकर यहाँ सरवाइव करते हुए, लेकिन अब देखिए अब आ गए यहाँ पे ऐसे। शंकर डेड और और ट्री वो डॉक्टर देखिए को बहुत बुरी वो तरीके से हिट, मारा गया। जी हाँ, और ये बेहतरीन वापस बुलाना चाहेंगे, बिल्कुल बुलाना चाहेंगे टाइड हंटर को। और मोटे मोटे चाटे एसएफ के ये गेम अब इनके हाथ से बिल्कुल जा चुका है। अब जी कोई हाँ। उम्मीद, कोई तरीका कुछ नहीं दिख रहा है जिससे ये वापस आ सके इस गेम के अंदर। अभी भी पीके भी है, वीके भी एसएफ पे अल्ट है, है। पीके एसएफ पे, और एंशियंट इज ऑलमोस्ट डेड। पीके भी अल्ट अल्ट एसएफ, कम ऑन मैन, जस्ट अल्ट वंस। अल्ट, जी हाँ, हमें देखने को मिली नहीं है ऐसे की पूरे गेम में। हाँ, पूरे गेम में अल्ट 38 देखने नहीं मिली, मिनट एक के मिली गेम थी में बॉटम नहीं मिली। T2 और पे। बट इसी के साथ फ्रॉस्ट ट्रेन जीजी करते हुए और आगे बढ़ते हुए फर्स्ट 3 रेन वे अब टाई 3 वे इंपोज कर टाई रहे हैं ग्रुप ए में। में। काफी मजेदार कैलकुलेशंस निकलने को आएंगी और स्टैंड आउट प्लेयर मेरे हिसाब से इस गेम की पक एसएफ ही रहे। आती हुई, जी हाँ, एसएफ ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ग्लिच मैं बताना चाहूंगा आ रखा है, तो उस वजह से कभी कभी लगता है कि कोई और बन के आएंगे। बट बताना चाहेंगे काफी अच्छा गेम हुआ है फ्रॉस्ट ट्रेन के लिए, एक तरफा इन्होंने गेम को जीता है। और हमारे लिए इस गेम के जो एमवीपी रहेंगे वो बिल्कुल एसएफ रहेंगे, 22 और 12 के साथ 27,000 नेटवर्थ। एसएफ के और बाद मैं देना चाहूंगा हमारे शंकर बॉस को भी, जो शंकर उन्होंने भैया, दिखाया है। लेकिन जी डॉन हाँ, ब्रेकर ने भी काफी अच्छा डॉन देखिए दिखाया है। ऑल इन 14 तो ऑल 21 के साथ ऑल इन पूरा टीम एफर्ट था। बिल्कुल अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है अपनी चीजें सारी। जैसे कि रेडिएंट वाले तो बेचारे तितर बितर हो रखे थे, उनको काफी समझ नहीं बैठ मुश्किल रही थी गेम क्या था, जी करना हाँ। है। अब हम एक बहुत क्विक ब्रेक लेंगे गाइस और आपसे मुलाकात करेंगे आधे घंटे के बाद अगले गेम की तरफ। वो आखिरी ग्रुप स्टेज का गेम होगा इस स्ट्रीम का। और बिल्कुल इसके बाद डिटरमाइन हो जाएंगे हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट और प्लेन के साथ साथ लास्ट चांस क्वालिफायर की टीम्स। तो मिलते हैं आप लोग के बाद, आप लोग से आधे घंटे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
Okay, we are back, guys. And we are back with the last game of the group stage of Bharat Pro Circuit League Season 2. This one is against Dark Horse versus Nemesis. To be honest, both the teams have been, not doing good. I mean, both the teams have lost, won one game. But Dark Horse, if they win this one, against Nemesis, they will have a two-way tie and I think they might lead their group in Group B. So a very huge game for Dark Horse. If they win this one, they will go ahead and they will top the group. So definitely they will put in the hard efforts here. And with me joining for this game, I have Mr. Sid with me. Hello, Sid, Hello, and guys. welcome. Hello. So, guys, in this match, we have Dark Horse on the Radiant and the Nemesis on the Dire. If we see the initial bans, Husker and Disruptor. 10 seconds remaining. So, Radiant I team think in ban. Team Nemesis, there is some Husker spammer because we don't see much of the Husker ban in the first phase. Yes. 10 seconds remaining. सो सिड ये मैं आपकी तरफ माइक करूंगा ड्राफ्टिंग के प्लेस पे आप लेके चले हमें ड्राफ्ट के थ्रू और मैं आपको ज्वाइन बैक करता हूँ कुछ ही समय में जरूर जी धन्यवाद No. So, guys, Dire side, Lich or Tusk. pretty standard support bands अगर कोई कर रहा है तो इस टूर्नामेंट में Snap I think one of the most pick or banned 10 heroes है seconds remaining. because it can be versatile across roles, can be played 5 as seconds support, off remaining. lane, position 2 as well. अभी तक pretty standard bans हैं Nemesis थोड़े मुझे लग रहा है targeted bans हैं उनके Dark Horse के supports के लिए but overall एक हस्कर थोड़ा मुझे weird ban लगा but overall these are good standard bans. 10 seconds remaining. नाइट स्टॉकर बैन किया है नेमेसिस 5 ने seconds remaining. Radiant team pick. 12 भी लाइक बीपीसी लीग में सीजन 1 में तो आई थिंक इट्स द मोस्ट बैंड हीरो सीजन 2 में भी काफी बैंड हुआ है पज पज ओवरऑल ओके हीरो provide lot of repositioning can be played as off lane 10 position seconds 5 remaining. position 4 I think best 5 its seconds best role is remaining. the roaming one position 4 9 nice pick into the pudge Tombstone very irritating for pudge as he can't Radiant hook team ban. into the tomb a lot of positioning required pretty standard picks from both the sides और डार्क हॉर्स हमको बताना चाहेंगे उनके एक सब्स्टिट्यूट के साथ 10 खेल रहा seconds remaining. है आई थिंक मास्टर इंस्टिंक्ट अवेलेबल नहीं थे तो दे टेक रॉकर 5 seconds एज अ remaining. सब्स्टिट्यूट लीना लीना हमने देखा है लाइक लास्ट 1 मंथ में काफी ज्यादा इसका विन रेट इंक्रीज हुआ है एंड पिक रेट भी काफी हाई है ये कैरी भी खेलते हैं लोग और मिड भी खेलते हैं काफी वर्सेटाइल हीरो बर्स्ट रखने का पोटेंशियल लगता है ऑलमोस्ट एनी हीरो एट अ पॉइंट ऑफ अ गेम आप लीना की बात कर रहे हैं शायद यस जी 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 बिल्कुल थोड़ी देर में आपका साथ दूंगा थोड़ा भी उसके बाद गेम स्टार्ट जब होगा तब आप गेम डिक्टेट करें और जाएं बट हाँ ये पज पिक आई थिंक बहुत ही रैरिटी था जो हमें देखने को मिला है इस बार इस ड्राफ्ट में डार्क हॉर्स की तरफ से पज पिक पच लाइक ओके पिक है रिपोजिशनिंग प्रोवाइड करता है अर्ली गेम रोटेशन का काफी पोटेंशियल है पोस्ट 4 पे आई थिंक बेस्ट वन कैन प्ले पच वाज बट अनडाइंग भी अच्छा काउंटर है जैसे हमने पहले ही बताया कि काफी अच्छा काउंटर है टूम स्टोन में हुक करना काफी डिफिकल्ट रहता है
अग्री करूंगा आपकी बात से मैं, मुश्किल रहता है। अगर हम नोट करें, नेमेसिस ने काफी पोजीशन फोर्स बैन किए हैं, सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस है। जी जी। Radiant team pick. और अर्थ स्पिरिट पिक आता हुआ नेमेसिस की तरफ से। काफी अच्छा पिक रेट चल रहा है, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और 2। जी। काफी डैमेज प्रोवाइड करता है इस पे टीम फाइट्स में। एंड अगर मिड भी इसको खेल सकते हैं, अर्ली 10 seconds रोटेशन इट कैन remaining. इजीली प्रोवाइड, तो काफी अच्छा पिक है ओवरऑल टीम फाइट। 5 seconds remaining. हाँ, अगर हम देखें तो Radiant अर्थ team स्पिरिट pick. फ्लैक्स कर सकते हैं। ग्रिम स्टोक और पच डुओ। पच क्या यहाँ पे आपको लगता है कि ये पच कोर खिलाएंगे या फिर पच को भी सपोर्ट रोल पे रखेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लाइक पच फोर 10 हो सकता seconds था, बट remaining. आई थिंक अनडाइंग के अंदर पच फोर खिलाना 5 काफी मुश्किल है। seconds remaining. और पच फोर को इजीली आप लेन आउट कर सकते हो, बिकॉज अभी जो मेटा चल रहा है आपका, पोजीशन फोर जनरली लेन छोड़ देता है लेवल 2 लेवल 3 के हम्म। बाद रोमिंग, और पज आई थिंक सोलो लेन नहीं कर सकता। ये वन ऑफ द, अगर ऑफ लेन भी खेलते हैं तो थोड़ा वीक फील होता है, बट यू नेवर नो, सम टीम्स कुक, सो ऑब्वियसली खेल सकते हैं पच 3 पे भी। Dire अग्री team करूंगा आपकी pick. बात से कि बट ये देखिए फिर सबसे फेवरेट पिक है ये इस टूर्नामेंट का, डॉन ब्रेकर। काफी बट ज्यादा फिर पिक भी इसकी किया जा रहा है। बैन उतनी नहीं है। जी हाँ, मतलब इसको हमेशा ओपन छोड़ा जा रहा है इसके अंदर ड्राफ्ट फेज में, और मोस्टली टीम्स पिक भी कर 10 रही हैं, मतलब seconds remaining. रिलाय कर रही हैं इसी को पिक करने में, तो काफी 5 seconds remaining. बट सोचने वाली काफी बात है ओपन ये। भी किया है इनने डॉन, लाइक प्रोटेक्ट नहीं किया है, अभी साइलेंसर ओपन है, आप इसके अंदर निक्स भी खेल सकते हैं। बट ऐसा देखने को मिला नहीं है, डॉन ब्रेकर पिक हुआ है तो इसमें काउंटर ऐसे साइलेंसर जो इनका ट्रेडिशनल काउंटर है सीधा इनको खत्म करता है, वो चीज पिक नहीं हो रही है। तो काफी मतलब और मोस्टली टीम्स रिलाई कर रही हैं डॉन ब्रेकर ऑफ लेन पे, उनको सबको मजा आ रहा है खेलने में, क्योंकि Dire team ऑब्वियसली डॉन ब्रेकर जो लेकर आता है टीम फाइट में वो काफी हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पे आया है लाइफ स्टीलर पिक नेमेसिस की तरफ से। लाइफ का ओवरऑल अच्छा पिक है। ओवरऑल बिल्कुल सही है, पज और डॉन ब्रेकर 10 के अगेंस्ट अच्छा seconds पिक बिल्कुल remaining. मानेंगे, और आई थिंक लेनिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी इस चक्कर 5 में लाइफ स्टीलर के seconds लिए, remaining. तो काफी अच्छा रहेगा ये। ये पिक काफी अच्छा है, और अच्छा कैरियर भी है लाइफ स्टीलर के पास और स्पिरिट में, जो उनको टीम फाइट में अंदर लेके जा सकता है और गैप क्लोज कर सकता है सपोर्ट्स के साथ, या जो भी अभी अगर रेंज कैरी भी पिक करती है डार्क हॉर्स तो उसमें भी। लेकिन यहाँ पे मेरे देखना हिसाब से होगा। जी मेरे हिसाब से अर्थ स्पिरिट को इनको मिड खिलाना चाहिए। जी, देखिए वो डिटरमाइन एंड हो जाएगा जैसे ही ये पिक आएगा नेमेसिस की तरफ से। ये जो पिक है इनका अब इस पर डिटरमाइन होगा कि ये अर्थ स्पिरिट कौन सा रोल खेलने वाले हैं, कौन सा रोल फ्लेक्स करने वाले हैं। काफी मतलब थोड़ा सा क्लियर होगा, 100% डिटरमाइन तो नहीं होगा, हो सकता है एक और फ्लेक्स हीरो ले लें इस पिक पे, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। Radiant बट team देखना pick. होगा कैसे होगा। और ये टाइड एंटर आया तो हाँ, अभी भी अर्थ स्पिरिट मिड जा सकता है कंसिडरिंग, क्योंकि लास्ट पिक नेमेसिस के पास ही है। तो लास्ट पिक अगर नेमेसिस के पास है, नेमेसिस डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अर्थ स्पिरिट को मिड ही लेके जाना है या वो कहीं और लेके जाना चाहेंगे। अगर आप 10 देखेंगे लाइक seconds पिक्स, remaining. 7 हीरो में से 6 स्ट्रेंथ हीरोज हैं, हम्म। 5 seconds तो remaining. कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स के लिए मैं, नेक्रोफोस अगर ओपन है वो अच्छा पिक है, टिम्बर अच्छा पिक है मिड पे कोई खेलता हो तो। मेरा से वो कैरी मैचअप उनको समझ में आ गया, कैरी कौन सा पिक हुआ है और ऑफलाइनर भी दिख गया है, तो वो उसके हिसाब से काउंटर पिक जरूर करना चाहेंगे कि ताकि उन्हें कैरी की लेन इजी रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से टाइड हंटर और अनडाइंग का डुओ आएगा ऑफलाइन में डार्क हॉर्स के सामने, तो उस डुओ को कैसे टैकल करेंगे? क्या वो अरसा लेके टैकल करना पसंद करेंगे या कोई रेंज कैरी Radiant लाइक ड्रो team रेंजर की ban. लेके करेंगे? और देखिए टिम्बर से जैसा आपने प्रिडिक्ट किया, टिम्बर सा पिक आया है, हाँ, आपका टिम्बर प्रिडिक्शन ऑन काफी अच्छा पॉइंट। पिक है। और जी टिम्बर में इसको ऑफलाइन भी खिला Radiant सकते हैं, मिड team भी कर ban. सकते हैं, डॉन और टिम्बर के बीच में देख लेंगे वो जो भी कंफर्टेबल हो।
बट आई थिंक रॉकर टिम्बर खेलेंगे और बहुत ही अच्छा टिम्बर गेम है। इनको एक डिस्पेल लगेगा इनिशियल गेम अर्थ स्पिरिट के लिए, लूटस या यूल्स कुछ भी, बट काफी अच्छा टिम्बर गेम, सबको काटते हैं टिम्बर इस गेम में। बिल्कुल। ऑफ लेन थोड़ा टफ रहेगा, लाइफ स्टीलर है तो 10 seconds remaining. मिड बेस्ट है। 5 seconds बट remaining. अभी अपन देखेंगे तो नेमेसिस के पास थोड़ा बर्स्ट डैमेज की कमी है। बिल्कुल कमी है, और टिम्बर मेरे हिसाब से मिड लेन ही जाएंगे डार्क हॉर्स की तरफ से, और बर्स्ट डैमेज की कमी नेमेसिस के लिए भारी पड़ सकती है। अब यहाँ पे उनको मिड लेनर एक ऐसा लेना होगा जो बर्स्ट डैमेज प्रोवाइड कराए, लेकिन डार्क हॉर्स ने ऑलरेडी मोस्टली ऐसे मिड लेनर्स बैन कर दिए हैं। स्नैपफायर बैन है, आपकी लीना बैन है, और हस्कर अगर वो कोई खेलते हैं वो भी बैन है। ओडी उन्होंने बैन किया है, और देखिए नेमेसिस तरफ से बैन आ रहे हैं, शैडो फील्ड और लूना आखिरी फेज में। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रेंज कैरी आने का। ड्रो उनको हार्ड रेंजर, हिटर चाहिए। जी हाँ, देखिए ड्रो रेंजर ओपन है, तो ड्रो रेंजर के पास अच्छी शील्ड भी है, 3 शील्ड है उनके सामने, तो ड्रो रेंजर इतना बुरा पिक बट नहीं है इस गेम में। आई थिंक अर्थ स्पिरिट और 10 लाइफ seconds स्टीलर remaining. के अंदर ड्रो थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ होएगा, लेकिन टीम फाइट 5 के दौरान मेरे seconds हिसाब से remaining. डॉन ब्रेकर के होते हुए, टिम्बरसॉक के होते हुए और पच के होते हुए ड्रो रेंजर सरवाइव कर सकती है कर अपनी सकती है। सुपीरियर पोजीशनिंग के साथ। तो वो चीज देखने वाली है कि, लेकिन देखते हैं 30 सेकंड में हमें पता चल जाएगा कि क्या पिक आ रहा है। क्यों अब इनको अगर कोई रेंज कैरी लेते हैं तो बहुत लेन्स बहुत पेचीदा हो जाएंगी, बिकॉज रेंज के साथ आप ग्रिम स्टोक को नहीं भेज Dire सकते team pick. लेन में। ओके, तो शामन पिक करके और पज को कैरी खिलाया जा रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। पज आपको यहाँ कोर रोल में दिखेंगे, डॉन ब्रेकर ऑफलाइन जाएंगी और शायद टिम्बर्स ऑफ डॉन मिड। भी कैरी हो सकता है। हाँ, डॉन और पज में मेरे हिसाब से कैरी मैचअप स्विच हो सकता है, या फिर मिड मैचअप। डार्क हॉर्स ने जो ये लाइनअप लिया है, इसमें इनके तीनों हीरोज मिड जा सकते हैं, तीनों हीरोज ऑफलाइन जा सकते हैं। बट बहुत टेम्पो बेस्ड लाइनअप है, जी इनको हाँ, जी लाइक हाँ। खत्म करना तो ये पड़ेगा। डिटरमाइन करना अभी कि कौन मिड जाएगा और कौन सेफ लेन और कौन ऑफ लेन, ये बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि ये जो उन्होंने लाइनअप लिया है कंफ्यूज करने वाला है नेमेसिस के लिए, इवन दो उनके पास लास्ट पिक है तब भी। और इन्वोकर पिक के साथ मिड इन्वोकर खिलाएंगे नेमेसिस। 5 seconds remaining. तो रॉकर मिड खेलेंगे आई थिंक टिम्बर। जी हाँ, तो बिल्कुल देखने वाली बात यही है कि किस तरह से अब ये गेम चलेगा, और बहुत ही कैसा। इंटरेस्टिंग लाइनअप है दोनों की, जी देखें तो हाँ, बहुत अच्छी टीम किसी के पास फाइट्स के भी हार्ड साथ। हिटर नहीं है, हार्ड हिटर है ही नहीं गेम में। देखिए वॉम्बो कॉम्बो पे जाएगी टाइड हंटर और इन्वोकर की टीम की। टाइड हंटर की अल्ट में वो ट्रेडिशनल कॉम्बो जो है, इन्वोकर का कैटेकलिज्म टाइड हंटर के रैवेज के साथ डैमेज, जो बर्स्ट डैमेज की कमी है वो पूरा करेगा। देखने वाली चीज़ है कि कैसे एग्जीक्यूशन कैसे आता है और कैसे ये आगे बढ़ते हैं इस गेम में, तो उसको देखने में मज़ा आएगा। नेमेसिस रिलाई करते हैं बर्स्ट डैमेज पे, पर डार्क हॉर्स के हीरोज ऐसे हैं जो बोलते हैं हम बस नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मंडारा पज खेलेंगे तो सेफ लेन मेरे हिसाब से पज हैं यहाँ पे इनके, जो मुझे समझ में आ रहा है इस समय। बाकी देखने बड़ा वाली बात है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल इंटरेस्टिंग पिक्स हैं दोनों टीम की तरफ से, और इन्वोकर जब आता है गेम में तो इन्वोकर के साथ आते हैं बहुत सारे स्पेल्स और बहुत सारे केओटिक टीम फाइट्स, तो देखने में मजा आएगा। और अब आपके हाथों रहेगा कैमरा कंट्रोल, तो आप कैमरा चलाएंगे और जैसे जैसे आप मूव करेंगे हम आपको फॉलो करेंगे सर। You look ravaged. आप किसी हीरो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कोई हीरो आपने सबसे ऊपर से सेलेक्ट करें पोर्ट्रेट से। जी हाँ, जी हाँ, सेलेक्ट हो रहे हैं हीरोज। Oh, por Dios. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है, काफी फन होने वाला है मैच में। बिल्कुल। मुझे लग रहा है अगर लेट गया ये मैच तो नेमेसिस ये मैच निकाल सकता है, बट टिम्बर जो है वो पूरे मैच के दौरान काफी इरिटेट करेंगे नेमेसिस को, वो उनके नेमेसिस बन के रहेंगे। एग्री करेंगे आपकी बात से। तो आपको पॉज टाइमर थोड़ा देख के चलने रहेंगे यहाँ पे, तो आप इसको फॉलो करें और
हम आपको कैचअप करते हैं कुछ ही समय में। Yes. You look ravaged. एक और पॉज आता हुआ गाइस, दोनों टीम ने एक एक पॉज यूज कर क्या लिया आप मैप में कुछ मूवमेंट करेंगे तो हम देखना चाहता हूँ कि आपका मूवमेंट कैचअप हो रहे हैं कि नहीं अभी। या मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, आई थिंक वर्क नहीं कर रहे हैं ऐसे। जी हाँ, काफी स्टैंडर्ड आइटम्स। मिड मैचअप भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी। थोड़ा फनी बैंटर होता हुआ। इस गेम में सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा पंच कैरी देखना, कैसे कर पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पच कैरी देखने में मजा आएगा। चलिए आप कंटिन्यू करें, और आपके साथ मियाँ शायद जुड़ गए हैं तो वो बीच बीच में आपके साथ देते रहेंगे। हम आपको कैचअप करते हैं। तो इस गेम के कास्टर्स गाइज आपके लिए रहेंगे मियाँ, एमसी और सिड। ठीक है, लाइव कर दो सिड तुम्हारा कैमरा डिस्कॉर्ड। कंट्रोल सिड का ही है, तो जो मेरे कैमरे में आप देख रहे हैं वही आपको दिखेगा सिड की तरफ से। कैमरा कंट्रोल सिड के पास ही है। आप यहाँ पे लाइव कर दो को। कर रखा है मैंने लाइव। किसने कर दिया सिड ने? नहीं नहीं तो आपका तो ब्राउजर। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ तो स्क्रीन दिखेगा ना मेरा, वो ओबीएस दिख रहा होगा ना। ब्राउजर दिख रहा है, ब्राउजर। अच्छा मैं ओबीएस कर देता हूँ। दोनों के एक पॉजेस हो चुके हैं। हाँ मियाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे इस लाइनअप के लिए? इसमें हमें पंच कैरी दिख रहा है। पच कैरी दिख रहा है इस लाइनअप में, और सामने नेमेसिस सामने है, इनवोकर, लास्ट स्टीलर। तो ये मैं कहना चाहूंगा गेम लास्ट स्टीलर की टीम जीतेगी। अगर आप देखोगे कोई भी हार्ड हिटर नहीं है दोनों टीम्स में, सब टैंकी फोक्स लिए दोनों ने। और एक सब टिम्बर जो पिक है, डार्क हॉर्स का टिम्बर पिक नेमेसिस के लिए काफी प्रॉब्लम्स कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, पर लास्ट स्टीलर को एंड गेम कोई नहीं मारता है। तो अगर ये गेम थोड़ा लंबा चला, जो कि चलेगा क्योंकि सब अच्छे जाने माने खिलाड़ियां हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये गेम लेट गेम तो नेमेसिस को ही फेवर करता है। अगर अर्ली गेम इन्होंने कुछ कर लिया है, क्योंकि इनका लाइनअप थोड़ा अर्ली लग रहा है मुझे, तो पुशर हाँ के नाम हाँ, पे इनके पास सिर्फ शमन ही है। शमन है और टिम्बर का शार्ड ले सकते हैं। हाँ वो भी है। बट हाँ, लेट गेम तो अपना कैटा, रेवेज और लाइफ आई थिंक स्टीलर डॉन कैरी पज मिड टिम्बर ऑफ, दिस इज व्हाट द थिंग आई इज। थिंक टिम्बर विल बी मिड, नो जो नो मुझे नो नो, लग रहा है। पज इज मिड, चेक द इन्वेंट। हाँ बॉटल है, पज मिड खेल रहा है, बिल्कुल सही बोल पज रहे हैं आप। इज मिड, या यू डोंट नो मैन, यू आई थिंक यू आर वेरी लो लेवल प्लेयर राइट नाउ। बोल सकता है, बोल सकता 30 है। बोल seconds सकते to थे battle. कि तो ये डॉन कैरी है इनकी ईगोइस्टी। और यो बापू इज डाइंग। और प्लेयर दिखाए कौन है नेमेसिस में? नेमेसिस जरा में अगर आप स्कोरबोर्ड देखें, खोले, नाम वाम देखे इनके कौन क्या है। मशीन, रॉकर, मर्डर, इनको तो देखा है, इनको नहीं देखा है नेमेसिस वालों को। इनका पहला मैच देखूंगा मैं आज, कि The क्या गोल battle खिलाते हैं। जो कि begins. ये शायद 2-0 चल रही है इनके ग्रुप में। You know, स्टैंडर्ड दो बाउंड्री लिए हैं। जी, आप लेने जाएंगे अपने अपने। मेरे को लगता है डॉन टॉप की तरफ जा रही हूँ, टिम्बर सेफ लेन की तरफ आ रहा है। शायद मुझे भी यहाँ पे थोड़ा हैरान परेशान कर दिया गया है रेडिएंट द्वारा। क्या ये लाइफ स्टीलर? यहाँ 4 लोग। आई थिंक अच्छा, लाइफ स्टीलर के सामने अगर टिम्बर आते तो ज्यादा बेहतर होता। आई क्या कहना है थिंक आपका?
नहीं, मेरे हिसाब से टिम्बर बॉटम बेटर है क्योंकि डॉन के पास इजी एस्केप रूट है लाइफ स्टीलर से। और और यहाँ शमन के टिम्बर को साथ लाइफ स्टीलर को पकड़ के मार भी सकते हैं। हाँ, और और टिम्बर जैसे कि यहाँ वो नीचे टिम्बर, यस, दोनों में स्ट्रेंथ हीरोज के अगेंस्ट टिम्बर क्या तो काट रहे हैं देखो आप काफी साइड को। डैमेज देंगे और एक हिट से बच गए हैं। क्या रियू की वापस ये मार पाएंगे नहीं, अपना स्ट्रोक ऑफ फेट? थोड़ी सी एचपी में बच चुके हैं। नहीं, गलत जवाब। अब मुझे लग रही भूख, मैं जाऊंगा बनाने चाय। चाय फिर लेके आए चाय के वापस। साथ देखेंगे इस मैच को। टाइड अब लेन में आ नहीं सकते हैं। टाइट में निकल चुका है सूसू। मैं कहना चाहता था मूत, पर वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो अब आता हूँ। Crew squad, thanks and have fun. इजी किल मिड में। मिड में आई थिंक पज इसीलिए पिक किया गया, काफी रीपोजिशनिंग प्रोवाइड करके और इजी किल्स ले सकते हैं। इन्वोकर ने बिल्कुल ऊपर टीपी किया है। बॉटम पे अर्थ स्पिरिट टिम्बर ने बहुत ही अच्छा अर्थ स्पिरिट को। टिम्बर बहुत ही, ये लेन टफ रहने वाला है दोनों के लिए, ऑफ लेन नेमेसिस के लिए। Dire's courier has been killed. देखें पज मिड पे काफी सही करते हुए, जो इनको एक किल मिला है उससे लेवल एडवांटेज है इनके पास, हाफ अ लेवल का एडवांटेज है। मिड में इन्वोकर को काफी पोजीशनिंग से रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर पज ने एक हुक किया तो लास्ट बार जैसे उनको इजीली किल मिल सकता है। लोटस फाइट्स, टॉप लोटस नेमेसिस को बॉटम में डार्क हॉर्स को मिलता हुआ। अब देखें रॉकर इतना फ्रीली खेल रहा है, बहुत ग्रीडी बिल्ड जा रहे हैं। उनने अपने हार्बर में एक भी स्किल पॉइंट नहीं लिया है और आई थिंक फर्स्ट मैक्स बनता भी है इस लेन में। दो स्ट्रेंथ हैं। टाइड को जैसे आप देख रहे हैं कोर्स में सबसे नीचे हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है लास्ट हिट्स में, बट आई थिंक काफी रिकवर कर लिया उन्होंने। टिम्बर के सामने लेन थोड़ा टफ रहेगा। टॉप पे अंडाइंग पे जाते हुए, बट बहुत ही मुश्किल अंडाइंग को मारना। ओ, इसके फॉल प्ले से सनस्ट्राइक किल बचता हुआ, बट कोई बात नहीं। टूम स्टोन ने अपना काम कर दिया। विजन देखें तो डायर के पास बहुत ही अच्छी वार्ड्स हैं, 3 वार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी विजन देती हुई। पूरा इन्हें मैप कवर कर रखा है। चेस कर रहे हैं अर्थ स्पिरिट को।
एक और साइलेंस एंड आई थिंक यहाँ अर्थ स्पिरिट मुश्किल है। रोल नहीं कर पाया, बहुत ही अच्छा टिम्बर के द्वारा ब्लॉक एंड यहाँ पे पीटी जा रहे हैं टिम्बर पर, काफी इंटरेस्टिंग। ज्यादातर मैंने आर्गेन जाता हुआ देखा है और ये रून फाइट होती हुई दोनों सपोर्ट्स रेडिएंट के रून के लिए आ चुके हैं। हुक मिस, बाइट ऑन इन्वोकर और ये बनाया, शैकल्स पकड़ा और ये इन्वोकर डेड। अर्थ स्पिरिट का भी काफी मुश्किल है बचना। रोल ब्लॉक बहुत ही अच्छा खेलते हुए। यही एक दिक्कत है थोड़ा नेमेसिस के कि उनका अर्थ स्पिरिट रोटेट कर सकते हैं, बट इनमें दोनों हीरोज ऐसे हैं रेडिएंट में जिनके पास डिसेबल्स हैं, साइलेंस है, हेक्स है, शैकल है, तो रोटेशंस काफी इजी हो जाते हैं। टाइड को बहुत ही परेशान करते हुए टिम्बर का फर्स्ट हुक, इन्वोकर पे हुक, बाइट, शैकल एंड आई थिंक इन्वोकर इज डेड। मादरा बहुत ही अच्छा मिड खेलते हुए इन्वोकर को 3 बार मार दिया है मिड पे। आई थिंक तीनों कोर्स ऐसे हैं रेडिएंट के जो सोलो लेन कर सकते हैं, तो सपोर्ट के पास काफी फ्री है रोटेशन का। में दोनों काम करते हुए नो किल पोटेंशियल। इन्वोकर के बाद जैसा आप देख रहे हैं टीपी नहीं है, बैक टू बैक डेड्स है लेन में। टाइड भी जंगल आ गए हैं टिम्बर के सामने, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था काफी टफ रहेगा ये लेन ही नहीं, गेम में भी काफी आगे भी काफी प्रॉब्लम्स होंगी टाइड को। एक और रूम मिलता हुआ पज को मिड पे, और ये अल्ट डॉन की अल्ट टाइड पे, और ये काट दिया है टिम्बर ने। एक और हुक मिड पे, अच्छा टॉर्नेडो, अच्छा किक अर्थ स्पिरिट के द्वारा। टोम स्टोम में फाइट नहीं ले रहे हैं, टीम बैक हो गई है। शैकल और इन्वोकर डेड, अर्थ स्पिरिट भी डेड। टूम में फाइट चल रही है, आई थिंक शैमन मर जाएंगे और ये टूम में 2 लोग मर गए हैं। काफी डैमेज ले रहे हैं। बापू बहुत खतरनाक आदमी निकलेगा, बहुत खतरनाक। और अरे मार दिया। पज की स्ट्रीक भी मिली है, बहुत ही अच्छा प्ले। तो पज मिड मतलब बहुत अच्छा चल रहा है मैंने सुना। पज मिड हाँ, इन्वोकर को 3 बार मारा है, 1-2 बार, एक बार सोलो, 2 बार सपोर्ट्स के साथ। आप लेवल डिफरेंस देख लीजिए, लगभग 1.5 लेवल ऊपर है इन्वोकर से पज। तो काफी अच्छा चल रहा है, बट ये लास्ट फाइट में जो अनडाइंग ने टोम स्टोन से जो फाइट की बहुत ही बेहतरीन, और ये दिक्कत रहने वाली है बिकॉज कोई टोम स्टोन हिटर भी नहीं है। अगर आप 5 हीरोज देखें, सबकी अटैक स्पीड बहुत ही कम है। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है रेडियन के लिए। अगर टोम स्टोन का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा तो काफी दिक्कतें रहेंगी। टोम स्टोन भी काफी, और अगर शैमन है वो भी नहीं बच सकते अपने पैसिव से। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। शायद चांस है डायर के पास ये मैच जीतने का। तो डायर का, जैसे आप बोल रहे थे मियां की लेट गेम, इनको ये गेम 30+ मिनट के पार लेके जाना है। कैसे हाँ। डिले कर सकते हैं, तो काफी अच्छी फाइट की पोटेंशियल है। फाइट तो काफी स्ट्रॉन्ग हो पा रहा है इनके डंडाई की वजह से, जैसा कि आपने बात बताई।
अभी हम मिड पे देखेंगे दो सपोर्ट्स पच के साथ खेल रहे हैं, जो बिल्कुल सही चॉइस है, बिकॉज जो बाकी जो दो कोर्स हैं वो आराम से सोलो लेन कर सकते हैं। तो सपोर्ट काफी फ्रीली टावर वगैरह लेके पच के साथ टेम्पो ले रहे हैं। आई थिंक इनको स्मोक करके रोटेट भी, हाँ स्मोक बिल्कुल सही स्मोक। पच के पास ब्लिंक है, पच बिल्कुल ग्रीडी नहीं खेल रहा है, एक्स वाला बिल्कुल रोटेशन वाला बिल्ड खेल रहे हैं, टॉप जाएंगे। लाइव स्ट्रीम को मानना चाहते हैं शायद। लाइव स्ट्रीमर थोड़ा टफ किल रहेगा, बट हाँ कोशिश जरूर करेंगे। ये लाइव स्ट्रीमर पे भाई है ये, और ये डेड। नाइस। शमन और ग्रिम के साथ आपकी लाइफ स्टाइल कैसे ही रेज करेगा जब ग्रिम स्ट्रोक भी है। बहुत ही टफ है, यही है तो यही इनको करना है। जो लाइफ स्टीलर इनकी विनिंग कंडीशन है उसको शट डाउन करते रहे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्वोकर एक ऐसा हीरो है जिसको लेवल डिपेंडेंट हीरो है, वो बहुत उसको लेवल चाहिए ऑनलाइन आने के लिए, और इस गेम में एक भी सनस्ट्राइक किल नहीं मिला है अभी 12-4 काफी ही बुरा हाल है। 3 स्टैक डायर के स्टैक्स भी चुरा लिए है पज ने। जान तो ले ही रहे हैं, साथ में माल भी उड़ा दे रहे हैं। दो हीरोज दिखे हैं, पज सोच रहे हैं ब्लिंक करने का, और ये ब्लिंक फाइट बट अर्थ स्प्रिट पीछे साइलेंट। डॉन का अल्ट और ग्रिम का अल्ट, दो हीरोज डेड। रेवेज अच्छा रेवेज, बट आई थिंक बैक होंगे द रेडिएंट, यहाँ पे बैक होना भी चाहिए। तुम लगा तो क्या है, अब इनको पीछे होना चाहिए। जिस डॉन बच गए हैं। लाइव स्ट्रीम यहाँ टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ उनको जरूर, आप सही बोल रहे हैं, उनको फार्म पे ध्यान देना चाहिए। अभी वो एट अ स्टेज कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा किल एंड बैक इजीली रिट्रीट किया है बिना लॉस के। टिम्बर पे टीपीस आ रहे हैं, क्या टिम्बर को मार पाएंगे? ये प्योर 4 लेवल की चेंज है टिम्बर के पास। वो सनस्ट्राइक डॉज की है, काफी मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं ये रॉगर। पकड़ नहीं पाए, और ये पज घुसे हैं अंदर। ब्लिंक फाइट, अल्ट नहीं है, टूम भी नहीं है, और ये अनडाइंग है। रॉकर का लेवल 4 चेन बहुत ही मुश्किल, बिकॉज हार्ड लॉकडाउन में सिर्फ रेवेज है अभी इनके पास। आई थिंक शैमन वार्ड से ये टावर लेने की कोशिश करें। अच्छा ये टावर तो बहुत ही कम एचपी है, डिनाई होगा। ये डिनाई कर दिया। डॉन स्टैंडर्ड बिल्ड जाती हुई एको सेवर की। लाइफ स्टीलर म्योलनीर वाला बिल्ड खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये रेडियंस नहीं बना रहे हैं, बिकॉज इनको पता है सामने कोई हार्ड हिटर है ही नहीं। ये स्मोक ब्रेक हुआ और बैक। बच का ये फाइट, डॉन की अल्ट, ग्रिम की अल्ट, साइलेंस, इन्वोकर डेड, बैक में शैमन डेड। अनडाइंग फाइट में नहीं थे, वरना ये फाइट बहुत अलग दिखती। टूमस्टोन लगाया और है। लाइव स्टीलर कीड़ा भाग रहा है, मार दिया। लाइव स्टीलर आप देख रहे हैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खुजली सी मच रही है, ऐसा लग रहा है हिट पे। पता नहीं क्यों यहाँ पे भटक रहे हैं सूरज। अब आ गए हैं टिम्बर। ओ हो लाइव स्टीलर और इसकी अल्ट से अनडाइंग इन्फेस्ट करना चाहिए इनको, बिल्कुल इन्फेस्ट है नहीं। टिम्बर बहुत ही अच्छा काट रहे हैं। अनडाइंग ने पच का किल। ये सपोर्ट काफी डैमेज दे रहे हैं, काफी ज्यादा। तो ये वही हो रहा है। लाइक अगर आप देखें दोनों की लाइनअप, स्ट्रेंथ लाइनअप पे, तो जो भी एंट्री स्ट्रेंथ हीरोज हैं लाइक अनडाइंग और इस साइड टिम्बर, ये दोनों ही अगर आप देखें काफी डैमेज दे रहे हैं। दोनों ही टीम के पास एक एंटी स्ट्रेंथ है। बट अभी आई थिंक रेडियंट फिर भी काफी टेम्पो खेल रही है। पच का
1000 गोल्ड बचा है एक्स से, उसके बाद काफी स्लो और काफी डैमेज रहेगा। या और उससे लाइफ Because स्टील का हेल्थ रिस्टोरेशन भी कम होता है। और इसको हाँ उनको रैप्स बनाना चाहिए, काफी मैजिकल डैमेज ले रहे हैं वो नाइक वगैरह से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि इनको एक्स के बाद सर्वाइवेबिलिटी पे ध्यान देना है। बीकेबी, रैप्स, ये सब आइटम्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे। ये बीके भी तो एक नेसेसिटी आती है नो करके, अगर आप खेल रहे हैं कोई भी पोजीशन को, और काफी दर्दनाक। लिंक वाइट बापू को, और इनको टोम लगाने का मौका नहीं दिया है। हाई ग्राउंड टोम लगाना चाहते थे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो पज और इन्वोकर ने काफी रिकवरी करी है। बिल्कुल फार्मिंग पे फोकस है इनका। ओ, विजन देखिए रेडियंट ने कितना कंट्रोल किया हुआ है अपर हाफ का, वहाँ कोई भी फार्म नहीं कर सकता। पंच का एगेनिम 200 गोल्ड दूर। Dire's bottom tower is under attack. Dire are 3 हीरो scanning. पंच के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टावर के पीछे खड़े हैं। Dire are कुछ भी scanning. नहीं कर सकते वो। ये स्कैन डायर का इनने स्कैन किया है, और टाइड देखते हैं स्कैन के बाद भी इवेड कर पाते हैं। आई थिंक हो जाएंगे टाइड बैक। 4 हीरोज बिना स्मोक के गैंग करने की Radiant's कोशिश। middle नाइट tower टाइम is under है, attack. विजन कम रहते हैं टावर के। आई थिंक साइड Radiant are scanning. नहीं रहेंगे। साइड के बाद रेवेज है, ये रेवेज मारा है 3 हीरो पे। डॉन का अल्ट आया है, ये ग्रीन की अल्ट, साइलेंस और ग्रीन की अच्छी अल्ट। अंडाइंग कहाँ है? अंडाइंग पीछे से आ रहे हैं। टोम्स को बहुत दूर लगाया है साइड से। टिम्बर काट रहे हैं, बट बहुत ही अच्छी फाइट थी ये डायर के लिए। ये दो हीरोज भी डेड थे ऑलमोस्ट। जी हाँ, ये नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं अर्थ अनडाइंग हीरो पर। का और अनडाइंग का जो डैमेज आ रहा है कहीं ना बहुत कहीं ज्यादा, वो रेडिएंट को उनका अर्ली गेम फिनिश करने में बाधा बन रहा है। बहुत ही ज्यादा डैमेज आ रहा है। आई थिंक अब इनको रेडिएंट को डिस्पेल लगेंगे। जिस हिसाब से मैजिकल डैमेज आना चालू हुआ है नेमेसिस का, ये टैंक नहीं कर पाएंगे इतना डैमेज। और ये अभी भी चेस करते हुए टिम्बर को। देखते हैं टिम्बर बचते हैं या नहीं। टिम्बर और पज हैं, शैमन का टीपी है, और ये बाइट, कोई स्टन नहीं बाइट रोकने के लिए, और मुर्गी बनाया, और ये भी डर। पच पे सेप्टर आ चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्ड है। अगर आप देखें लाइफ स्टीलर का, ये फाइटिंग बिल्ड है, ये फार्मिंग बिल्ड नहीं है। आर्मलेट और मिलस्ट्रॉम ये चाहते हैं कि अर्ली फाइट्स में जाएं। हाँ, कोई नहीं बताया कि टीम तो मरनी है अगर मैं नहीं जाऊँगा, डैमेज निकालना है, और बचाते ही हैं लाइफ स्टील इन्वेस्ट करके। और आमलेट से भी काफ़ी मैन फाइट कर ले रहे हैं, इतने जल्दी डिलीट नहीं हो रहे। हाँ, आर्मलेट काफी अच्छा डैमेज और अटैक स्पीड प्रोवाइड करता है। Dire's top tower is under attack.
is under पच attack. ने बीकेबी क्यू कर लिया है, टिम्बर ने भी बीकेबी क्यू कर लिया है, उनका डैसो होता हुआ ऊपर सांप से पुश करने की कोशिश। ब्लिंक, बाइट, साइलेंस, डॉन की अर्थ, मुर्गी और ये डेड। नाइस वोकर का अर्थ स्पिरिट की बहुत अच्छी अर्थ और ग्रिम मिट्योर में चलते ही जा रहे हैं। डॉन का देखना है बच सकते हैं या नहीं। आई थिंक बच जाएंगे। और ये शैमन ने टीपी कर लिया है, बस चाहते हैं फाइट का। बिल्कुल सही टारगेट पे गए हैं, यही इनका मेन डैमेज सोर्स आ रहा है। ये शैमन ने पकड़ा इन्वोकर को बट बैक, शैमन मर गए हैं। इन्वोकर पे टिम्बर पच, अच्छा टॉर्नेडो अर्थ स्पिरिट को हुक किया और ही इज डेड। डॉन मैन फाइट कर रही हैं लाइव स्टीलर से। क्रीप में डॉन पे लाइव स्टीलर और ये डॉन मर जाएंगी। टावर टियर 3 पे रेवेज पज और टिम्बर खाते हुए आई थिंक पज मर जाएंगी। ओ गलत आर्मलेट टॉगल लाइव स्टीलर का और वो चक्रम में मर गए हैं। पीछे से ग्रिम आते हुए और ये अल्ट साइलेंस, नाइस अल्ट। टिम्बर देखते हैं फिनिश कर पाते हैं क्या दोनों को। और चेन मिस बट फिर भी स्पिरिट और रैम्पेज। टिम्बर का रैम्पेज हो चुका है गाइस। बहुत ही अच्छा और ये नाइस सन स्ट्राइक किल। कॉन्सोलेशन प्राइज बोल सकते हैं हम नेमेसिस के लिए। टिम्बर पिक जलवे दिखाता हुआ मिड गेम में, जैसा हमने बताया था काफी अच्छा पिक रहेगा स्ट्रेंथ हीरोज के अगेंस्ट। अब दिक्कत जो सबसे बड़ी है रेडिएंट की कि इस गेम को क्लोज कैसे किया जाए। फाइट से जीत रहे हैं बट इनके पास पुशर नहीं है और वही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। अगर डायर थोड़ा स्लो करें गेम को, सिर्फ डिफेंड करें, फाइट्स नहीं लें, फार्म पे फोकस करें तो इजीली ये गेम टर्न अराउंड हो सकता है। ये पच पे जाते हुए नाइस ब्लिंक, नाइस पच ने टैंक किया और ये दो हीरोज डेड। लाइव स्टीलर कुछ कर पाते हैं, साइलेंस हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाए और ये डेड। 4 हीरोज अगेन डेड। यही टेम्पो की मैं बात कर रहा था। मेरे हिसाब से टिम्बर को अपना शार्ड ले लेना चाहिए। टावर पुशर्स नहीं है इनके पास, एक भी हीरो टावर नहीं मारता। पच भी एक्स से काफी डैमेज डैश आउट कर रहे हैं। Dire's middle tower has fallen. टाइड लोटस से रेडिएंट जंगल में जाने की कोशिश करते हुए सक्सेसफुल हो जाएंगे जाने में। शिवास मेरे ख्याल से उतना अच्छा पिक नहीं है। Dire's bottom tower is under attack. ठीक है, ये ले रहे हैं, मतलब आर्मर प्रोवाइड करता है, एओई आपके चक्रम वगैरह का बढ़ता है, क्योंकि अभी राइट हिटर्स वहाँ पे कुछ एक्टिवेट ही नहीं है। लाइव स्टीलर का डैमेज बहुत कम है। अगर एक बार आइटम चेक ले हम तो शैमन पे ब्लिंक है, टिम्बर पे ब्लिंक है, पच पे ब्लिंक है, 3 ब्लिंक है टीम में और डॉन के पास ग्लोबल। बहुत ही टफ। एक और स्मोक रेडिएंट का टॉप जंगल जाते हुए। टॉप में एक वार्ड है बस।
इनको लेन में लाइव स्टीलर दिखे हैं, रॉकर ने स्पॉट कर लिया है लाइव स्टीलर को। अब देखते हैं कि ये बच के भाग पाते हैं या नहीं। पीछे से टीम कनेक्ट करती हुई लाइव स्टीलर पे। शैमन ने पकड़ लिया है लाइव स्टीलर को। अच्छा शैकल्स, टीम कनेक्ट कर रही है साइलेंस और ये लाइव स्टीलर डेड। मीनवाइल टाइड फार्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ब्लिंक आ गया है। टिम्बर के अगेंस्ट इनको शार्ट चाहिए ही चाहिए। हाई ग्राउंड Dire's top tower is under attack. कोशिश करेंगे। काफी स्लो सीज है, काफी स्लो सीज। शैमन वार्ड्स एकमात्र तरीका इनका पुशिंग का। Dire's structures are fortified. टीम्स आ गए हैं, देखते हैं डायर कैसे डिफेंड करेंगे। टाइड भी आ गए हैं। इन्वोकर का कैटा अप है, लिंक रेविज कैटा कॉम्बो अप है, बट बहुत स्मार्टली खेलते हुए सिर्फ टिम्बर आगे खेल रहे हैं, बाकी पूरी टीम उनके पीछे है। तो बिल्कुल भी एक अच्छा रेविज कैटा का मौका नहीं देते रेडिएंट। क्या बताना चाहूंगा, मैं खाना खाने चले गया था, क्या मिस किया। आएंगे वो यहाँ पे कैटा रेविज बैक में, बट बज को बॉस नहीं कर पाए और बज ने फाइट बदल दी है। The fuck is this guy, man? यही है जब टैंकी सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, कैटा रेवेज कॉम्बो है बट बर्स्ट कर पाना वो एक क्वेश्चनेबल है। मियां हम बताना चाहेंगे टिम्बर एक रैम्पेज ले चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, हाँ, रैम्पेज मेरा टिम्बर से जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वैसा ही हो रहा है, टिम्बर काट रहे हैं नेमेसिस के स्ट्रेंथ हीरोज को। लेवल के साथ तो बढ़ता ही जाता है मामले। टावर डैमेज देखिए, ये सांड जैसे हीरो हैं बट 250 डैमेज लेके मार रहे हैं। काफी स्लो चीज है बट टावर ले पा रहे हैं। फ्री उनको हीरो पहले मार देते हैं फिर टावर मारते हैं। शैमन बिल्कुल देखते हुए कि हमारे पास पुशर नहीं है, रिफ्रेशर अप है शैमन पे, डबल सांप लगेंगे। गेम एंड पे ही लगेंगे ऐसा लग रहा है। और इसमें लाइव निकल भी है, दोनों गलती कर दिए। थोड़े खतरे में बच गए। बच पे ग्लिमर बहुत अच्छा दिया और कूद गए, टूमस्टोन बचा ली, टूमस्टोन के ये डॉन आई, ये फाइट थोड़ी, ये डॉन बैक और स्ट्राइक मिस बच गई। इंच से क्या कर रहे हैं टाइड, बट बैक होते हुए दोनों टीम्स। हज ने हुक किया है, अरे ब्लिंक करके बैक रेडिएंट एंड टायर दोनों बैक होते हुए। काफी यहाँ शमन को अपना रिफ्रेशर रिवील कर देना चाहिए जाके, दोनों खट खट। क्या लगता है? टावर मुश्किल है क्योंकि इजीली सांप मार सकते हैं इन्वोकर और उनके बच्चे जो हैं रोशान पे जाते हुए, बट आप देखिए लाइव स्टीलर का डैमेज आने लगा है। जी हाँ बिल्कुल, काफी वो है मार पा रहे खड़े उसके, और दो वो वाइट एकदम बिल्कुल भी फंस चुके थे। बिल्कुल सही टाइम से रेडिएंट एंड करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये गेट 30 मिनट के ऊपर इनके टावर्स नहीं जाते तो बहुत मुश्किल होता, बट दो साइड मेगा होते हुए और ये रोशान पज ने लिया है। टिम्बर तो मर ही नहीं रहे। हाँ, टिम्बर को मारना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसा हमने कहा था, शार्ड भी ले लिया है टिम्बर ने, पुशिंग के लिए काफी अच्छा टूल है। एक्स और आ जाएगा, और टिम्बर का जो एग्स है वो एक थोड़ा क्वेश्चनेबल रहेगा क्योंकि वो टॉर्नेडो से इजीली डिस्पेल हो सकता है, तो इनको बीकेबी के साथ ही यूज करना पड़ेगा। ये आया एक सांप, ये आए दो सांप, ये रैक्स बहुत ही मुश्किल बचाना। शार्ड नहीं लिया शमन ने, शमन ने शार्ड नहीं लिया, शार्ड भी ले लेते तो दो और बड़े सांप आते हैं। आप देखिए सांप कैसे बल्क में डैमेज दे रहे हैं। कौन बोलता है हीरो चाहिए पुश के लिए? ऑल यू नीड इज सांप। और ये करना चाहे इन्होंने ब्लिंक आउट और वो कुछ तो सेकंड स्किल के साथ थोड़ा सफल रहे।
ये अर्थ स्प्रिट घुसते हुए, ये रैवेज कैटा, ये पकड़ी बनते हुए, ये डॉन का अल्ट, अर्थ स्प्रिट अल्ट, बट बहुत ही ज्यादा लेवल डिफरेंस और बहुत ही टैंकी हीरोज रेडिएंट के। टिम्बर टॉप बहुत ही अच्छा पिक साबित होता हुआ सबको काट रहे हैं। बायबैक इन्वोकर का टॉर्नेडो मिस, अब ये फटेगा और गायब, गायब। एक और रन पे जा रही क्या? पर पे माना नहीं है। माना नहीं है। ये हुक किया है, बच पाएंगे। वो शॉट आ गया शो का। हाँ, सिर्फ शमन एक ने ही शॉट। ताली मांग रहे, नॉटी हो रहे। मेगा हो चुका है, बहुत ही मुश्किल ये गेम। अब नेमेसिस के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये थोड़ा थ्रो होता हुआ, बट टिम्बर को आप देख रहे हैं कोई नहीं मार पा रहा है, और ये ब्लास्ट हुई और ये डेड। टिम्बर की स्पष्ट पे है शायद, किलर को मिला है, तो ये एजेंट थोड़ा हो चुका घातक हो चुका, तो ये थोड़ा दिक्कत है साबित हो सकता है, बट मेगा हो गए हैं तो मेगा हो गए हैं, वही ये डिनाई करवा पाते हैं नहीं, और ये बच तो नहीं जाएंगे। नहीं बच पाए। और कोई आया है, पंच आए हैं वापिस मरने के लिए। पंच भी मुश्किल है, बीके भी टीपी आउट कर सकते हैं, और डॉन भी आ गए हैं। इन्वोकर डॉन आते हुए देखते हैं ये फाइट कैसी काफी बहुत ही डिसीजन लेते हुए रहा ये। यहीं से आई थिंक डाउनफॉल शुरू हो रहा है, काफी स्विंग आया है, लगता है ग्राफ में थोड़ा सा ज्यादा नहीं। विन प्रोबेबिलिटी है, बट आप देखें ये सामने क्या वो 1% 100% बन सकता है? नमसूस टीम 3000 का उन दोनों ने गोल्ड स्विंग दिया है, बहुत ही जल्दी फाइट की है। इस बार होता है गेम्स में, इम्पल्सिव हो जाते हैं। आई थिंक शैमन पे है ये गेम, अब कैसे वो पुश करा पाते हैं। थिंक टीम में कम्युनिकेशन हुआ होगा कि गाइस स्लो डाउन करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता हुआ। रेडिएंट जिनको खत्म करना है ये जल्द से जल्द, क्योंकि लेट गेम उनको पता है बहुत मुश्किल होता जाएगा। और डायर जिनके मेगा हो चुके हैं, वो मेगा डिफेंड करते हुए अभी एक भी टीयर 1 नहीं गया, अगर मैं बताऊं तो रेडिएंट का बहुत ही मुश्किल। बट डायर के पास मेरे हिसाब से अभी भी चांसेस हैं। गेबन तो नहीं दे रहे हैं उनको चांसेस, 1% चांस दिया है, बट आई थिंक इससे ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम लेवल देख लें, मे बी 0 लेवल। दोनों कैरी में 4 लेवल का डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। अगर टीम लेवल पे देखें, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस, 7 से 8 लेवल का डिफरेंस होता हुआ मिनिमम। क्या लगता है अब आपको, क्या ये गेम लंबा चलेगा या बिल्कुल ये खत्म कर दिया जाएगा? जैसा मैं अपने दर्शकों को बोल रहा था कि रेडिएंट चाहते हैं मैच जल्द से जल्द खत्म करना, और डायर चाहते हैं हम कितना एक्सटेंड कर सकते। रेडिएंट ने अपना आधा काम कर दिया, आधे से ज्यादा ही कर दिया है काम मेगास लेते हुए। अब है ये जो 2-3 बिल्डिंगें खड़ी हैं, इनको कैसे मारना। ये उनको मारने के लिए तो बहुत बड़ा राज चाहिए होता है। ये सब इस
पे रहेगा, जो ये रिफ्रेशर और अल्ट हैं बहुत क्रूशल रहने वाली हैं टावर्स के लिए, पुशिंग के लिए। इन्वोकर आप जैसे देख सकते हैं मुझे घोस्ट लगता वॉकर के है कि बेस में ही घूम रहे हैं। इनको शमन को चुपचाप छोड़ के फाइट लेना चाहिए। वो शमन रिफ्रेशर लगाने के बाद इनकी फाइट ज्वाइन करे तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो वही करना चाहिए, जैसे यहाँ स्मोक हो गया, शमन को बीच से जाना चाहिए, यहाँ से जाए शमन, और ये जंप साइड पे जंप बहुत ही बुरा, नाइस सेव, और ये ग्रिम का अल्ट, और ये शमन अपना माना उनका खत्म हो गया है। एक और सांप लगाते हुए ये 2 सांप लगा दिए हैं और वो अब मर जाएंगे। चुके बच गए हैं। बच गए हैं शमन, बहुत ही बढ़िया। एक टावर कोशिश करते हुए शमन आ जाए, नहीं नहीं आ गया। टावर ओह 13 एचपी पे बचा है। ऐसे ही धीरे धीरे होगा अब तो, जो भी होना है, और उनको टाइम शमन के मिलता बाद जाएगा। थोड़ा ही मैना की कमी हो गई टॉर्नेडो ईएमपी खाने के बाद, वरना बड़े सांप भी लगते थे 2। और ये ये स्कॉर्पियो ने अपना काम कर दिया। 3 स्कॉर्पियो तैनात है, और ये वाइस स्टीलर को रेज बेट कराइए। बड़ा सपोला लगा दिया गया है टावर पे फोकस कराते हुए। तो टिम्बर सो आ गए हैं अपनी बॉडी लेके, शरीर उसको मत मारो गाइस, मैं हूँ तुम्हारा टारगेट। ये अंदर घुसते हुए पंच से ये रैवेज कैटा लेट आया थोड़ा, फिर भी काफी आ अच्छा। चुका है लाइफ स्टीलर पे, पंच के अंदर घुस गए थे। टिम्बर सॉ को मारने की कोशिश, और ये मेल्ट कर रहे हैं टिम्बर सॉ को, और टिम्बर सॉ फट गए हैं एकदम। बाय उनका बैक किया एग्नम है। फटने के साथ वो भी फट चुके हैं। यही मैं बोल रहा था, आगे के गेम बहुत टफ रहने वाले। लाइफ स्टील का डैमेज देखिए आना चालू हो चुका है। हर फाइट में 3000 का गोल स्विंग हो रहा है टायर के फेवर में। इनने 2 बिल्डिंग लॉस करी हैं, बट फिर भी टायर यही था लेट गेम में, अभी भी ये गेम पलट सकता है। गेबन इनको अभी भी 1% ही देके बैठे हुए हैं, बट आई थिंक इनके पास इससे ज्यादा चांसेस है। एक को 100 होने में समय नहीं लगता है, 0 कभी भी आ सकते हैं। रोशन 1 मिनट में, आई थिंक इनको रोशन का वेट करना चाहिए। अब देख रहे टिम्बर सॉ का डैमेज फॉल ऑफ कर रहा है, बीकेबी के बाद बहुत जल्दी बस्ट हो रहे हैं वो। यहाँ लाइफ स्टीलर काफी डैमेज, आइटम दिखाएं एक बार लाइफ स्टीलर के। लाइव स्टीलर के मांटा है काफी आइटम अच्छे आ चुके हैं, बैशर आने के बाद काफी लाइफ स्टीलर अब एसएल बनाएंगे, काफी टैंकी हो जाएंगे। बट फ्लैश ही, बट आर्मर कुछ भी नहीं है पच पे। उसी वजह से एकदम मेल्ट हो रहे हैं, और एक शिवाज वगैरह डाल लेते हैं। इनको फाइट में अब ब्लिंक बाइट करके एक हीरो को डिलीट करना पड़ेगा। अगर एक हीरो डिलीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेव है वैसे स्टोन के रूप में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, सब शैमन पे है जैसा हम बता रहे थे। शैमन को छुपके से जाके सांप लगाने पड़ेंगे, स्मोक करके जाएं पीछे से। रोशन आते हुए बॉटम में जस्ट देख के गए हैं, ग्रिम उसके जस्ट 1 सेकंड बाद रोशन स्पॉन होते हुए। बहुत ही Dyer's courier has been killed. रिफ्रेशर का एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, रोशन स्पॉट हो गया है बजने।
क्या चल रहा है मिया जी एंड सिड इस गेम यहाँ में? पे कमबैक चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है रगनार। अगर आप लाइनअप देखेंगे तो टिम्बर कैरी था और What? पज मिड। टिम्बर कैरी? यस, टेम्पो लाइनअप था, सामने स्ट्रेंथ हीरोज हैं 4 उसके अगेंस्ट। बिल्कुल स्ट्रेंथ हीरोज का नाइटमेयर होता और है टिम्बर टिम्बर। एक रैम्पेज ले चुके हैं इस गेम में, बताना चाहूंगा मैं आपको। मलारा का सिग्नेचर पज मिला हुआ है। बट अगर आप देखेंगे रेडिएंट के पास पुश के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी ये रैक्स ले चुके हैं। शैमन और ये उसके रिफ्रेशर एक सांप। बार आप प्लेयर्स बताएंगे कि ये टिम्बर कैरी कौन खिलाड़ी हैं? रॉकर तो क्या काफी ये इस टीम में सब खेल रहे हैं? हाँ, मास्टर इंस्टिंक्ट की जगह खेल रहे हैं ओके ये। ओके। तो अब ये देखते हैं ये सांपों से थ्रोन को कौन बचाता है। तो रैवेज कैटा अप है, ये अंदर घुसते हुए एक सांप और ये शैमन को बना दिया है ऊपर। एक और सांप ईएमपी हो नहीं गई लगा पाए, मैं भी नहीं लगा पाए। रैवेज हो चुका है, 2 रैवेज आ चुकी है। लाइफ स्टीलर बहुत जोर से हिट कर रहे हैं। लाइव स्टीलर हिट कर रहे हैं, अब काफी फील हो रहा है। काफी फील हो रहा है। रेडिएंट वो लाइफ स्टीलर के मोटे मोटे हाथ अब टिम्बर अकेले बच आप चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं बट ये काटा, बड़ा काटा। यहाँ पे इनको निकालना चाहिए। फ्लेम थ्रोअर आई थिंक रेडिएंट ये मैच जीत सकती है। और ये अच्छा वो टिम्बर सॉ को बायबैक करना होगा, डॉन को भी बायबैक करना होगा अगर वो चाहते हैं कि कार्ड काम कर रही है। कार्ड काम कर रही है। चार कार्ड लगी है और ये हो क्यों हुआ? जी जी डार्क हॉर्स ने बड़ा ही कार्ड की भरोसे गेम ये जीत चुके हैं। काफी रोमांचक अंत हुआ है इस गेम का, जहाँ पे हीरोज गेम खत्म नहीं कर पाए, लेकिन दो स्कॉर्पियो लगी रही कि आज तो ये 4 स्कॉर्पियो लगी रही कि थ्रोन हम गिरा के ही आएंगे। और इसी के साथ ग्रुप स्टेजेस हमारे खत्म होते हैं इस मैच में। लेकिन डोटा अभी भी बाकी है, आज के दिन के मैचेस अभी भी बाकी हैं। अब लास्ट चांस क्वालिफायर्स की बारी है। 4 टीम्स आज एलिमिनेट होने वाली हैं बीपीसीएल सीजन 2 से। तो आप लोग बने रहें क्योंकि अब लास्ट चांस क्वालिफायर शुरू होंगे। अब से 1 घंटे के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे और उन 1 घंटे में लास्ट चांस क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। 4 लास्ट चांस क्वालिफायर्स हैं। मैचेस और टीम्स कुछ ही समय में अनाउंस हो जाएंगी ग्रुप पे। बने रहें गाइस, अभी भी मैचेस बचे हुए हैं। और धन्यवाद मेरे साथी कास्टर्स का इस मैच को संभालने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद।